Okay, good morning, everyone. Now, so dear students, can you see the screen? Is the screen visible? Yes? Okay, okay then. Good. So dear students, today we are going to discuss a very important topic for your DHSC Online Academic Support Program. Myself, Devasis Sahu, and let me welcome you all to this platform that is sponsored by Department Directorate of Higher Secondary Education. And this platform is providing you a very interactive session in the topic biology, in the topic chemistry, in the topic physics. Yes or no? Now, so today I'm going to discuss the last part of this first chapter that is being started by RD sir, the living world. Clear? In this chapter, we are going to discuss very brief. Kindly mute yourself. Kindly don't annotate in the screen, the students. It's a sincere request to all of you. Okay. So in this chapter, in this today's topic, we are basically, we are going to discuss basics about the living world, and a chapter complete vala pare. In the next segment, we are going to discuss about the second topic, that is biological classification. As you can see, the name of the topic which is written in the screen, that is the living world, and a living world chapter जो part को आज हमें पढ़िबा, that is the taxonomic hierarchies and the species concept of species. ये part आज हम पढ़िबा. Clear? So I request all of you to be there in this video class रही कि समझ पढ़ो, and जहाँ भी doubt हो you can ask me in the chat box and we'll soon start the class. Clear? So the topic is the living world and we'll start soon. See. So you can see in the screen that is written diversity in the living world. You can see how many different kind of animals, how many different kind of plants are present in this slide. You can see in your screen. ये जो diversity को जिसे बार diversity ର meaning कौन? Diversity means variations. बहुत प्रकार organism हमें जाको ओडिया रे कहूतले तब माने जैव विविधता से पार्ट ऊपर हमें बेसिकली पढ़िबा. Diversity कहले हम कौन बुझे ना केते प्रकार. Voice is not clear. Okay, now see. Can you hear me now? Okay, good. So in the diversity in the living world chapter, a part we are going to basically look at the, okay sir, we're basically going to look at the different part of our living world. See, to start this topic, one great teacher once told me that to understand any topic, you need to understand a little bit level of complexity just below that topic, so that it will be easy to both of us, me as a presenter and you as an audience. ପିଲାମାନେ ଆମେ କୋଉ ବି ଟପିକ କୁ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଯିବା, ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ବେସିକ୍ସ ଟେ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବା ଦରକାର. ଯେବେ ବେସିକ୍ସ ଆମର କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ନା, ଯେବେ ଆମର why କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ଆମର how ଟା ଇଜି ହେଇଯିବ. ଯେମିତି କି in the today's class I am going to discuss about the taxonomic categories. और taxonomic categories by taxonomic hierarchy बुझिया पूर्वरु हमसे से दीटा वर्ड बुझिबार अछि. What do you mean by taxonomy? So basically taxonomy कहले कोन बुझछो ना, it is the study of identification, classification and nomenclature of organisms. Yes, ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ ପଢୁଛେ ନା କ୍ଲାସିଫିକେशन କଥା ଦେଖୁଛେ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେशन ଚିହ୍ନଟ କରିବା, କ୍ଲାସିଫାଇ କରିବା, and then we are going to name those organisms and to place those organisms in a particular perfect scenario. ताले हम तो होल्ड को रखिबार अछि. तो जो टैक्सोनॉमी पार्ट को मिस्टेकनली को माने कहि पारंते कि दिस इज टास्क ऑन मी. Like once I was a student, my teacher once told me that taxonomy basically, if you don't understand taxonomy, it is going to be a task on you. Then, so in today's class, I am going to elaborate. Kindly annotate Korantuni. Kindly screen ne kei be tab Korantuni.
Now, the next segment you can see over here. समझ से बुझ पाइल व्हाट इज टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी माने समझ से जानी पाइल ना इट इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन classification and nomenclature of organisms. We all have various kind of organisms, that is 1.7 to 1.8 million species are present in these organisms. हम समझ से सेल को नहीं दिया रही सेल आपस में मिसि की एग्रीगेट करके सेल फॉर्मेशन करछि कहा को ना सेल बनै छै टिश्यू को टिश्यू एग्रीगेट करके फॉर्मेशन करछि कहा को ऑर्गन्स को organs मैंने aggregate है कि मिसकी बनेशन organ system को and then that organ system is converted into organism और आमे जो living organism मैंने अछंती से living organism को it is time to identify them, it is time to classify them, and then we are going to give it a particular nomenclature. तांको हम गोटे nomenclature टी दबा और तांको naming टी दिया आबो. Clear बुझ पाइलो? Is there any doubt till now? Okay. So, what is the basic process of taxonomy? जो taxonomy part है, the process कौन? What is the mechanism? A process रे कौन taxonomy कौन parts सब आसीबो? Let us clearly understand. The basic process of taxonomy basically characterization, identification, classification, and nomenclature. So we are going to discuss this four part. एक चारटा part हम discuss करिबा. Okay, Jagannath Mohapatra. So we are going to discuss this four part: characterization, how to characterize the organisms, then identifying, then classification, then nomenclature. So Pilamene, what do you mean by this word character? What word it तुम देखते पार्ट जो characterization हमें करूँ तो से characterization word meaning कौन? The meaning of character is basically it is the distinguishing feature. It is the identifying feature between two individuals. You can see here there is an individual in the screen that is a plant, and here are some individuals that are called as animals. ये जो हाथी अच्छी सिंह अच्छी एट जो कंगारू अच्छी कुंभीर अच्छी तो आंक भीतर कौन होची ना विभिन्न प्रकार कैरेक्टर सब अच्छी तो तांको पे हम क्लासिफाई कर पारछे जेमती हमको स्कूल टाइम रे वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन मेंडलिज्म दैट मेंडल कहा पर काम करथिले ना मेंडल काम करथिले पी प्लांट ऊपर एंड व्हेन से पी प्लांट को एक्सप्लेन करथिले पी प्लांट से सेवन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऊपर से कोन कहले फोकस करथिले तमे समय से स्कूल बेले हेरिडिटी चैप्टर पढिथिबो आ हेरिडिटी चैप्टर हम देखिले कहा ऊपर ना कैरेक्टर्स माने ऊपर से स्टडी कराइथिले ये जो कैरेक्टर सब थांती से कैरेक्टर माने वन जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन इनहेरिट हेकी जाई थांती और से कैरेक्टर को हमें कैरेक्टर को डिफरेंट डिफरेंट आलेले डिवाइड करछे तो मोटा मोटी से वर्ड जो कैरेक्टर पिला माने थिला व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टर ना कैरेक्टर इज द आइडेंटिफाइंग फीचर द डिस्टिंग्विशिंग फीचर बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स बाय टू इंडिविजुअल्स आउ जब से कैरेक्टर को हम देखि दोचे देन तापर हम से अकॉर्डिंग ताको सेपरेट करि परिबा क्लासिफाई करि परिबा ताको प्रॉपर नेमिंग ते देई परिबा तो characterization basically means itla है कि understanding of characters of organism such as external and internal structure એટલે મને external structure कहले morphology को बुझौची and internal structure कहले anatomy को बुझौची for example I can say height is a character and in that character height the height can be tall, height can be dwarf, height can be small. मुगले color of the seed is a character. But मंजीटे अच्छे से मंजीरा color हो चुका है character. से color जो अच्छी it can be black, it can be green, it can be yellow, it can be white, it can be anything. तो को color हवा that is different, but color अच्छी that is a character. Height is a character, shape is a character. Your blood group. हम जो मैंने एक online class करूँचे हमें जो मैंने ऑनलाइन क्लास वर्तमान तमाम सब जोड़ी के अच्छे बोल से ऑनलाइन क्लास रे इन दिस ऑनलाइन क्लास इफ जो इंडिविजुअल माने सब बसचंदी कि फोन स्क्रीन ने देखि परथिबो कि ताकू स्कूल ले देखि परतो हायर सेकेंडरी स्कूल लो स्मार्ट बोर्ड स्मार्ट पैनल ले देखि परथिबो ते सब जो इंस्ट्रूमेंट तुम जहां तुम देखि पारुछो बा म ऑडियो सुनी पारुछो तो से समस्त का डिफरेंट डिफरेंट कोन थिबो वेरिएशन थिबो ठीक है हम सब इंडिविजुअल माने पाखे ब्लड अछि बट समस्त ब्लड ग्रुप समान की नुहे so that is called as character the blood having a blood group is a character but the blood group भितर को group आसीबो a आसीबो b आसीबो ab आसीबो o आसीबो that is different different angle आपन देख पाइबो तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड रे जो बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी थिला चारटा पार्ट रे हम डिवाइड करथिले पार्ट नंबर 1 थिला कैरेक्टराइजेशन
where we are understanding of characters of organism such as the external character, the internal structure, structure of the cell, development process, ecological information से केमिति develop करूची तार basic physiology केमिति अछि से कौन खाउची केमिति खाउची से खाइबा निजे बनौची ना अन्य ऊपर डिपेंड करूची तो बेसिकली ए सब जिंस को हमें डिस्कस करथिले कैरेक्टराइजेशन पार्ट क्लियर in the identification segment, it is the correct description of the organism so that the naming is possible. So once हमें characterize कर देले, once तार जिनसों को हमें चिन्हट कर देले, now it's time to identify. तब हमें describe करिबा. से organism रो नाटा जेंते ठीक से रही पारुथिबो, तब से according हम describe करिबा. से group का हमें वर्णना करिया को पड़िबो. Next, you can see in the classification part, it is the grouping of organisms. In this particular part, I'm the organism को group करूचे. Group करचे में जब हम school now you all are +2 first year students studying in various higher secondary class, higher secondary school से तुमने पाठ पढ़ছো वर्तमान तो ये तुम समस्त गोटे group को belong करছো. That group is class 11th or class +2 first year students. So it is the grouping of organisms into convenient categories. Dear students, kindly don't write, don't one method. I'm sincerely requesting you. Now, it is the grouping of organisms into convenient categories that we taxa boli kohuche, to character basically based on. And the last part of this segment is the nomenclature. And what do you mean by nomenclature? Nomenclature माने होची naming. हमें तो नाम टे दोची. कहाँ को ना दोची ना जो organism को हमें choose कर ले, जो organism को हमें characterize कर ले, तो identify कर ले, proper identification, then classification, then it's time to name them. If you can see a mango, the scientific name of a mango is Mangifera indica. Yes or no? You can see a honeybee. As a honeybee जो अच्छी तारो नाम है Apis indica. So it is the standardization of names of organisms such that an organism is known by the same name all over the world. ठीक है जी? ताको हम all over the world रे गुटे ना दे परिबा. हमें ओडिसा रे पिला माने मैंगो कहता हूँ आंबो. But the Hindi speaking person they called it am. क्लियर ना चेंज हो तो मैं देखि परिबो कि ए ओडिसा रे भी गोटे जिंसर बहुत प्रकार ना अछि इफ आई टॉक अबाउट pumpkin if I talk about pumpkin you all know what is pumpkin in Cuttack in Bhubaneswar pumpkin is called as kokharu but you go to the Keonjhar district of Odisha it is kokharu कहते boitadu if you go to Raulkela and the outskirts of Odisha separa asi jo kaddu hindi रे तो कहते kaddu but English रे तो कहते pumpkin तो जिनस गोटे ना डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी सब रोचे क्लियर देन हम कहजे टमाटो ओडिया रे कहले बिलाती देन ताको से माने पाताल घंटा भी कहजे तो जिनस गोटे तार डिफरेंट डिफरेंट ना सब रोचे तो सेति पय कि हम गोटे एमिता स्टैंडर्डाइज नाटी रखिबा जोटा को ऑल ओवर द वर्ल्ड समस्त गोटे ना रे जानिबे दैट इज कॉल्ड एज biological classification and nomenclature definition होचे तो इट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम्स जेम तमरो गोटे गुड नेम थिबो एंड निकनेम थिबो पापा किछि निकनेम डाकुथिबे मामा किछि निकनेम डाकुथिबे भाई किछि डाकुथिबे संग माने किछि निकनेम डाकुथिबे बट स्टैंडर्डाइजेशन गुटे ना अछि व्हिच इज रिटेन इन ऑल योर सर्टिफिकेट्स तमरो बर्थ सर्टिफिकेट रो आरंभ करी कि देन तमरो स्कूल सर्टिफिकेट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सीएलसी रे बट तुम्हारा सब पार्ट रे तुम्हारा एडमिट कार्ड रे सबुटी गोटे ना लिखा है दैट इज अ गुड नेम तुम आधार कार्ड तुम वोटर आईडी तुम पैन कार्ड वोटर आईडी तो बने नहीं जाए कि ये सबुटी गोटे ना ही रही पाए that is a standardization of names of organism such that an organism known by the same name all over the world. Identification also कह देबी okay what do you mean by identification identification ने हमें चिन्हट करछे कि से जिंसटी कहा को बिलोंग करछे that organism first आगे बुझी जाओ what is the need of classification काहे कि तमे क्लासिफाई करछो classification importance कोन अछि पिला माने there are 1.5 to 1.7 million species present over the world जदि हमें समस्त प्रॉपर रे क्लासिफाई न करि परिबा ओके कैरेक्टराइजेशन क्लासिफिकेशन कोच जदि हम प्रॉपर वे तक हम क्लासिफाई न करि परिबा देन कोन प्रॉब्लम होबा गो जाय कि ना हमें तको परफेक्ट वे रे स्टोर करि परिबा नै एग्जांपल दे कहूची सपोज पापा घर को राशन सामग्री नै कि आसिले से राशन सामग्री भितरे तीन प्रकार ऑयल अछि
डन बट कहार लेबलिंग हेनी कोड स्टिकर लागेनी किछि भी हेनी गोटे ट्रांसपेरेंट बोतल रे सोरिष तेल अछि सेकंड ट्रांसपेरेंट बोतल रे नडिया तेल अछि थर्ड ट्रांसपेरेंट बोतल रे तमर रिफाइन तेल अछि क्लियर नाउ इट्स टाइम टू क्लास आमे ताको प्रॉपर प्लेसमेंट करिबा बट जदी सेठी से जिंस रे से बोतल ऊपर टैग लागि थांता फिर लिखाई थांता कि ओके दिस बिलोंग्स टू कोकोनट ऑयल दिस इज कोकोनट ऑयल दिस इज मस्टर्ड ऑयल दिस इज रिफाइन ऑयल देन हमको इजी ही थांता तो प्रॉपर प्लेसमेंट करिया ପାଇଁ ଯେମିତି କି ମୁଁ ରିଫାଇନ ଅଏଲ କୁ ନେଇକି ତ କିଚେନ ରେ ରଖିବି ରିଫାଇନ ଅଏଲ କୁ ନେଇକି ତ ମୁଁ ବାଥରୁମ ରେ ରଖିପାରିବିନି ସେ ଯୋଉ କୋକୋନଟ ଅଏଲ ଅଛି ନଡିଆ ତେଲ ଅଛି ତାକୁ ତ ନେଇକି ମୁଁ କିଚେନ ରେ ରଖିବିନି ଦ୍ୟାଟ ସୁଡ୍ ବି ପ୍ଲେସ ଇନ ଦ ବାଥରୁମ ଦ୍ୟାଟ ସୁଡ୍ ବି ପ୍ଲେସ ଇନ ଦ ୱାଶରୁମ ୟେସ୍ ତ ସେମିତି ଆମେ ପ୍ରପର ୱେ ତ କ୍ଲାସିଫାଇ କରୁଛେ in the segment characterization ଆମର ଯେଠି କାମ ହେଲା ତା characteristics କୁ study କରିବା ତା habit କଣ ତା habitat କଣ ତାର mode of nutrition କଣ ଖାଏ କେମିତି ଖାଏ ତାର level of body organization କେମିତି ଅଛି whether it is made up of cells or it is made up of tissues or it is made up of organs or organ systems ଆମେ ଏଠି characterization ତାର କରୁଛେ ତାର internal structure ତାର external structure both କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ done बट आइडेंटिफिकेशन आमे बेसिकली कौन करले ताको हमें आइडेंटिफाई करले प्रॉपर वे रे कि अन्य मानकटो केमिति अलगा हेतिबो देन कारण बेले बेले कोन होजे ना गोटे पार्ट को दी जण शो करचंदी हम तो गोटे भाबले असुविधा हबो जोटा कि तुम आगु कहबे टू किंगडम क्लासिफिकेशन डिमेरिट रे आस्थिला जो साइंटिस्ट थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन कैरलस लिनियस से तो डिवाइड करते टू किंगडम क्लासिफिकेशन ने से बेसिकली डिवाइड कर दिले ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल so those organisms which are cell wall they belongs to kingdom plantae those organisms which do not have a cell wall they belongs to kingdom animalia in some book it is also written that say divide kartila on the basis of their food habit those can produce their own food they are called as autotrophs they belong to kingdom plantae those who cannot produce their own food and they have to depend upon others they are called heterotrophs and they belong to kingdom animalia बट पिला माने ए जो किंगडम प्लांटे भितरे जो सो ऑर्गेनिज्म माने रहिले खाली कोन सेलुलर बेसिस तक हम रखि परिबा कि हे परिबो कि खाली सेलुलर समान तो रखि परिबा कि हबनी ना हम तको से कैरेक्टर्स को देखियो पड़िबो द प्रॉपर वे रे आइडेंटिफाई करियो पड़िबो देन ताको हमें क्लासिफिकेशन ठीक से करि परिबा एंड वंस क्लासिफाई करले लास्ट तक हमें नोमेनक्लेचर रे द नाटी दे परिबा ओके नाउ moving to the next segment तमे सब जिन पढ़ी सारछ ऑलरेडी प्रीवियस क्लास रे जस्ट बेसिक स्टार इंफॉर्मेशन दे के मु स्टार्ट करबी मो सेकंड पार्ट दोडा आज रो टॉपिक अछि टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज एंड द कांसेप्ट ऑफ स्पीशीज आज को स्पीशीज केम दिसला यू कैन सी दिस पिक्चर ओवर हियर the system of naming with the two components is called as binomial nomenclature nomenclature basically means la naming जो बात तुम केमिस्ट्री पढ़ो तो हेडी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अछि तो से कंपाउंड माने ना दो जो लाइक CH4 इज मीथेन क्या को मीथेन अल्केन अल्कीन अल्काइन बोली कहा को अल्कोहल कहा को तमे को कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप लिखि के जेम सटी नोमेनक्लेचर करछ केमिकल कंपाउंड्स मानकर सेमती बायोलॉजी रे हम कोन करछ ना जो एंटायर डाइवर्सिटी अछि लिविंग वर्ल्ड जो डाइवर्सिटी अछि ताको हमें क्लासिफाई करी कि तारोडे नाटे दोचे और जेबे नेमिंग सिस्टम रे दीटा कंपोनेंट यूज करा होची इट इज कॉल्ड एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ठीक अछि एंड इट इज प्रपोज्ड बाय ऑफ कोर्स द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जहां हमें कहूचे द नेम इज कैरलस लिनियस ये गोटे बही लिखिथिला बहीर ना थिला सिस्टम एंड नेचुरे तो सिस्टम एंड नेचुरे बुक रे से तांग डिस्क्राइब करथिले कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को हमें को जगह क्लासिफाई करबा now you can see we have two pictures over here. One is the king of all fruits, that is the amber, that is the mango, and second who is the king of the jungle, that is the Panthera tigris, bago. The botanical names are based on the rules in International Code for Botanical Nomenclature, that is ICBN. The geological names are based on International Code for Geological Nomenclature, that is ICZN. The जो ICBN और ICZN, these are the two authority जो माने कौन करछन ना नेमिंग कल्चर को आगु को आनिछन तो बोटानिकल नेम कोन दिया हबो कहा को कोना दिया हबो केमति ना दिया हबो से नामकरण केमति करा हबो से जो लैटिन वर्ड ना दिया होची ए सब एंटायर पार्ट को रेगुलेट करूची के गोटे बोर्ड दा ना हैला ICBN right now I am taking this class from DHEC what is DHEC Directorate of Higher Secondary Education ठीक अछि
इंडिया रे जो क्रिकेट गोटे बहुत फेमस गेम इंडिया रे से लोकप्रिय गेम क्रिकेट को किए कंट्रोल करछि बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया तो क्रिकेट केमती कंट्रोल हबो केमती हबो का काम करिवो ए सब बीसीसीआई अंडर रे काम करछि ठीक से बडा जिंस आमे जदि कह मेडिकल एसोसिएशन जति अछि से आईसीएमआर अंडर रे काम करछन इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ठीक से बड़ा पिला माने बॉटनिकल नेम को ना दबा पाई कि हम पाखर अछि आईसीबीएन फॉर जूलॉजिकल नेम्स इट इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर तुम मन कर आगो एग्जाम रे 1 मार्क रो क्वेश्चन हिसाब रे आसपरिबो यू नीड टू रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ दिस abbreviation that is ICBN ICZN एसो जिंस माने कोन बोली क्लियर now if you see the Manchester Indica universal rules कौन अच्छी rule number 1 वो भी टॉपिक को पढ़िया पूर्व द रूल्स को जानिया पड़िबो if you want to win a game if you want to win a game you need to understand the rules and regulation of that game जो गेम तुम खेलिबो से गेम तुम रूल्स जानिया दरकार जो रूल्स तुम जानि न तुम खेली परिबो नहीं ए सुनो पिला माने तो बॉल टी बाउंड्री क्रॉस करके जाउची से 4 भी होची से 6 भी होची से बॉल टी डिस्टेंस भी हे पड़ची डिपेंड करछि से केमिति जाइछि जदि बॉल टी एयर रे जाई पहुंची लैंड करछि दैट इज अ 6 जदि बॉल टी एमडी ग्राउंड रे ग्राउंडेड ही कि जाइछि गडी गडी दैट इज अ 4 आ जदि बॉल टी डेड बॉल हेतिबो सेठी 0 भी मिल परिबो देन जे डिपेंड करछि तमे खाली बाउंड्री क्रॉस करले जे रन हबो केते रन हबो ता पई किछि रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइन सेट कराइछि ठीक से भलिया हमर ए जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर र किछि हबे गाइडलाइंस रखाइछि गाइडलाइन जेमति कि the scientific names are in Latin word or Latinized and written in italics आको में italics से लिखितो जदि हम ताको टेक्स्ट रे लिखुचे italics से लिखिबा जो ताको हम हैंड रिटन लिखुचे तो हम italics से लिखि परिबे नहीं तो सही जगह रे we need to underline separately ताको हमको separately underline करिबा को पड़िबो ए जो binomial nomenclature the first word टी अछि that is called as a genus name and the second word is called as the species name जाको तुम ओडिया रे जाति प्रजाति ए सुना तुम देखिला तो genus name species name ताको हमें अंडरलाइन करिबा सेपरेटली अंडरलाइन करिबा genus रा फर्स्ट कैपिटल फर्स्ट वर्ड टी फर्स्ट अल्फाबेट टी कैपिटल हबो and rest all are small you need to understand ये चारटा पॉइंट तुमको कहला फर्स्ट पॉइंट को भी ऑर्गेनिज्म रो को भी इंडिविजुअल रो साइंटिफिक नेम टी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखाइथिबो दीटा कंपोनेंट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भीतर से पुनी केमिति लिखा जाय लैटिन वर्ड लिखा हिची नंबर 3 ताको हम इटालिक से लिखिताओ जब ताको प्रिंट फॉर्म और टेक्स्ट फॉर्म में रखुचे जदी हैंड रिटन लिखुचो देन यू हैव टू अंडरलाइन इट सेपरेटली जेनस को अंडरलाइन करिबो एंड देन स्पेसीज को अंडरलाइन करिबो देखो हैंड रिटन लिखा है मांजिफेरा इंडिका इट इज अंडरलाइन बट होमो सैपियंस सब हम लिखा है केमती ना इटालिक से लिखा है बिकॉज़ इट इज टाइप 1 क्लियर और लास्ट रासो क्या कहता ऑथर्स नेम जो ऑथर तक को कंकटले डिस्कवर करथिले ताबे डिस्कस करथिले जेमते मांजिफेरा इंडिका ही गला कि होमो सैपियंस ही गला अंकर ऑथर थिले कि स्वयं कैरोलस लिनियस तो तांको नाम अनुसार हम लिखले LINN डॉट एब्रिविएटेड फॉर्म में तांको नाम लिखाइला क्लियर तो पिला माने एई जिंसडे तम फर्स्ट ईयर रु 11th तो क्लियर हे जाओ जैना हम बहुत पिला को देखि जो माने एबे भी सेम कॉमन मिस्टेक करछथि साइंटिफिक नेम को अंडरलाइन करनांती साइंटिस्ट माने को से माने प्रॉपर्ली एक्नॉलेज करनांती व्हिच इज अ रॉन्ग इंप्रेशन और टीचर कॉपी चेक कला बेले एसो जिंसडा को देखिले ताको निजो खराब लाग्यो काहे कि ना पिला माने वेरी बेसिक्स पार्ट को भूल जाउछ क्लियर हम बेसिक्स मन रखिया पड़ियो बेसिक्स होची बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखुचे माने अगर हैंड रिटन लिखुचे माने वी हैव टू सेपरेटली अंडरलाइन एंड एट द सेम टाइम हमको आउ कोन करिवार अछि ना हमको से जीनस रा फर्स्ट अल्फाबेट को कैपिटल करिवार अछि एंड रेस्ट ऑल को करिवार अछि स्मॉल करिवार अछि नाउ तो एठो वर्तमान स्टार्ट हैला हमर आजिरो टॉपिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पूर्व जो पार्ट को तुमको जणै आस्तली कहि आस्तली दैट वाज जस्ट रिवीजन थिला तुम जो प्रीवियस क्लास से पढ़थलो ताको टी बेसिक्स को रिवाइज करै देली बिकॉज़ मु डायरेक्टली टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज तो जाई परिबेनी टैक्सोनॉमी बुझिया पड़िबो डाइवर्सिटी बुझिया पड़िबो क्लासिफिकेशन बुझिया पड़िबो once you complete all those things then you are going to start from this part so now the students do you have any doubt then you can ask me in the chat box then किछि भी डाउट सब माने करो टिल नाउ जो पार्ट तुम ऑलरेडी पढ़ी सारथिला प्रीवियस क्लास रे एंड आज तक से पार्ट हम आउट रिपीट करे देली रिकॉल करे देली so if you have any doubt
You can ask me in the chat box. Okay, okay, Hare Krishna. Jadi kichhi nahi, you can say no, and we'll start from this today's class. Okay, got it. Now, so you can see in your screen there is a thing written taxonomic categories. Tamare taxonomic categories re padhiba. Yes, it is mandatory to write the scientist name. तम ना डी लिखा पड़ियो तम हमें acknowledge करूछे लिनियस को ना LINN डॉट लिखा पड़ियो बट बेसिकली सब जगह लिखंती नी बट प्रॉपर टैक्सोनॉमिस्ट पाखु जदी जीव से यही एडवाइस करबे कि जिंसटी तुमको लिखिया को पड़ियो बोली ना ये जो टैक्सोनॉमी कैटेगरी जे सातटा सोपान अछि दिस क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हायरार्की व्हाट इज हायरार्की पिला माने हायरार्की होची गोटे सिस्टमैटिक अरेंजमेंट गोटे सिस्टमैटिक सोपानटे अछि या तो असेंडिंग ऑर्डर रे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर रे थिबो तो आमे जो एंटायर ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करूचे से डिस्क्राइब करिया पई कि हम पाखरे सातटा सोपान अछि कोन अछि जदि मु माने डिसेंडिंग ऑर्डर रे जिबी बॉर्डर सान क्रम रे जिबी फर्स्ट आई विल गेट टू नो अबाउट किंगडम एंड किंगडम पर आसीबा फाइलम फाइलम इन केस ऑफ जूलॉजी डिवीजन इन केस ऑफ बॉटनी यू नीड टू रिमेंबर ये जो फाइलम माइट हम जूलॉजी ପାଇଁ यूज करछे जूलॉजी रे जो एनिमल को क्लासिफाई करछे बट इन केस ऑफ बॉटनी हम जो ଗୋଟେ प्लांट को डिस्क्राइब करछे से टाइप रे यू हैव टू राइट डिवीजन देन रेस्ट ऑल आर सिमिलर दैट इज क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस एंड स्पीशीज ए पार्ट सब तुमको बेसिकली मन रखिया पड़िबो तो ये सातटा सोपान रहिला ଗୋଟେ एग्जांपल दे कहूची सपोज वन ऑफ माय फ्रेंड फ्रॉम यूएसए one of my friend from USA want to send me a parcel is want to send me a courier ताको ଗୋଟେ courier टी मते पठेबार अछि तो से how to send that courier to me से parcel से मो केमते पठेबो the first से मो एड्रेस नेबो मो एड्रेस न सला परे मो एड्रेस टी मो को फॉर्मेट रे देथिबी ना एड्रेस थिबो मो नेम इन डाउट नो साइंटिस्ट का नेम को अंडरलाइन करा जीवो नहीं साइंटिस्ट का नेम प्रॉपर्ली लिखा है कि एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा है कि डॉट टे दिया हुआ गुड क्वेश्चन साइंटिस्ट का नेम अंडरलाइन करा जीवो नहीं ओके नाउ कमिंग टू दिस सेगमेंट जो पार्ट में कहते हैं कि लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड फ्रॉम यूएसए वांट्स टू सेंड मी अ पार्सल वांट टू सेंड मी अ कोरियर आसे कोरियर पठेया पाई कि व्हाट ही नीड्स ताको दरकार कोन ना ही नीड्स माय सैंपल मो एड्रेस ताको दरकार हबो दैट जो एड्रेस सैंपल टी पठेबो तो एड्रेस से फर्स्टली मो नेम लिखा हितिबो नेम पर लिखा हितिबो मोर केयर ऑफ मोर सन ऑफ कि बापा का नाम लिखा हितिबो देन आसियो मोर हाउस नंबर प्लॉट नंबर घर नंबर जो थिबो देन आसियो कोन मोर विलेज बा मोर सिटी मोर टाउन जोठी मो से रहूची से कॉलोनी नेम देन तापर आसी जो कहा कथा से डिस्ट्रिक्ट रे नेम देन आसिबो डिस्ट्रिक्ट को स्टेट अंडर रे जाउची देन आई हैव टू राइट द पिन कोड आ जदि मैं इंटरनेशनल जिनस मगुची देन मते कंट्री ना भी लिखिया पड़िबो एंड जेबे से चिठीटा मते पठेइला द फर्स्ट से जो चिठी हैला बा से पार्सल टी हैला से गोटे कॉन्टिनेंट रो मूव करछि कैन अंडरस्टैंड जब से यूएस रो पार्सल टी मो पाखु आसीबो डायरेक्टली आसी कटक रे लैंड करिवनी से कटक रे लैंड करिया पूर्व कोठी के आसीबो जिनसटी यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रो बाहर के आसीबो कोठी एशिया को आसीबो तो गोटे कॉन्टिनेंट रो आउट कॉन्टिनेंट से एशिया रो सदर्न ईस्ट एशिया जो अछि हमर इंडिया जोटी अछि से एशिया रे बहुत सारा कंट्री अछि चाइना अछि जापान अछि तिब्बत अछि बांग्लादेश अछि नेपाल अछि भूटान अछि तो से ठीक न जाय कोठी के आसीबो इंडिया को आसीबो इंडिया रे फोन तळु जदि असले इंडिया रे को जगह से इंडिया में तो बहुत सारा स्टेट्स अछि स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर स्टार्ट करी एंड रे आसी गेला हमर केरला आसी गेला तमिलनाडु आसी गेला तो एते सारा स्टेट भितरे से कोठी के आसीबो इट विल रीच टू ओडिशा से आसी पहुंचे कोठी ओडिशा रे अगेन इन ओडिशा देयर आर डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर तमान जेमि क्लास करछो किछि पिला आटी गंजाम बरहमपुर क्लास करछन किछि पिला आटी कटक रो क्लास करछन किछि पिला पुरी रो क्लास करछन किछि पिला डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा रो से माने क्लास करछन ये सब डिस्ट्रिक्ट न जाई कोठी के पहुंचबो सपोज मो एड्रेस इज डीएचएस रे तो से आसी पहुंचबे कोठी खोरदा डिस्ट्रिक्ट रे पहुंचबो तो ओडिशा इंडिया इंडिया भितरे ओडिशा ओडिशा भितरे आसला खोरदा खोरदार पुनी को पार्ट को जीवा भुवनेश्वर को आसीबो भुवनेश्वर कोठी के आसीबो डीएचएससी ऑफिस को आसीबो डायरेक्टरेट ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेटू जो रूम रे क्लास हो जे से रूम फाइनल जिंस आसी पहुंचबो तो ये गोटे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की दा सुपरनेट ए अकॉर्डिंगली ही अछि ठीक से भलिया जेम हम फास्ट को जे किंगडम किंगडम भीतर देखियो जे मोर स्पेसिफिकली फाइलम्स नॉले डिवीजन पर हम देखि परिबा
ता भीतर डिफरेंट डिफरेंट टाइप रो क्लासेस आर देयर, ता भीतर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स आर देयर, देन ता भीतर फैमिली, ता भीतर जीनस, ता भीतर स्पीशीज, स्पीशीज तळे को आ किछि पार्ट न थाए, जदियो वेराइटी गोटे पार्ट तक हम ऐड कर परिबा। देन मु कहली पिला माने जीनस हैला मैंजिफेरा, स्पीशीज हैला इंडिका, मैंजिफेरा इंडिका इज कॉमनली कॉल्ड एज मैंगो, बट ये जो मैंगो डिफरेंट वेराइटीज रोच, तुम देखी तो मैंगो जो अच्छी मैंगो तो गोटे टाइप न थाए, तुम कौन सी दुकान को जीव, फ्रूट्स दुकान को जीव बा तुम निजे भी देखिथिबो, ठीक घरे देखिथिबो आंब गछरे डिफरेंट टाइप आंब अछि, कलमी आंब अछि, दशहरा आंब अछि, टोटापले आंब अछि, अल्फांसो मैंगो इज देयर, डिफरेंट ब्रीड रो। देन मु कहली चाउल बा धान हो गला ओराइजा सटाइवा साइंटिफिक नेम, बट से जो चाउल अछि सिमिलर टाइप चाउल सब मिलिबो कि, तार पुणी भेराइटी अछि ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप रो बासुमती चाउल डिफरेंट अछि, मुड़ी बनिया पे अलगा चाउल अछि, चूड़ा बनिया पे अलगा चाउल अछि, भात पे कि अरुआ उसुना डिफरेंट टाइप रो ओकेजन पे कि डिफरेंट टाइप रो थिंग्स पे कि हम पे डिफरेंट टाइप रो धान हम पे प्रेजेंट एक अछि डन। तो दैट हम वेराइटीज बोली कहै। So now coming to this part, classification involves hierarchy steps, hierarchical steps in which each step represent a taxonomy category. ये सब गोटे गोटे स्टेप गोटे गोटे taxonomy category को ही दर्शाଉଛି। All categories together constitute a taxonomic hierarchy. जो समस्त को हम मिसेई देबा ताको हम गोटे hierarchy रे बा गोटे जो कहले कि systematic arrangement रे ताको डिवाइड करथिले। It can be in descending form, it can be in ascending form में रही परिबो। Rachita, Rachita Salago, don't write anything, please. Now, each category represents a unit of classification. सब कैटेगरी के अछि ना गोटे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन दे दिया छै केमी तो क्लासिफाई कराई छै बोली। And last is a group of organisms occupying a particular category is called as a taxon. तो हमारे taxon जो सिंगुलर कहले taxon and जो प्लुरल रे देखिबा से हिजबा taxa। सिंगुलर रिडक्शन हायरार्की मीनिंग हो हरे कृष्ण हायरार्की रो माने हो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट सोपान प्रणाली तक हम अरेंजमेंट करछे रिप्रेजेंट करछे ऑर्गेनिज्म मान को जेमति तम नेम देन तुम एप्लीकेशन लेखला लागल नथिला नेम देन तम रोल नंबर देन तम सेक्शन देन तम क्लास देन तम स्कूल ना तो गोटे सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हे अछि तक हम हायरार्की कहउछे। धानर साइंटिफिक नेम होची ओराइजा सटाइव, लेट मी राइट फॉर यू ओराइजा सटाइव। The name of rice is Oryza sativa. Now, এই যে বুঝ পাইলো যেমন আমি কইলে কি দেখো সিঙ্গুলার ইজ কল্ড as taxon, kingdom গোটে taxon, phylum গোটে taxon, class গোটে taxon, order গোটে taxon, family গোটে taxon, genus গোটে taxon and species भी গোটে taxon. So in singular it is taxon, but in plural it is called as taxa. যেমন mitochondrion, mitochondria, ଯେମିତି bacterium, bacteria, flagellum, flagella, similarly taxon, taxa. Clear? ଆଉ एग्जांपल ଦେଇଛି କାହାର ଏଠି ଯେମିତି ମାମାଲିଆ, ମାମାଲିଆ କାହାକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ହଉଛି ମାମାଲିଆ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାମାଲିଆକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛେ। ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଭିଭିପାରସ୍ ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତିନି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମାମାଲିସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ, स्तन्यपायी प्राणी ବୋଲି କହିଥାଉ। Now moving to our next segment, here you can see a taxonomic hierarchy in ascending order. Can you see ascending order? तीर चिन्ह कुआडे दिया जायछि ना ascending order अछि। सबुठ तळे अछि species, species ऊपर अछि genus, genus ऊपर family, family ऊपर order, order ऊपर class, class ऊपर phylum or division and सबुठ ऊपर आसिला kingdom। ठीक अछि स्टार्ट कोठ होछि किंगडम जो स्टार्ट होछि साम्राज्य किंगडम महिष्मती साम्राज्य जो बाहुबली तमन सब देखिला। The kingdom will start होची kingdom भीतर आसी जो phylum if we describe an animal, then division if we describe a plant. In inside the division you'll find the class group of organisms resemble करजन गोटे class को से class भीतर को माने आसीबे orders, order भीतर आसीबे family, family भीतर genus and genus भीतर species। क्लियर? ये हला डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग देखो तो अब स्टार्ट करिबा जेमति कि आमे माने बिलोंग करछे मु जो ऑर्गेनिज्म डेटी बसे छी तम स्क्रीन आगे तम मते देखि परछो मते सुनी परछो तो मु एंड तमे जे स्क्रीन न ऊपर साइड रे अछि जे स्क्रीन न ऊपर साइड रे अछि आमे समस्त बिलोंग करछे को किंगडम को। हम किंगडम होची एनिमलिया,
ये एनिमल किंगडम भितर पुणी क्या भितर बिलोंग करछे हमें कॉर्डेट्स बा कॉर्डाटा को बिलोंग करछे हम वर्टिकल कॉलम अछि मेरुदंड अछि कॉर्डाटा हमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट अछि से कॉर्डाटा भितर हमें कहा को बिलोंग करछे मामालिया मामालिया बुझ परछो हम माने स्तनपायी प्राणी रे जाउछे मामाल समय आसीबा देन हम स्किन ने हेयर अछि समस्त स्किन ऊपर कोन अछि लुम लुम जो हेयर ट्रेंड अछि वी आर मामल्स से मामालिया भितर हम बिलोंग करछे कहा को प्राइमेटा बा प्राइमेट्स को बिलोंग करछे देन ता भितर आसिला को फैमिली होमिनिडे फैमिली से होमिनिडे फैमिली भितरे हम जीनस होचे होमो एंड आवर स्पीशीज इज सैपियंस बट मन रखियो ये होमो सैपियंस टी डायरेक्टली क्रिएट ही नथिला संगे संगे असला से होमो जीनस भितरे डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज थिले होमो हैबिलिस होमो निएंडरथैलेंसिस होमो इरेक्टस ठीक अछि एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप रे थिला जब तमे इवोल्यूशन इन मैन पढिबो जब तमे सेकेंड ईयर रे इवोल्यूशन पढिबो जूलॉजी रे से तम जानिबो कि इवोल्यूशन ऑफ मैन केमते आसी इवोल्यूशन गोटे टॉपिक स्कूल बेले पढ़ितला विवर्तन सेठी से कोन कहूची कि जो ह्यूमन बीइंग्स माने अछंदी वी आर नॉट क्रिएटेड वी आर इवॉल्व्ड आमे एमती क्रिएट हेइनु आमे धीरे धीरे इवॉल्व होचे गोटे ऑर्गेनिज्म रु आउट ऑर्गेनिज्म को गला बेले आमे इवॉल्व हेकी जाउचे प्राइमेटा बुझी न होला ओके प्राइमेटा जो अछि से कहला कि प्राइमेट्स को बिलोंग करछ जो माने हमर मेंस्ट्रुअल साइकिल हेता तब हम प्राइमेट्स बोले रखिताओ से माने प्राइमेट कैटेगरी जाती इट्स ऑर्डर तो बेसिकली तो मन रखियो जेमते मु कहली इंडिया इंडिया को बुझियारे कोन अछि इंडिया इज अ कंट्री नेम ऑफ अ कंट्री ओडिशा इज अ नेम ऑफ अ स्टेट कटक इज नेम ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट सेम दे हम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की अछि सब सोपान रे गोटे ना अछि जेमते किंगडम एनिमलिया डिवीजन कोडाटा फाइलम कोडाटा क्लास मामालिया ऑर्डर प्राइमेटा फैमिली होमिनिडे जीनस होमो एंड स्पीशीज सैपियंस એટલે ମାନେ ହୋମିନିଡ ଫେଲିଡି ହବ ନାହିଁ ଫେଲିଡି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ହବ ବଟ ସେଠି ଆମେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁନି ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି ଫେଲିଡି ଫ୍ୟାମିଲି କୋଉ ମାନେ ଆସିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଫେଲିଡି ଫ୍ୟାମିଲି ଫେଲସ୍ ମାନେ ଆସିବେ ଫେଲସ୍ କ୍ୟାଟର୍ସ ଫେଲସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକସସ୍ ଆମେ ଯୋଉ ଏଠି ହେଲା ଅ ବାଘ ହେଇଗଲା ସିଂହ ହେଇଗଲା ବିଲେଇ ହେଇଗଲା ସେମାନେ ସେଇ ପାର୍ଟରେ ଯିବେ ଚଲ ଆଗରେ ଅଛି ସେଇ ପାର୍ଟ ତମେ ଯୋଉ କ୍वेଶ୍ଚନ କରୁଛ ସେ ପାର୍ଟ ସବୁ ଆଗରେ ଅଛି keep on interacting now you can see over here एटी मु दुटा पार्ट तीनटा पार्ट को बुझियो ट्राई करछि तमन देखि पारथो एडी टैक्सोनॉमी कैटेगरीज रे स्टार्ट करले हम कोड ना स्पीशीज रो स्टार्ट करले तो व्हाट इज स्पीशीज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज तो मन रखिबो इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स capable of interbreeding to produce fertile offspring each and every word में तुम बुझियो पड़े मन रखियो पड़े if you have pen and paper then kindly note it down तुम से आगो कल आगो फ्यूचर एग्जाम में तुमको हेल्प करिवो तो व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज ना स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स डोंट राइट ऑन द स्क्रीन रादर राइट ऑन योर कॉपी पेन पेपर जो अच्छी कॉपी है नोट नोट कर दे परिवार पार्ट टाको इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स so organism माने closely relate ହେଇଛନ୍ତି each other ସହିତ ତା ସହିତ ସେମାନେ capable ଥିବେ capable माने they are able ତାଙ୍କ ପାଖରେ capacity ଅଛି they have the potential capable of interbreeding ସେମାନେ interbreed କରିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ आपसରେ mating କରିପାରୁଥିବେ to produce fertile offspring fertile means what fertile means उर्वर जे आगो जाएंगे गोटे छुआ जन्म करि परिबो those are called as fertile who are able to produce child produce offspring in biology we don't say child we say offspring clear then the parent ru तार offspring को डाटा डे ट्रांसफर हबो देन हम जो पॉपुलेशन देखुचे तुम जानि जो इंडिया रा पॉपुलेशन इज 1.5 बिलियन 150 कोटी लोग इंडिया रहउछन so what is the definition of that population ए population माने कोन ना it is group of individuals these are group of individuals which belongs to single species गोटे सिंगल स्पेसीज से माने बिलोंग करछन्ती जो स्पेसीज वर्ड कहली तो स्पेसीज ता किए की ना स्पेसीज होचे क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स देन जत्ते भी ह्यूमन अछन यू कैन सी मोर दीटा आखि अछि यू कैन सी मोर दीटा कान अछि यू कैन सी मोर दीटा हाथ अछि तो मु तमर से रिजेम्बल करछि तमन से सिमिलर अछि तो आमे हेलो क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज होचे पापा मामा दादा खुड़ी अजा आई ए समस्या जाउछनी काहकु नाइट सेड ब्लैकबेरी से आसु से पार्ट को एबे ए पार्ट ता फोकस करा तो ए जो क्लासिफिकेशन हमें देखु जे इट जो स्पेसीज माने आसिले ए सब क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज थे द पॉपुलेशन डेफिनेशन वंस अगेन तमन आगे रखुची
तो पॉपुलेशन डेफिनेशन कौन थिला ना ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू सिंगल स्पीशीज प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया ता सहित सेमान कोन करछन शेयरिंग और competing for similar resources and finally they can potentially interbreed सेमाने इंटरब्रीड कर पारथिबे काहे रिप्रोडक्शन न हेले पॉपुलेशन आगो बढ़ी परिबने listen no what is reproduction माने कोन थिला कि रिपीटेड प्रोडक्शन दैट इज प्रोडक्शन आफ्टर प्रोडक्शन तो गोटे जनरेशन आउट जनरेशन तापर जनरेशन आउट जनरेशन ए पार्टी कंटिन्यू चलिबो तो इन द स्पेसिस सेगमेंट हमें कहा बुझिया पड़ছে एटी स्पेसिस को बुझिबा ए जो स्पेसिस हे गला कोन इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग एंड वन रखियो वन मार्क क्वेश्चन इंपोर्टेंट पार्ट स्पेसिस होची इट इज द लोएस्ट कैटेगरी होने सबुडे लोएस्ट बा स्मॉलेस्ट टैक्सन ना कोन आंसर इज स्पेसिस जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन और जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की रो सबुडो स्मॉलेस्ट टैक्सन ना कोन ता ना होची स्पेसिस क्लियर ता तलको वैरायटी आसी परिबा बट स्पेसिस इज द स्मॉलेस्ट टैक्सन इन नाउ if you see over here that the जो जिनसे is a common name their generic name their specific name हम देखो जेमति कहली mango you all know mango is mangifera indica potato is solanum tuberosum नाइट सेट पिला पचारला आपको हिंदी में मकोई बोली कहते नाइट सेट को मकोई ओडिया नाटा मते ठीक से जोड़ा नहीं तो हिंदी में मकोई बोली कहते सोलानम नाइग्रम टमाटो सोलानम लाइकोपेडिस्कम ब्रिंजल इज सोलानम मेलोंजेना लायन इज पैंथेरा लियो टाइगर इज पैंथेरा टाइग्रिस leopard is called as Panthera pardus and the modern man we are known as Homo sapiens. You can see over one thing कि ये जीनस नेम समान अछि हेले स्पेसीज नेम रे डिफर करछि यस जीनस भितर को मान रहले ना क्लोज रिलेटेड स्पेसीज मान को नै कि हमर जीनस की फॉर्मेशन करछि तो सबड तळे आसले स्पेसीज आ पर पार्ट रे आसो का करे जीनस कथा आसीबो ये स्पेसीज ता ऊपर गले जीनस ता ऊपर गले कि आसीबो स्पेसीज जीनस पर आसे फैमिली ता पर क्लास ता पर ऑर्डर ता पर फाइनली आसीबो हमर फाइलम और डिवीजन एंड सब लास्ट आसीबो किंगडम देन this is the things you need to remember. See here. Asla, what is genus? Now it is the aggregates of closely related species. The species मान को हमें close related species गोटे जाको नहीं आसो ताको हमें genus बोली कहबा. Then genus solanum, genus panthera, genus felis. This solanum genus से को माने आसिले ना potato आसिला, tomato आसिला, brinjal आसिला. तो मैंने सुनले एबे आश्चर्य हबो तमे गूगल रे सर्च कर परिबो गोटे प्लांट ता ना होची पोमाटो गोटे नुवा प्लांट साइंटिस्ट माने बनेचनी बहुत दिन हे गेलानी ता ना होची पोमाटो व्हाट इज पोमाटो दैट इज पोटैटो प्लस टोमेटो गोटे एमतिया गछ अछि जोडी माटी तळे आळू हेतिबो आ ऊपर टोमेटो सब हेतिबो दैट इज कॉल्ड एज पोमाटो प्लांट सेम गोटे ब्रोमाटो भी अछि ब्रिंजल एंड पोटैटो ब्रोमाटो प्लांट दिस पॉसिबल हे परछि काहे कि बिकॉज़ ताको जीनस समान अछि बोली जीनस के ना जीनस ना हला सोलानम कारण ये गोटे जिनस जेमते हमें गोटे पापा को दी भाई हेतिबा दी भौणी हेतिबा भाई भौणी हेतिबा कॉमन पेरेंट को हमें शेयर करछे पापा मामा अछन तांको दीटा पुओ थिबे दीटा झियो थिबे कि पुओ झियो थिबे तो से माने कॉमन पेरेंट को ना लिखुते मु भी मो सर्टिफिकेट रे पापा को ना जहां लिखि मो साना भाई भी पापा के सर्ट ना भी से ही लिखियो सर्टिफिकेट रे तो जिनस जो पार्ट रहला ए पार्ट रहछि जस्ट अ सेकंड जो जिनस रहला जिनस सोलानम रे पोटैटो ट्यूबरोजम टोमेटो सोलानम हेगा तमर लाइकोपेरिस्कम ब्रिंजल हेगला सोलानम मेलोंजिना इन पैंथेरा पार्ट जो देसे जिनस पैंथेरा लायन ना हैला कोन सिंह हैला पैंथेरा लियो लियोपार्ड हैला पैंथेरा पार्डस एंड टाइगर इज पैंथेरा टाइगरिस तले फेलिस पार्ट को आसीबा जो बिराडी फैमिली को जो आसीबा एटे हाउस कैट अछि फेलिस डोमेस्टिकस एंड जो जंगली कैट अछि जंगली बिल्ली दैट इज कॉल्ड फेलिस काउस यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग टिल दिस नेक्स्ट हम फर्स्ट सोइल स्पीसीज सेकंड आसिला में जीनस टिके ऊपर को आसिला फैमिली व्हाट इज फैमिली ना इट इज अगेन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा ये जो सब एग्रीगेट करी कि रिलेटिव जेनेरा माने हम मिसाई जेने सोलानेस रे को माने आसिले सोलानम पेटूनिया डटूरा दुदुरा फूल देखि परथु बेटी डटूरा प्लांट जो अछि शिव मंदिर रे पूजा हुए दुदुरा फूल डटूरा पेटूनिया and solanum तो समस्त मिसिकी गोटे फैमिली को बिलोंग करचंदी and the name of the family is solanaceae
सेमती एपटे पैंथेरा एंड फेलिस जो पार्ट थिला से बिलोंग करजन कहा को फेलिडी बुझ पारलो एबे गोटे पिला पचार थिले रिसेंटली सर फैमिली फेलिडी होबो कि यस देखि परछो गोटे फैमिली रो एग्जांपल हैला फेलिडी जो फेलिडी रे मिनति पात्र जो फैमिली फेलिडी क्वेश्चन पचारथिला से फेलिडी फैमिली भितरे कोमन जाउचनी जीनस पैंथेरा भी जाउची एंड जीनस फेलिस भी जाउची बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम फैमिली से पैंथेरा हो बा फेलिस हो बाघ हो कि बिराडी हो जण मिसी गोटे पार्ट रहे कोन कि बाघ न देखले बिलेई देखो तो से दुटा को बिलोंग करछने सिंगल फैमिली तो फैमिली ना हैला फेलिडी No. Please erase all those things. Don't write on the screen. I'm requesting once again. बारंबार कौन चीज इंसर्ट नेक्स्ट देन आसला फैमिली ऊपर क्या आसबो ऑर्डर आसबो देन व्हाट इज ऑर्डर दैट इज द असेंबलीज ऑफ रिलेटेड फैमिलीज इसो असेंबली हेजन असेंबल माने समस्त एकाठी हेजन एग्रीगेट करछन ठुलो हबा गैदर हबा जाउ तुम कहि परछ तो रिलेटेड फैमिलीज माने गोटे जगह आसी असेंबल हेजन जेम ऑर्डर पॉलिमोनियल्स ऑर्डर कार्निवोरा ये जो ऑर्डर पॉलिमोनियल्स अछि ताबे कन्वोल्वुलेस भी अछि ताबे फैमिली सोलानेस भी अछि बट इन ऑर्डर कार्निवोरा फैमिली फेलिडी फैमिली कैनेडी कैनेडी कहले का कथा बुझो जे डॉग्स मन कथा बुझो जे कैनेडी तो एमान सब मिसी गोटे ऑर्डर रिप्रेजेंट करछन्ते तो बेसिकली हम जो टैक्सोनॉमी कैटेगरीज देखु छे डिफरेंट डिफरेंट टैक्सन्स माने अछन्ते तो टैक्सोन को हम इंडिविजुअली डिस्कस करछे वर्तमान जने टैक्सोन सब लोएस्ट टैक्सोन द लोएस्ट रैंक द लोएस्ट कैटेगरी इज कॉल्ड अ स्पीशीज द स्पीशीज रो टिके ऊपर को जिबा स्पीशीज का पाइबा हमें स्पीशीज ऊपर आसीगला हमर जीनस जीनस ऊपर आसीला फैमिली फैमिली ऊपर आसीला ऑर्डर ऑर्डर ऊपर आसीबो क्लास क्लास ऊपर आसीबो फाइनली हमर division or phylum. If we talk about plant, then division. If we talk about animals, it is phylum. And sabha upar asyo ki kingdom. This is the thing. Okay, genus species we know, but Dahi classification बना है कहीं it is systematically used है. Systematically यूज हो जेमती हमको जଣା अछि कोन सपोज हम के फ्रेंड थिबो से फ्रेंड तुम ना जानि थिबो ता नेम तुम जଣା अछि ता सिबलिंग्स के भाई भौणी के जरी थिबो तुम मे भी जानि थिबो बट तांको बापा को ना तांको जेजे को ना जेजे को ना एस जिंस हम ठीक से जଣା नथि ये सब जगह काम रे बेसनी जो माने हार्डकोर टैक्सोनॉमिस्ट अछंदी जो माने काम हैला जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म खोजिबा तांको में टैक्सोनॉमिस्ट कहूचे जेम तमे कहूचे मेडिकल साइंस रे समस्त जो एमबीबीएस क्वालिफाई करला पर समस्त डॉक्टर हे जाते देन डॉक्टर हे साला पर सब डॉक्टर का स्पेशलाइजेशन अलग अलग था सपोज अ डॉक्टर who is treating heart related problems that is called he or she is called as cardiologist तो दांत रिगार्डिंग प्रॉब्लम को डेंटिस्ट कहि परिबा आखि रिगार्डिंग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहि परिबा देन ऑल आर डॉक्टर्स बट तांका भी क्लासिफिकेशन अछि ग्रुपिज्म अछि जेम तम स्कूल ले हायर सेकेंडरी स्कूल ले साइंस संबंध जो पढो छ तमन जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बॉटनी जूलॉजी आईटी तो पढो छ ऑल आर कॉल्ड टीचर्स बट से टीचर्स माने भीतर डिफरेंट ग्रुप अछि बायो टीचर आईटी टीचर फिजिक्स टीचर मैथ टीचर सेमती आमे जो क्लासिफिकेशन कर जेठी तो क्लासिफिकेशन बेसिकली हम कौन मन रखुचे क्लासिफिकेशन हम देखुचे हाउ दे आर क्लासिफाइड तुम गोटे ओवरऑल आइडिया दिया जाउची कि केमिति क्लासिफाई करा जाय तुम जानि तो दिस सर जीनस ना 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 एते जिंस पचरा होय नै किछिटा अछि जा तो बुक रे देछि दैट पार्ट यू नीड टू रिमेंबर मु कहि दिबा को जाय कि को पार्ट टाइम इंपोर्टेंट जेमति मैंगो रे ना हे गला गहम ना हे गला गहम स्ट्रेटिकम एस्टिवियम सेमति एपटे प्लांट रे किछि ना एनिमल रे किछि ना से जिंस रहइबो अगर टेबल चार्ट टे अछि क्लास रो एंड जाय के रहबो तुम देख पारे जिंस कन्वोल्वुलेसी पिला माने गोटे फैमिली को बिलोंग करछि गोटे फैमिली कन्वोल्वुलेसी ता डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स सब अछि प्लांट्स माने से पार्ट को गले तुम जानि परबनी कोन कोन जिंस रहइला देन देखा तुम जो जिंस then order पर असला का कहता class असला it is the assemblies of related orders in order polynomials order sapindex some the primata जो mammalia भीतर क्या असला primata असला and carnivora असला एटी human असला and एटी monkey असला एमाने बाउजने primata को primates आंकर menstrual cycle हेता है बट तळे जो रह गेले सब carnivores माने आंकर जो oestrus cycle हेता है तो एमाने primata एमाने carnivora different different order को belong करछन just to let you know जेमति केरला तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तेलंगाना राजस्थान ये सब मिसी गले कोन जे ग्रुप ऑफ स्टेट्स माने ग्रुप ऑफ स्टेट्स हे गले बट एट द सेम टाइम
अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, लद्दाख, लेह लद्दाख, दे आर यूनियन टेरिटोरी यूटी। तो जमती ग्रुप ऑफ स्टेट अच्छी, ग्रुप ऑफ यूटी अच्छी, सेमती से कौन करछन ना ये सब मिसले टीम इंडिया होची। तो ठीक से बड़ा जिनस ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, ऑर्डर सैपियंटियस से माने मिसी क्लास डाइकोटिलिडन बनाउछंती। सेमती ऑर्डर प्राइमेटा, ऑर्डर कार्निवोरा मिसले क्लास मामालिया बनाउछंती। पुणी ए जो क्लास माने पुणी से रिजेंबल करके आगो जाय कि फाइलम और डिवीजन बनेबे एंड आगो जाय से डिफरेंट डिफरेंट किंगडम को जिबे। वंस आई कंप्लीट दिस पार्ट मु तुम पुणी गोटे डाउनवर्ड देखे आसीबे। डाउनवर्ड देखले तुम जानि पड़े कोन जिंस अछि। सपोज जेमती गोटे एग्जांपल दे कहू मु कहली गोटे पिलाटी अछि से तम स्कूल को बिलोंग करछि ता चिन्ह तमे स्कूल विशा स्कूल जे एते पिला अछन से एते पिला को पिला केम जानिबी। अच्छा अच्छा तम जो स्कूल से पिलाटी पढुछि तार ना क्लास हो जे प्लस 2 फर्स्ट ईयर। अच्छा अच्छा फर्स्ट ईयर अछि ओके सर। तो फर्स्ट ईयर पर सर आर्ट्स अछि, कॉमर्स अछि, साइंस अछि कहा को बिलोंग करछि। प्लस अच्छा से ना आर्ट्स भी जो प्लस 2 भीतर से साइंस को बिलोंग करछि। ओके देन सर साइंस पुणे हम तीनटा सेक्शन अछि, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। प्रैक्टिकली भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप अछि। मैं सेक्शन ए को बिलोंग करछि। गुड सर सेक्शन ए रे बिलोंग सर सेक्शन रोल नंबर केते कहबे से पूरा रोल नंबर केते मु रोल नंबर कहली। देन लास्ट बार से कोन सर नाटी कोन। ओके एबे से ना कहले तम ताको मे बी जानि परिबो मे बी न जानि परिबो चिन्हतिबो इट्स ओके न चिन्हतिबो नै। तो डायरेक्टली जदि मु ना कहबी ओके तो ए पिलाडी जानिछु कि तम कॉलेज रो सर कॉलेज रो 1000 पिला अछन तो 1000टा पिलार को पिला केमे जानिबी ना हमें ताको डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफाई कर देछे। ये जो पिला अछि से पिलार गोटे रोल नंबर अछि तार गोटे रेस्टोरेंट आई कार्ड टी अछि से रोल नंबर तळे तार सेक्शन लिखाई छी सेक्शन तळे तार क्लास लिखाई छी क्लास तळे तार स्ट्रीम लिखाई छी से स्ट्रीम कहा को बिलोंग करछे से आर्ट्स साइंस कॉमर्स कहा को बिलोंग करछे। देन से स्ट्रीम पळेला देन तापर ना कॉलेज नेम बस स्कूल नेम को हायर सेकेंडरी स्कूल को बिलोंग रेवेन्सा हायर सेकेंडरी स्कूल बीजेपी ऑटोनोमस हायर सेकेंडरी स्कूल उसे को स्कूल को बिलोंग करछे से पार्ट तापर आसीबो। डन आसला देखो डिजिफिनेशन आसला एंजियोस्पर्मी फाइलम आसला कॉर्डाटा। एंजियोस्पर्म हम समस्त बुझी पारतो एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट बोली कहतो। देन हम जो प्लांट किंगडम थिला प्लांट किंगडम डिवाइड कराई नि स्कूल बेले पढ़िथिबो थालोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा एंड स्पर्मेटोफाइटा। से जो स्पर्मेटोफाइटा थिला सी फुन दि प्रकार थिला कोन कोन ना गोटे हिला हमर जिम्नोस्पर्म आ गोटेला एंजियोस्पर्म गोटे नग्न बीजी गोटे आवृत बीजी। ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट माने थिले जो आर द हायर प्लांट्स हम कहूचे से एंजियोस्पर्म में बिलोंग करले को माने सबु ना डाइकोटिलिडन एंड मोनोकोटिलिडन दुई बीजपत्री आउ एक बीजपत्री। तो डाइकोट प्लांट्स एपट आसले मोनोकोट प्लांट सेम एपट तो मार्क फाइलम पडाटा को फाइलम पडाटा भीतर क्लास के आसला एम्फीबिया क्लास रेप्टिलिया क्लास एप्स क्लास मामालिया। एम्फीबिया मींस उभयचर जो माने पानी रे आउ माटी दीपट रही परिबे। रेप्टाइल्स माने को माने गेले सरीसृप जाति जाको हम कहबा साप हे गेला से रेप्टाइल्स रे जिबे। एप्स हे गेले बर्ड्स मान कथा कहूची चढ़ी मान कथा कहूची किंगफिशर हे गेला पैरट हे गेला क्रो हे गेला एवं सब गेला एप्स को। एंड मामालिया कहले को माने ना जो माने थांती कोन मामालिया माने जो माने हमरा आसिले विविपारस जो माने कोन करछ ना छुआ जन्म करि परछन्ती आ जो माने ते छुआ जन्म ला पर लैक्टेशन करे परछन्ती स्तन पाई प्राणी ताको मिल्क इजैकुलेट करि दे परछन्ती ताको हम क्लास मामालिया बोली कहबा। क्लियर तो ए जाय कि आई होप तो माने बुझी परथिबो। सर जीनस सोलानम इंक्लूड्स बोथ सोलानम ट्यूबरोजम सोलानम मेलनजिना। देखो जीनस से सोलानम गुड से सोलानम में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट अछि सोलानम ट्यूबरोजम भी हे परिबा सोलानम मेलनजिना भी हे परिबा। फॉर एग्जांपल मो क्लास रे दुटा चारटा पिला अछन समस्त ना अछि ओम। ठीक जो चारिटा ओम अछि मो क्लास रे जनक ना ओम प्रकाश साहू जनक ना ओम प्रकाश प्रधान जनक ना ओम प्रकाश स्वाई जनक ना ओम प्रकाश बेहेरा। तो चारिटा जाक ना ओम चार जन मिडिल नेम भी प्रकाश अच्छी चार्टा टाइटल सब डिफरेंट अच्छी। तो मुझे कहली जिनस सोलानम 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 हेले तांको जो स्पेसीज अछि ट्यूबरजम नाइग्रम मेलनजेना स्पेसीज डिवाइड करछि। तो मुझे चारटा ओम को मो क्लास चारटा कॉर्नर रे बसै देछि और जब मो क्लास को एंट्री करछि क्लास से एंट्री करी मु तांको सहित जो ये जो कोई मिल गया मूवी देखथिबो कोई मिल गया फिर से कह जो कि ओम 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 ओम। तो मो चारटा ओम चारटा कॉर्नर रे बसिले तो क्लास टा मोर फुलफिल हैला एंड क्लास मोर कंटीन्यूअसली चलला। देन ठीक से टाइप रे मु बुझिया कोन तम ट्राई करछि कि ए जो साइंटिफिक नेम सब अछि ना गोटिए फैमिली भितरे डिफरेंट टाइप रो जीनस थिबे गोटिए जीनस भितरे डिफरेंट टाइप रो स्पीशीज थिबे बट स्पीशीज होचे लास्ट टैक्सन ने
से ग्रुप ऑफ स्पीसीज बिलोंग करी गोटे फैमिली को बिलोंग गोटे जीनस को बिलोंग करथिबे से ग्रुप ऑफ जीनस असेंबल करी के गोटे फैमिली रहिथिबे से ग्रुप ऑफ फैमिली असेंबल करी के गोटे ऑर्डर को बिलोंग करथिबे से ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स में से गोटे क्लास को बिलोंग करथिबे ग्रुप ऑफ क्लास में से गोटे डिवीजन बा गोटे फाइलम को एंड ग्रुप ऑफ डिवीजन बा ग्रुप ऑफ फाइलम में से फाइनली गोटे किंगडम टे फॉर्मेशन करूची it is the assemblage of related classes. In case of plant, the related classes form a division, but in case of animals, it form a phylum. जिनसो एका तगल ना रिश्ता वही सोच नहीं जिनसो गोटे नागल अलग अलग जाइए. In case of botany, in case of plants, we call it as division. In case of zoology, in case of animals, we call it them as phylum. Clear? देखो असला एड तम पाखे साम्राज्य असला द हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम प्लांटी किंगडम एनिमलिया से किंगडम प्लांटरी को माने असले डिवीजन एंजियोस्पर्मी डिवीजन जिम्नोस्पर्मी मन पड़ची नग्न बीजी आवृत बीजी जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड एंजियोस्पर्म कवर्ड सीड्स फ्लावरिंग प्लांट असले एपड असला कॉर्डेटा आर्थ्रोपोडा डिफरेंट डिफरेंट फाइलम अछि एनिमल किंगडम रे 11 टा फाइलम अछि तमर फर्स्ट ईयर जूलॉजी फर्स्ट चैप्टर आसीबा एनिमल किंगडम as an animal kingdom तम पढिबा there are 11 phylums present in the animal kingdom पोरिफेरा रो स्टार्ट होची कॉर्डेटा रे एंड होची पर जब हम प्लांट किंगडम कहबी प्लांट किंगडम में चारटा डिवीजन अछि कोन थालोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा एंड सोमेटोफाइटा इन द थालोफाइटा को माने रहउछंदी all those thallus bearing organisms जो माने पे कोन अछि सुब्रांशु शेखर kindly don't do all those things beta थालोफाइटर कॉमन आसले थालस बेयरिंग प्लांट व्हाट डू यू मीन बाय थालस बेयरिंग प्लांट ना जहाँ पे कौन अच्छी नो ट्रू रूट नो ट्रू शूट नो ट्रू स्टेम नो ट्रू फ्लावर नो ट्रू फ्रूट किछि ट्रू जिंस नहीं देन दैट इज कॉल्ड सिंपल ता बॉडी और थालस से तैयारी छी एंटायर थालस ने बॉडी तैयारी छी देन थालस के पिंडुला को बुझौचे देन तारो टिके एडवांस रे को माने आसले ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा को हम कोन कहचे एम्फीबियंस प्लांट किंगडम कि एमाने एक्वाटिक हैबिटेट रु धीरे धीरे लैंड हैबिटेट बा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को मूव करचंदी दैट्स व्हाई ताको में इवोल्यूशन ने गोटे स्पेशल पार्ट से माने होल्ड करचंदी ताको हमें कहउची कि एम्फीबियंस प्लांट किंगडम क्लियर देन तापरे को माने आसिले कि थालोफाइटा ब्रायोफाइटा देन टेरिडोफाइटा दिस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो माने पाखरे वास्कुलर बंडल फॉर्मेशन हवा स्टार्ट हैला यू नो व्हाट इज वास्कुलर बंडल जाइलेम फ्लोएम एसब जिंस आसीबा स्टार्ट हैला and last but not the least से मानो परे के आसिले टेरिडोफाइटा परे स्पर्मेटोफाइटा जोटे जिम्नोस्पर्म अछि एंजियोस्पर्म अछि जिम्नोस्पर्म रे हम कहा विषय देखुचे ना जो नेकेड सीड सेड्रस हे गला साइकस हे गला पाइनस हे गला त्यसो गले गोटी जिम्नोस्पर्म को आ जदि म एंजियोस्पर्म रे कहबी ऑल दोस फ्लावरिंग प्लांट जो गछरे फूल होची फूल परे फल होची फल भितरे मंजीटी अछि तो मंजू कवर करके ता फ्रूट टी रखिची दैट इज कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म देम द एग्जांपल हैला मैंजीफेरा इंडिका मैंगो मैंगो जो अछि मैंगो रे सीड की तारो जो कोइली अछि टाकुआ भितरे ता ऊपर कवर करके के रखि ता फ्रूट रखिची तो गोटे फ्रूट आसिला फ्रूट भितरे सीड अछि तो सीड टा कवर कर रखाई दैट इज कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म क्लियर जानि पहिले जाई कि तो हाईएस्ट कैटेगरी के आसिला किंगडम तो किंगडम तले के थिला फाइलम और डिवीजन फाइलम डिवीजन भीतर के थिला क्लास क्लास वाले के थिला ऑर्डर ऑर्डर तले के थिला फैमिली फैमिली तले जीनस जीनस तले स्पीसीज तो सबटू हाईएस्ट कैटेगरी के आसिला किंगडम सबटू स्मॉलेस्ट कैटेगरी के आसिला हमरो के स्पीसीज ए जे बुझी पाइलो रे एनी डाउट टिल नाउ तो सातटा पार्ट कहले टी फर्स्ट आसिला नंबर 1 कहा हम काउंट करले नंबर 1 इज आवर किंगडम number 2 is our phylum or division number 3 is our what class number 4 is order number 5 is family 5 रो family ff मन लगा family then 6 आसीगला कि हमर genus 7 आसीला कि हमर species तो ये आसीला हम सातटा जो हमर कैटेगरी नंबर 7 थाला फॉर रीजन मन जो माने बुझ पाइलो थाला फॉर रीजन बुझेला ना बुझेला जो मैंने सब महेंद्र सिंह धोनी फैन थे जानी पारे so one more question it is a notochord an important feature classifying organism between yes abu sangam it's correct notochord is important for classification of organism different classes are divided by notochord को लेके
Thala for a reason. Ready now? Sal also belong to team Thala. Yes, yes, yes. Always team Thala. Taxonomy taxa was a plural. Yes. Taxon is singular. Taxa is plural. Jemti mitochondrion, mitochondria. Jemti flagellum, flagella. Bacterium, bacteria. So the taxon, taxa. ଏବେ ମତେ ତମେ କହିବ ସୋଭିଏତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଅଛି ମୋର କି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ର ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ କଣ ହବ? What is the plural form of nucleus? Answer this question. What is the plural form of nucleus? Then the mitochondrion को mitochondria कहूचे, nuclei good, nucleus and nuclei. कल से कोई जरा nuclei कोई नहीं था नहीं, nuclei is the right answer. Yes, Gayatri, absolutely correct. Nuclei, Soviet correct, and Xiaomi nuclei nuclei दो बार nuclei nuclei नहीं, एक बार nuclei. Nuclei माने सब nucleus को मिस्सी की nuclei बोली कहूची. इसलिए तो धमाल बमन बमन दो बार बमन नहीं, एक बार बमन. Once nuclei. Good, 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 good. Yes, yes, Manmatha, Vaishnavi, everyone is giving the right answer. ठीक है. Now, focus करिए अब taxonomy categories example देखिबा. हाँ, it's okay, fine. किसी नहीं. Now, you can see in the sorry, is roasting more. Okay, this thing we'll discuss later. अब पाठ पढ़िबा अब देखो किंगडम एनिमलिया फाइलम कोडाटा क्लास ममालिया ऑर्डर कार्निवोरा फैमिली फेलिडी जीनस पैंथेरा एंड स्पेसीज टाइपस तो देखि देखि पारिबो एनिमलिया भितरे इंसेक्ट्स माने भी जाउछन्दी एनिमलिया भितरे बर्ड्स माने जाउछन्दी ऑफ कोर्स आमे तो जाउछे ही एठी देन एठी डॉग भी अछि कैट भी अछि एठी लायन भी अछि एंड टाइगर भी अछि दे ऑल आर बिलोंगिंग टू किंगडम एनिमलिया समस्त बिलोंग करछन किंगडम एनिमलिया को किंगडम एनिमलिया भितर जो फाइलम कडाटा अछि कडाटा भितर को माने जिबेनी कडाटा भितर हमर इंसेक्ट्स माने जिबेनी ताको नोटोकोड नै देन आउ बाकी बन सब आसी गले देन मामालिया देखिबा मामालिया भितर बर्ड्स आसीबनी कना बर्ड्स एप्स को बिलोंग करछि बर्ड्स ओविपारस ओविपारस माने बुझ पड़छ जे अंडा दिए छो जन्म करे नै मन देखिबा बर्ड्स बर्ड्स माने ले ओविपारस आ आमे जो हेगुल आमे जो विविपारस माने जो माने अंडा दियो देन डायरेक्ट छो जन्म करंती प्राय पिला को नै कंफ्यूज होंती मन रखि दबो अंडा अंडा इज गोल ठीक अछि अंडा गोल अछि तो अंडा रु ओ मन रखि दबो ओ रु ओविपारस एंड आमे सब बळे जे फोटो उठला सो विक्टर साइन करू छ वी मींस विविपारस इट्स सिंबलिंग दैट इट इज विविपारस तो ओविपारस विविपारस तो कडाटा भितर गले समस्या आसिले एटी ओविपारस विविपारस मिसिक रहिले मैमालिया रे को मन रहिले ओनली रहिले विविपारस माने जो माने तांकर लैक्टेशन करे परचन पिला माने देन ताहा कार्निवोरा जेबे आसिला एटी ह्यूमन सेपरेट हे गेला कारण ह्यूमन तो कार्निवोरा को बिलोंग करनी आमे तो होमिनिड फैमिली को बिलोंग करिबा तो एटी से माने रहले को मन रहले कार्निवोरा रहले हमर डॉग भी अछि कैट भी अछि लायन भी अछि टाइगर भी अछि जो फेलिडी फैमिली कहले फेमिडी फैमिली डॉग कटि गला कारण जो डॉगेस भाई एटी अछि से डॉगेस भाई बिलोंग करछि काहा को से बिलोंग करछि कैनेडी तो फेलिडे को माने आसिले फेलिडे रिप्रेजेंट हेले कैट अछि फेलिस कैटस फेलिस डोमेस्टिकस देन एपटे के लायन आसी गला तापरे एपटे आसी गला हमर के पैंथेरा टाइग्रिस पैंथेरा लियो पैंथेरा टाइग्रिस यदि मु जिनस पैंथेरा को आसीबी पैंथेरा दीटा रहले कि रहले लायन भी रहला टाइगर भी रहला और जो स्पीशीज को आसीबे सबड लोएस्ट टैक्सोनॉमी के आसला स्पीशीज से हला के टाइगर डन सो एंटर किया छे टाइगर टाइगर अभी जिंदा है देख परथबो एटी टाइगर एटी बंची गई अछि द स्पीशीज टाइग्रिस रे हमर पैंथेरा टाइग्रिस एटी प्रेजेंट है अछि तो ये समस्त हिलता डिफरेंट डिफरेंट टैक्सोनॉमिक हायरार्की रे हम तक हम देख परिबा जन हम स्कूल रे हायर सेकेंडरी स्कूल बा कॉलेज रे डिफरेंट डिफरेंट पिला माने अछंती तांको बजे तम देखियो तमर साइंस स्ट्रीम रे प्लस 2 फर्स्ट ईयर साइंस स्ट्रीम रे एती लोक अछंती देन से साइंस स्ट्रीम रो तमर ग्रुप रे तमर सेक्शन एती लोक अछंती तो सेक्शन ने फॉर तम समस्त तो क्लोज न थिबो तम जो ग्रुप ते थोड़ गैंग ते थिबो ता बजे फोन तमर किछि अछंती प्रैक्टिकल रे तम कॉमन ग्रुप अछि कि तम स्कूल संग हिथिबो
देन तापर तमर आसीगला सिबलिंग्स पार्ट को एंड फाइनली एंड तुम ही आसिलो तो अंत में तुम ही रहोगे ये समझ लो एंड तुम ही रहिबो और इधर टैक्सोनॉमिक हायरार्की टा ए पटरे आसिला बुझि पाइलो ना ओके तो लास्ट स्लाइड रहला देन आपन हम कुछ क्वेश्चन आंसर करिबा टाइम बहुत सारा अच्छी यू कैन डिस्कस ओवर हियर कि जो मान सब स्क्रीन एनोटेट कर जो काइंडली को रिमूव कर दियो इरेज कर दियो Lemon, any doubt till now? The students? Okay. Devaprasad, Trupti, Vaishnavi, Abu. Okay, done. Now, let's focus on the taxonomic categories. The man, but a house fly, the machivoli gojo, then mango, then wheat. I'm going to classify it. ये जो कॉमन नेम होची जो फोटो तमे देखि परछो कॉमन नेम हैला मैन कॉमन नेम इज हाउस फ्लाई कॉमन नेम इज मैंगो कॉमन नेम इज फिट बोले बायोलॉजिकल नेम देखिबो ये बायोलॉजिकल नेम ना हैला कोन मैन नो बायोलॉजिकल नेम होची होमो सैपियंस एंड तमे से पार्ट ऑफ वर्ड से मार्क कर रखता हो जो होमो सैपियंस होची एटी एच होची कैपिटल रेस्ट ऑल आर स्मॉल जीनस रो फर्स्ट अल्फाबेट इज कैपिटल और जीनस रो बाकी सब जगह अल्फाबेट कोन था स्मॉल था देन स्पेसीज सब स्मॉल रहइबो होमो सैपियंस सेपरेटली लिखा है एंड ताको इटैलिक फॉर्म में लिखा है जैसे टेक्स्ट अछि प्रिंट करा है जैसे इटैलिक फॉर्म रे अछि तो मैं हैंड रिटन लिखिबा जदि पिला मान को मन ताको अबिका नोट कर परथिबो पिला माने तमे ताको हैंड रिटन लिखला को सेपरेटली अंडरलाइन करिवो होमो को अंडरलाइन करिवो एंड सैपियंस को अंडरलाइन को सेपरेट गोटे गार टाणी दबनी होमो सेपरेटली सैपियंस सेपरेटली क्लियर मु रिक्वेस्ट कर समस्त को एक पार्ट लिखि दियो इट विल बी हेल्पफुल टू यू फाइलम कडाटा क्लास एफ से डाउट रहला प्रतीक्षा ओके देखो फाइलम जो रहला फाइलम ग्रुप ऑफ क्लासेस को नेकी डिवाइड है बहुत सारा क्लास मिसी गोटे फाइलम रे बनु छथि अब क्लास होला कि बहुत सारा जे ऑर्डर को नेकी बनु छै तो क्लास एफ्स कहले कोन एफ्स कहले हम बुझो छी कहा को ना बर्ड्स बनम कैटेगरी बुझो जते प्रकार चढ़ई रहले स्टार्टिंग फ्रॉम ओस्ट्रिच ने कि हमरा जो छोट पक्षी घर चटिया चढ़ई जाएंगे समय सर एफ्स भीतर जिबे କିନ୍ତୁ କଡାଟା ହଉଛି କଡା ହାଭିଂ ଅ ନୋଟକ ଯୋଉ ମାନଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଅଛି ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲେ ନା ମେରୁଦଣ୍ଡୀୟ ଅମେରୁଦଣ୍ଡୀୟ those are having notochord those who do not have a notochord ଅଛି the chordates notochord ନାହିଁ the non chordates तो ये जो कड़ाटा से तमर फाइलम भीतर जाउची ता भीतर आसीबो को माने ना एप्स आसीबो रेप्टाइल्स आसीबो मामालिया आसीबो these are different classes से क्लास डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट आसीबो देन हम कहल ना हमें जिनसेटी इंडिया इज अ कंट्री इंडिया इज अ मदरलैंड इंडिया अवर कंट्री से इंडिया भीतर डिफरेंट डिफरेंट लोक भी रहिबे डन डिफरेंट डिफरेंट लोक को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट को बिलोंग करछली मु जते ଏବେ कंपैरिजन करबी गोटे तमिलनाडु रो लोक एंड गोटे नागालैंड रो लोक आर द सेम विल बी द सेम हे परिबनी ना तांकर एरिया अनुसार गोटे लेह लद्दाख रो लोक आ गोटे केरला रो लोक समान ही परिबे कि नहीं तांकर खान पान अलगा तांकर वेशभूषा अलगा तांकर चालीचलन अलगा तांकर कल्चर रिलीजन सोसाइटी ट्राइब ये सब जिनस डिफर करिबो फ्रॉम पर्सन टू पर्सन फ्रॉम स्टेट टू स्टेट क्लियर हमर जोटा ओडिसा रे जो कल्चर अछि दैट कल्चर इज नॉट इन मणिपुर दैट कल्चर इज नॉट इन मेघालय दैट कल्चर इज नॉट इन असम असम रे जो कल्चर थी दैट शुड नॉट बी इन महाराष्ट्र डन बट इज अ डिफरेंस बिटवीन नोटोकॉर्ड एंड स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन ओके नोटोकोड जो तुम कहूछ नोटोकोड भीतर हमर को पार्टटा रहिला ना स्पाइनल कॉर्ड ही जाके भर्ती की होछ नोटोकोड भीतर से तुम बेसिकली जूलॉजी क्लास रे पिला मन डिटेल से पार्ट टा जानि परिबो कोन कोन पार्ट अछि एनिमल किंगडम पढिला बेले बाकी आकु मु सारी के देन मु जीवी को पार्ट को ना हमर क्वेश्चन आंसर डाउन को जीवी नोटोकोड स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन ताको ही कहा जाउछि बैकबोन जाउ तुम कहूछ हमर रीड की हड्डी दैट इज आल्सो नोटोकोड द थोरासिक चैम्बर एपटू स्टार्ट करके हमर एंड जो बोन को जाइछि
In human being, we are having 206 number of bones. 206 खंड हाड़ बॉडी अच्छी. ये 206 number of bones को हम दीटा पार्ट रे डिवाइड कर दीजिए. दीटा पार्ट रे के क्या सिला ना गोटे पार्ट तमक हे गला, that is your appendicular and second is your axial. दी पार्ट जो रहला. ये जो हाथ के मैं देखो छ आज 30 टा बोन अच्छी. 30 टा बोन के अच्छी. Starting from your shoulder to start करिकी तमरो elbow जाइकी. गोटे बोन humerus, then asila radius, then asila ulna, then carpals, then metacarpals, then phalanges. So एपड़ 30 टा बोन, सेपड़ 30 टा बोन. गोटे 30 टा बोन, सेपड़ 30 टा बोन. तो 126 रहला तमर केवल ए पार्ट रे. And rest to 80 रहला से तमर 80 axial section में appendicular section रहला. अब बेटर हुए तो हम पढ़ी पारिबे कोड जूलॉजी क्लासेस माने करे. प्लस क्लासेस जेजे सर पढ़ीबे बा टीएन सर तपन सर पढ़ीबे से क्लास तुम से बुझ पारिबे. वर्तमान आमे डाइवर्सिटी क्लास रे ई पार्ट को आगु नबा. मोनोकोटिलिडन डाइकोटिलिडन कंफ्यूज सर. ओके सो विथ मोनोकोटिलिडन डाइकोटिलिडन डिफरेंस होची कोन ना मोनोकोटिलिडन होची हमर एक बीजपत्री, डाइकोटिलिडन होची हमर दुई बीजपत्री. ता माने फुनी कोन एबे ना जो प्लांट रो सिंगल कोटिलिडन अछि गोटे सीड री फ्रूट्स होची ना. तो मार्क करिवो धान गछर जो मंजी अछि जो धान जा हमें पके की चावल बा धान जो गछ होची सेरो सिंगल कोटिलिडन भारतिबो. बट इन डाइकोट ट्विक टे भारियो. डाइकोट जिन मैंगो हे गला के तो मैंगो रो एट तुम देखियो मैंगो अछि एटी व्हीट अछि. मैंगो रो भीतर की अछि टाकुआटा अछि. टाकुआ भीतर कोइल अछि. जब ताकू नै तमे पकेइबो आ ताकू जर्मिनेट करेइबो तो जर्मिनेट करिके सेटु गोटे भारिबो गोटे सूट टे भारिबो ऊपर को गोटे रूट टे भारिबो तळ को. सूट टे डेवलप करछि कोठु ना तार प्लिम्यूल रो रूट बनछि रेडिकल को. ए जो प्लिम्यूल सूट टे भार जे से आगु जाई गोटे ट्विक बने दो त डीटा कोटिलिडन आगु जाई बानी. किंतु जत मार्क धान गछरे गहम गछरे एटी सिंगल कोटिलिडन डी भारत. सिंगल गोटे पत्र भारत एक बीजपत्री से दुई बीजपत्री दीटा भारत गोटे भारत. आउ केम डिफाइन कर पारे तमे ताकू खाली सीड न दे केमे जानि परिबो समस्या टे भलसे सुनि देई पार्टी. द डाउट मे बी पचारछि सोभित पचारछि बट डाउट समस्तंकर समस्या टे केयरफुली सुनो पार्ट टा को बुझौछि. हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मोनोकोट एंड अ डाइकोट प्लांट. जो मोनोकोट प्लांट को ध्यान से देखिबो मोनोकोट प्लांट जो लीफ अछि से लीफ रा वेनेशन अछि के भलिया अरेंजमेंट केमते अछि. द वेनेशन इज पैरेलल वेनेशन. बट यू सी अ डाइकोट प्लांट से डाइकोट प्लांट जो लीफ अरेंजमेंट सब अछि से लीफ अरेंजमेंट सब अछि को भलिया ना रेटिकुलर वेनेशन अछि. तुम एरिया जरे पिला माने देखि परिबो काहा को ना धान गछ पत्र देखि परिबो आउ ता से तुम गोटे मैंगो ट्री रा पत्र देखि परिबो. धान गछ पत्र तुम देखियो को भलिया अरेंजमेंट तो पैरेलल समझे लाइन 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 पैरेलल वेनेशन सब हेतिबो. बट तुम जदि गोटे पिजुली गछ पत्र देखिबो बा तुम गोटे आंब गछ पत्र देखिबो गोटे मंदार फूल पत्र देखिबो सेठी यू कैन सी द वेनेशंस आर ऑफ रेटिकुलेट. गोटे मिडरिप जाइची से मिडरिप फुनी ब्रांच ब्रांच रो ब्रांचलेट्स बाहरची. the first axis second axis tertiary axis एवडा वेनेशन हेतिबो. तो पत्र देखि तमे कहि परिबो whether this plant is monocot plant whether this plant is dicot plant. आउ भी गोटे जिंस अछि जा सहित फ्लावर देखि जानि परिबो. if it is trimerous then it is monocot. if it is tetramerous or pentamerous it is dicot. आगु गले पढिबो जिंस सब तम सिलेबस रे अछि. मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट रे पढिबो आगु क्लास कोले जानिबो. वर्तमान क्लास रे तमे एई जो तम आगे जो पीपीटी थुआ आइछि जो स्लाइड टी अछि एट सो ना बरा मन रखिबो. तो पिला मन पछते सर सब जिंस मन रखियो पडिबो कि सब मन रखले भी तुमको एई चारटा पांचटा मिनिमम मन रखियो पडिबो. यस गुड. मोनोकोट रे फाइब्रस रूट सिस्टम हे गेला डाइकोट रे टैप रूट सिस्टम. करेक्ट. टैलेंटेड पिला मन अछि नाम पठे. मोनोकोट रे मैन हाउस फ्लाई मैंगो फिट बायोलॉजिकल नेम रे कोन हे गेला सॉरी मोनोकोट बोलछि कॉमन नेम हे गेला मैन. एपटे कॉमन नेम है हाउस फ्लाई कॉमन नेम इज मैंगो कॉमन नेम इज फिट. तो मैन रो बायोलॉजिकल नेम देखिबो होमो सैपियंस. हाउस फ्लाई रो मुस्का डोमेस्टिका. मैंगो रो मैंजिफेरा इंडिका. फिट रो टिटिकम स्टिबियम. जीनस जो तुम देखिबो ए होमो सैपियंस जीनस होची होमो और स्पीशीज है सैपियंस. हाउस फ्लाई रो जीनस होची मुस्का और तार जो स्पीशीज होची डोमेस्टिका. मैंगो रो हमर मैंगो हला मैंजिफेरा देन असला इंडिका स्पीशीज इंडिका और व्हीट रो टिटिकम स्पीशीज हला स्टिबियम. देन जीनस असला होमो मुस्का मैंजिफेरा टिटिकम रे सब असला. फैमिली होमिनिडाई मुस्किडाई अनार्काडियसी एंड पोएसी. ऑर्डर प्राइमेटा डिप्टेरा सैपिंडेल्स पोइल्स. क्लास रो मामालिया
insecta, dicotyledony, monocotyledony, and phylum by division ne jodi man achi to phylum asibo, house fly achi to phylum asibo, hele mango achi to division, fruit achi to division. Podata, arthropoda, angiospermy, ye bhi angiospermy kana flowering plant ko belong korchen sette to angiospermy boli kohachi. Yes, parallel venation of monocot and reticulate venation in dipod. Correct. So now this segment is open for question answer. तो एबे हमें interact एटे live interaction करिया. The पिला माने तम पाखरे किछि question अछि. The basic unit of biological classification. सबुठ basic unit की है? Genus ना family ना species ना order. Don't write on the screen kindly. गाड़िया किछ फायदा होबो नहीं. हम पाखे बहुत सारे आंसर असलेनी. आंसर पार्ट मीटिंग में असले देख परिबा. समस्या कहउछन्ती वैष्णवी करेक्ट आंसर स्पीसीज, अबुसंगम स्पीसीज, अनन्य स्पीसीज. तुम सब फोन ज्वाइन करछन्ती. आई कैन रिकॉर्ड योर नेम. गायत्री करेक्ट आंसर स्पीसीज. ऑप्शन सी यस स्पीसीज. सो विच स्पीसीज करेक्ट. समस्त करेक्ट आंसर दे चकन क्वेश्चन बहुत इजी थिला. Very good, very good. Everybody is giving correct answer. Sudhita Sahu, Ekam Higher Secondary School, correct answer. Deva Prasad Mahapatra, correct answer. Good. तो जो पिला माने seriously पढ़ुछ समस्त आंसर करेक्ट अछि. Good answer. Next, जदि करेक्ट अछि no need to describe. बुझार आवश्यकता नहीं. समस्त आंसर ठीक दैछ. If you go to the second question in the taxonomic hierarchy, the category below family and above genus is this. Ticket tricky achi. B order. Okay. Jitin is saying order. Vaishnav is saying trying. Minat is saying B order. Subhrans is saying B order. Manmad is saying B order. Samasta order part ratki jaicha. Sasmita is saying drive. The date answer ampa ko asu gote order asu na drive asu. Okay. Au get try kar. Priyanka is saying drive. Nandini order. Ekanso drive. Tribe. Every tribe is संख्या टिक अधिक बढ़िला. Order टिक कमिलानी. Still Rajeshwari is saying order. Sam is saying tribe. Okay. So finally, let me reveal the answer. The answer, Pilamane, and the winner of this question is the correct answer belong to Gojo Saturo Hegala Sanvi Sadhika Das. The lucky winner today I'm देखिबा Sanvi Sadhika Das is lucky winner. Answer is tribe. Last tribe is the correct answer. Gojo Saturu, I don't know if I'm spelling it right or wrong. The answer is tribe. पिलाମାନେ ଦେଖ tribe taxonomy ହେगा बिल्कुल नथिला. तो एई ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିयो. Yes केबीसी ଚାଲିଛି ହେଟି. କିଛି ମିଳିବନି ଇନାମ ରେ ଖାଲି ଖୁସି ହବା କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ. तो ये जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की पार्ट चलछि. टैक्सोनॉमिक हायरार्की रे तुम देखि पाछो कोन कोन जिंस अछि ना क्लास ऑर्डर फाइलम तुम सब जिंस सुनिछ. ले ट्राइब तुम सुनिनो. ट्राइब होछि कोन ना ट्राइब इज समथिंग व्हिच इज बिलो द फैमिली एंड अबव द जीनस. ताको मैं ट्राइब बोली कहउछि. आको मैं ना सब डिवीजन बोली कहउछि. माने ओटे डिवीजन ताबे सब डिवीजन. ये सब बेले न थाए. ये जनरली न थाए. ताबे हम सेपरेट डिस्टिंग्विश कर देछे. जेना हम कैटेगरी बनेछे. तो ये जो ट्राइबल जो क्लास तो केबे भी हबनी. ऑर्डर भी केबे भी हबनी. फाइलम भी हबनी. यदि ए क्वेश्चन आंसर तमे न भी जानि छांतो तमे एलिमिनेशन राउंड रे आंसर दे परथांतो. ए क्वेश्चन आंसर तमे एलिमिनेशन कर पर. एलिमिनेशन माने कोन यू नो फर्स्ट क्या आसीगला. अब क्वेश्चन पजे का भीतर फैमिली और जीनस भीतर. देखो फैमिली ऊपर क्या आसी. फैमिली ऊपर आसी ऑर्डर. देन जीनस ऊपर क्या आसी फैमिली. तो फैमिली ऊपर ऑर्डर तो हबनी. ऑर्डर ऊपर क्लास क्लास भी हबनी. फाइलम भी हबनी. आंसर हो ट्राइब. तो ट्राइब हो गोटे सब कैटेगरी. ता अंडर आसी फैमिली. अंडर फैमिली भीतर ट्राइब. ट्राइब भीतर आसीगला जीनस. Which of the following is the correct sequence of taxonomic categories in descending order? Descending order से पचासी. Descending का बोझा जो border रो साना क्रमारे. सबूट border किया अच्छी है. Chin number प्राय तो B D गोटे प्ले answer दीची. प्राय everybody is saying B division.
then class, then order, then family, then tribe. Yes, 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 yes. Good. Rachito is saying that's the answer. Division, class, order, family, tribe. ଖାଲି ତୀର ଚିହ୍ନ ମାରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ବାକି ଜିନିଷ ସବୁ ଠିକ ଅଛି yes option B is the correct answer ତମାନେ participate କରୁଛ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି yes option B is the correct answer now let's move to the next segment question is term taxon refers to what taxon କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି question number 4 ପ୍ରାୟ ପିଲାଙ୍କର answer ଆସୁଛି option B yes Jiten is saying C no Jiten any formal rank ତ ସେମିତି ହବନି A ହବନି ବି rules of nomenclature ନା rules is ଯିବନି correct answer is option B rank in the hierarchy of classification जो classification ଆମେ କରୁଛେ ତାର जो taxonomical hierarchy ଅଛି ତାର ଗୋଟେ rank କୁ ସେ ବୁଝଉଛି that is called as taxon next which of the following statement is correct regarding the genus Panthera Panthera को किए belong କରୁଛି genus Panthera किए बोलता है हमें केमने describe it is a polytypic genus it includes lions tigers leopards which are different species all species within this genus have common fundamental traits and all of them okay I can see a flood of answer people are saying option D is the correct answer galaxy is saying B no B is not the correct answer D is the correct answer ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା B ହବନି ରେ ଜିତେନ B is no 5 number question B ହବନି because 5 number answer ହଉଛି D all of them କାହିଁକି ନା it's a polytypic genus poly means many poly means many ଆରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି ଆରେ lion ବି belong କରୁଛି tiger ବି belong କରୁଛି leopard ବି belong କରୁଛି different species ସେମାନେ ସବୁ belong କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ panthera panthera tigris panthera leo ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା and ଯେହେତୁ all of the above ଅଛି କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟି ମନେ ରଖିବ ଏ ଯୋଉ all of the above none of the above ये ना these are like magnets जब तुम एग्जाम हॉल रे बसिଛ ତମକୁ ଏ ସବୁ ଅପସନ ଦିଅ ପୁରା ଠିକ ଲାଗିବ ଅଲ ଅଫ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ସବୁବେଳେ ତମ ଟାଣିବ ତମ ଆଡକୁ ଦେନ୍ ଆଉ ଏଠି ଭୁଲ ବି ହେଇଯାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଜିନିଷକୁ କିଛି ଜଜ କଲା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଦେଖ କୋଉ ପାର୍ଟଟା ଲେଖା ହେଇଛି କିଛି ପିଲା ଥାନ୍ତି ବଡ ଅପସନ ଦେଇକି ଠିକ ମାରି ଦିଅନ୍ତି कि हाँ ऑप्शन टी बड़ा अच्छे एटा ही करेक्ट आंसर ना सेमती भूल करिवो नहीं तो जिनछड़ा भलसे पढिबो बुझिबो देन आंसर दो काहे कि ना तमे एंट्रेंस रे ठीक करले 4 मार्क पाइबो जदि भूल हे गला से 4 तो गला प्लस तमर जो ठीक हेतला सेठु भी गोटे 1 मार्क भी कटिथिबो माने दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इफ यू करेक्ट द क्वेश्चन यू विल गेट +4 if you wrong the question then it will get -5 -5 to 0 बहुत बेटर -5 पाइबा अपेक्षा 0 is बहुत better The term species was coined by Dash. Species term की कहते Carolus Linnaeus, Ernst Mayr, John Gray, G.G. Simpson. Try plans of the Linnaeus. Yes, saying start la binomial nomenclature start करते Carolus Linnaeus और species भी से सारी coin करते Carolus Linnaeus, the father of taxonomy. ये जो taxonomy part पढ़ले जो taxonomy का father किए थे Carolus Linnaeus and से ही start करते क्या करता ଆମର ସ୍ପେସିସ୍ ର ଟର୍ମ ସେଟ୍ କରିବେ ନା B ହବନି ଜନ୍ ଗ୍ରେ ନାହିଁ ଲିନିୟସ୍ କ ନାହିଁ ଆସିବ next the biological concept of species is primarily based on dash yes ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନେ answer A ଦଉଛନ୍ତି biological concept is primarily based on morphological similarities reproductive isolation ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ previous question ଥିଲା
Sorry for the misunderstanding. The previous question de thila, question number 6 जब देखिबो, question number 6 ର answer जो species ଅଛି John Ray हबो. Done. वैष्णवी जो पार्टी आंसर देला, yes. Question number 6 ର correct answer is John Ray. Yes. काहेकि John Ray हबो ना, John Ray ର प्रश्न ना देखले तांकू इंक्लूड करथिले के साइंटिस्ट का नाम होची कोन ना कार्लोस लिनेस ता बुक रे सेटा इंक्लूड करथिले. Yes, you are correct, Jiten. Sorry for this inconvenience. The term species, maximum पिला कोनी के एजेंट छटे अछि बड़ा ऑप्शन देखि जब ठीक कर दबा बड़ा कॉमन लागो सुनी ठीक कर दबा मुझे तो बुझोतिले ऑल ऑफ द अबव गोटे मैग्नेट से तुम टाणी बबिका रेटिव से बड़ा जब the term species was basically coined by John Ray. Clear? The John Ray, my apologies, समय से जानी था. The correct question number 6 the correct answer होगी John Ray. Yes, you all are correct. Now, now come to question number 7. The biological concept of species. Abu Sangam was correct. Yes, yes, yes. सही को सही बोलना जरूरी होता है. जे ठीक, जे करेक्ट, से करेक्ट. Always correct. The biological concept of species is primarily based on dash. Morphological similarities को नहीं करा होची. ना reproductive isolation को करा होची. Genetic differences ना ecological needs. टिके fundamental question अच्छी बुझाओ पड़ेगा important question. तो स्पेसीज हमें कहा नहीं करछे कहा को स्पेसीज करि परिबा ना स्पेसीज से से माने जो माने रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को बिलोंग करछे मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज पिला माने हबनी बुझुची ए क्वेश्चन आंसर अब कोन तमरा फाइनली हबो देखो स्पेसीज कांसेप्ट आनथिले किए अर्नस्ट मेयर आनथिले एंड यस आंसर बी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी सिंधिगम आज्ञा आज्ञा समस्त जो माने कहउछ देखो ठीक और भूल डिफरेंस को बुझ परछटी ए मैटर दा ठीक और भूल आउ टिके स्टेप आगो जिबा आमे जे कोन लर्न करी गले ठीक भूल क्रेडिट ठीक अछि तमना लेवल ले खुशी होबा कथा कि आमे आंसर ठीक देइछे बोली बट हमर मोटो ठीक भूल कांसेप्ट नै एठी हमर मोटो होछि कि व्हाई टू हैव लर्न हमें कोन सिखिले कोठी भूल होछि काहे कि भूल होछि अब मु चाहू छी कि भूल ला को मो सामने रे हो बोली एबे भूल ले वी कैन करेक्ट इट ना कि काउंसिल ले भूल सब देन द बायोलॉजिकल कंसेप्ट स्पेसीज के स्टार्ट जो स्पेसीज का कोड है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन माने को बुझ परछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज माने डीटा को समान समान अछंती बोली जे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आसीबो नो हे परिबो नाही हमें पॉपुलेशन डेफिनेशन को बुझैतिली पॉपुलेशन डेफिनेशन कहितिली कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू ए स्पेसीज बिलोंगिंग टू सिंगल स्पेसीज जो माने आगो जाई कोन कर परिबे पोटेंशियली इंटरब्रीड करि परिबे तो सेठू हमें कोन कर परिबे स्पेसीज बोली कहउचे we are homo sapiens we cannot do and reproduce with monkeys we cannot go and reproduce with dogs or lions then the reproductive isolation comes species concept rakhile the right answer is option b question number 7 important question answer is reproductive isolation which of the following pair is correctly matched who part ta correctly match है कच्ची question number 8 yes ये बहुत easy question अछि कारण पैंथेरा लियो पैंथेरा टिग्रिस दुटा सेम जीनस को बिलोंग करछन्ती then the biggest solanum same genus of species लिखे स भूल अछि option a हबनी option b is the correct answer the category phylum in the plant kingdom is equivalent to which category in the okay let me read the question which category in the animal kingdom phylum ro animal kingdom में क्या है division option b yes correct option b division समस्त correct answer देछ last question a group of organisms that can interbreed in nature and produce fertile offspring defines it as जे इंटरब्रीड कर परिबे नेचर रे और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनै परिबे तंग हम कोन कहिबा यस करेक्ट आंसर के आसीबो एठी ताको हमें कहिबा बायोलॉजिकल स्पीसीज ऑप्शन सी इज द करेक्ट सुभ्रांशु शेखर गैलेक्सी नंदिनी महापात्र अबु संगम यस अनन्या यस a big shout out to all of you answer is biological species correct the pila mane I just want you to take a screenshot of this entire of this part और स्क्रीनशॉट नहीं जाओ कि तुम होमवर्क दिली तुम जो एनुअल एग्जाम जो मंथली टेस्ट हबो नीट रो मंथली टेस्ट हबो ता पई किछि क्वेश्चन आगो प्रिपेयर हेतिबो ताको प्रैक्टिस करतिबो लिविंग वर्ल्ड रो एक क्वेश्चन जो देछि टेक अ स्क्रीनशॉट
9 number answer T. Question number 9 no answer thila. Wait. 9 number phylum category. अरे phylum अछि ना, phylum division अब. Category phylum answer category division. Then plant रे होची division, animal रे होची phylum. No. Now take a screenshot of this thing and also this pattern. Take a snapshot or take a screenshot of this thing, and then okay. So you will get this portal from शिक्षाजन.odisha.gov in. तो मैं तम स्कूल ले हायर सेकेंडरी स्कूल ले जो नोडल ऑफिसर अच्छन तांको तुम्हें पार्ट पचार परियो हाउ टू get this PPT and all. He will explain you better. And thank you for your kind attention. We'll meet after a short break. So here we have completed this chapter called as Living World. But छुट्टिया 10 मिनट ब्रेक टे नहीं जीवा ठीक 9:15 ने आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑल आसिकी फोन हम क्लास स्टार्ट करिबा एंड आज गोटे नुवा चैप्टर स्टार्ट करिबी दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ठीक प्रीव्यू खाली देखै दोची हमें आज आर विषय पढिबार अछि डन तो एई विषय पढिबार अछि तुम भाई बंधु कुटुंब सब ठिया हिचंदी आज तमे किए हबो तुम सांग किए हबो रेडी कर रखि त ठीक अछि ठीक 10-15 मिनट गैप रे हम ए पार्ट को आसीबा till then. Thank you for your kind attention once again to all of you, and we'll meet after a short break. Pratiksha, you'll get this PPT. Ask to your nodal officer, school the link पाइଛ ତାଙ୍କୁ ପଚାର and ଶିକ୍ଷା ଯଦି portal ରେ ଜିନିଷ upload ହଉଛି ସେଠୁ ତମେ ପାର୍ଟି ପାଇପାରିବ ଠିକ ଅଛି ଓକେ ଯୋଉ ମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିକି ପଳେଇବନି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହି ରିଟର୍ନ କରିବ सरप्राइज अच्छी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़िबार अछि सेठी भी क्वेश्चन आंसर अच्छी हम से पार्ट करियो ओके दिस इज अ फर्स्ट क्लास ओके ओके देन तुम पार्ट टाको क्लियर करि परिबो सोबित कॉलेज जेबो ठीक अछि अब कौन कर ठीक 9:15 दिस इज 9495 9:15 विल बी बैक take a quick break and
The students, welcome once again. Am I audible? The participants? Okay. Okay, done. So here we are going to start our second class, which is ये गोटे chapter end है ला, एबे गोटे chapter start करी, गोटे नया chapter टे बर्तमान start करीबा, that is called as biological classification. Clear? हम ये chapter start करें biological classification. ଟିକେ wait कर ଯିବା ଯଦି ଆଉ କିଛି ପିଲା ମାନେ ଆସିନଥିବେ break ପରେ ମୁଁ କହିଥିଲି 9:15 will meet. It's already 19 9:17 9:18. In the previous class there are 60-62 participants around are there. Now it is exactly half. So we'll wait for another few minutes and then we'll start. Till then, if I doubt, and the prior plan was a question, common question about the note sharing and all. You talk to your nodal officers, school link and I'll also talk to your DHSC officials and let me see how we can share this note. मुझे तो मन अच्छे कि अपलोड होता है शिक्षा ज्योति पोर्टल शिक्षा ज्योति ऐप रे ए पार्टा थाए तारो if you go back to the slide you can see over here you can log into the website by entering your QR code printed on the admit card, user ID. Your password is basically 123456, and then you will use this portal for notes or PDF, or you can ask question, you can post your answer in writing or in audio video. So this was the earlier format. The agore format is thila. So now it is working or not. Let me once check the credential with the DHS nodal officers, and you also ask the same thing to your college respective faculties. Done. The next class, I'll make you clear about the segment. My sharing note, I have no issue, no problem. Tamari mana pai bonna hichi. It's for you all. So I have no hesitation to share this note with you. And if party comes to login. Now, shall we start? 29 participants are still here. So, okay, let's start. Huh? It's 9:20. Let's start. Now, okay. So in today's topic, it's a topic chapter number 2 in NCERT biology book. You can see chapter number 2 is biological classification. You know what is biology? The branch of science which deals with study of living organisms, living beings like the plants, the animals, and is a biological classification. What is classification? What is the need of classification? Why you should classify? This is the basic question which we have already discussed in the previous class. Now previous class रे just हम ये part discuss करथिले कि classification कौन classification काहे की होता है कौन ପାଇଁ की होता है what is the need of classification and what are the basics of classification. ଏବେ जो onwards जो class टी पढ़िबे जो class टी मैं नंबर को जाउची जो part टा पढ़े को जाउची here we'll get the more depth insights more depth knowledge about the word classification. ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏବେଠୁ କହି ଦଉଛି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ whenever you are classifying any organisms whenever you are dividing any organisms always and always remember the basis of classification. बुझिपारे कौन कहली जेते बेले भी तमे को भी पार्ट को डिवाइड करछो बा तुम लिखियो कि इट इज डिवाइड इनटू टू टाइप्स डिवाइड इनटू थ्री टाइप्स फोर टाइप्स जो डिवाइड हेची always remember what is the need of class what is the basis of classification को basis से classify करछो. For example, if I ask you how many types of cells are there, can you answer this question? My dear students, can you answer this question? How many types of cells are there? My question is, how many types of cells are there? Our answer is two type, three type, RBC, WBC. Okay, let's start the debate.
Let's start the debate. Deva is saying 2. Someone is saying 3. Nandini is saying RBC WBC right answer. Vaishnav is 2. Smriti is saying 3. Jignesh is saying 2. Abu is saying 2. Okay. But nobody has asked, sir, on which basis you are asking this question. Avinash is saying prokaryotic cell, eukaryotic cell. Gayatri is saying prokaryotic, eukaryotic cell. Smriti is saying RBC, WC, platelet. Okay, let me clear you here. When I say how many types of cells are there, the answer daba purbo tame question pachhataro, sir, on which basis you are asking. Because let me tell you, cell can be plant cell or animal cell. It can be prokaryotic cell and eukaryotic cell. It can be somatic cell or generative cell. It can be unicellular organism or multicellular organism. Yes or no? It can be a haploid cell or it can be a diploid cell. It can be gamete. It can be a zygote. The cell जो अच्छी ना ये different type रही परिबा. But the thing is on which basis? जिम्ति की मोई classroom में जो पिला मन अच्छी I can divide you in 1,000 ways. 1,000 ways केमते divide कर परिबी? Now first I can divide you on the basis of your gender. Those person who are having chromosome X and X, they are called as girls. Those persons who are having chromosome X and Y, they are called as boys. Classify kali. ये जो boys and girls classify ले को basis रे on the basis of gender. Again से boys classroom में मु divide करे पिलंग बे कि those persons having 2 eyes and those persons having 4 eyes. किसी थी बे कि दी आँखें कि चारि आँखें माने कौन जब दी नॉर्मल आँखी जा रहा छी और जो माने पे चश्मा पिंचंदी the chasma chasmis are bigger chasmis को divide कर परिबी. Then hair basis से classify कर परिबी जार hair अच्छी जार hair नहीं कार curly hair कार straight hair. Then classify करना height basis रे कि डेंगा अच्छी कि गेड़ा अच्छी height basis रे skin color basis रे blood group basis रे माने मो पाखे 1,000 ways are there to classify you. So remember, the question पचरे ना how many types of cells are there? तो ये question answer रे तमरे question पचता ना sir on which basis you are saying? Which basis अपन question पचता नहीं sir अपन ये cell जो question टे पचले ये question ना basis कौन अच्छी? माने आमे इटा को basis आंसर देबो माने plant और animal basis रे कहिबो ना आमे इठी cell रो type देखि कहबो whether it is prokaryotic cell प्राक्न्योष्टीय कोश और eukaryotic cell सुनिष्टीय कोश ए type basis रे कहबो ना हम एठी कहबो कि whether they are autotroph heterotroph whether हम एठी कहबो कि unicellular और multicellular एककोषीय कि बहुकोषीय कि somatic cell और germ cell सौम्य कोश ना जनीय जनन कोश तो को basis रे question थिला बुझ पाइलो आमे जते बेले भी जहा को भी डिवाइड करछे से डिवीजन ना गुटे बेसिस अछि and तमरो कामल से बेसिस को बुझिबा. And second thing we clear करिया को चाहूची जो पिला माने आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब लिखिछ जो बुक के मते लिखिछ ओके जो माने सब आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट लिखिछ से क्वेश्चन से जो पिला मानन जणे दवा चाहूची ए आंसर टे भूल हबो काहे ना आरबीसी डब्ल्यूबीसी दे आर नॉट सेल्स. The full form of RBC is red blood corpuscles. RBC is not a cell, beba. RBC is red blood corpuscles, and there is a difference between cell and corpuscles. अनछि लोहित रक्त कोष नुहे लोहित रक्त कणिका तो जदि हम आरबीसी को सेल बोली भाबी थांदे तम ओडे लोहित रक्त कोष बोली कहि थांदे बट इंस्टेड ऑफ सेइंग लोहित रक्त कोष वी आर सेइंग लोहित रक्त कणिका दैट इज इट इज नॉट रेड ब्लड सेल इट इज रेड ब्लड corpuscles. WBC white blood corpuscles. सेल हमें काहु कहबा तार तम सेल बोली कोइ तार डेफिनेट बाउंड्री अछि सेल बाउंड्री अछि सेल मेम्ब्रेन अछि जा भीतर साइटोप्लाज्म अछि जहाँ भीतर कौन अच्छी ना डिफरेंट काइंड ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट हेतिबा द माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम वैक्यूल आरबीसी भीतर एमती कौन सी जिंस अच्छी किछि पार्ट अच्छी डू इट हैज अ न्यूक्लियस डू इट हैज अ माइटोकॉन्ड्रिया डू इट हैज अ राइबोसोम डू इट हैज अ गोल्गी बॉडी नो we do not have all those things any of these things so it cannot be a cell it is a red blood corpuscles you need to remember rbc wbc platelet by erythrocyte leukocyte thrombocyte these are the various kind of corpuscles cells nahi to jo question padile how many types of cells are there to answer hala two type of cells thile but ko basis re pacharchi sei basis re answer de then mu kahili ki types of cell tumko sa plant cell animal cell
one is hexagonal, one is circular. Plant टा केमता देखिया पाएंगे hexagon षडभुज honeycomb structure भलिया हेतिबो, but animal cell केमता देखिया पाएंगे circular व spherical. If I ask you about the basis is the organization of the cell, cell टे केमिति organize हेइ अछि माने आ पाखरे membrane bound cell organelles बा झिल्ली युक्त कोष अंगिका माने अछंती ना नाहंती. If it is available, then it is called as eukaryotic cell. If it is not available, it is called as prokaryotic cell. ता पर depend करछि cell. Clear? बुझि पाइल? आगु जिबा? Any doubt till now? Okay, Vaishnav. Now, let's quickly move on to the next segment, biological classification. Now, yes, Nandini. Good. Yes. Actually, I कहा कथा the classification system में हमें देखिबा कहा विषय हेबे. Yes, sir. Okay, done. Aristotle जो साइंटिस्ट थे से क्लासिफाई करथिले ऑर्गेनिज्म मानकू ना. Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification of organism. ये जो organism मानो क्लासिफाई करिबारे Aristotle scientific approach टी अप्लाई करथिले. He classified plants into trees, shrubs and herbs. तो प्लांट को डिवाइड करथिले कि प्लांट माने या तो बड़ बड़ गछ ट्री रे जीव, तार टिके छोट आसिले से shrub बा गुल्मलता जाउ कहूचे, तार तळ पळे आसिले हर्ब कैटेगरी छु आसीबो, आ ता तळे रहले ग्रासेस माने रहले. तो सी क्लासिफाई करथिले अरिस्टोटल प्लांट को ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी. व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? ना मॉर्फोलॉजी इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस, हाउ यू लुक लाइक, तुम केमते देखा जाउ छ. व्हाट इज जो you cannot tell me by looking at me, you cannot tell me what is my blood group, because it is internal thing. Yes or no? You can tell me, you can tell how I look like, you can tell what is my height, what is my weight, what is my skin color, how my hair is. You can answer this question by looking at me. That is external appearance, that is morphology. But you cannot tell me that whether there is a hole in my heart or not. You cannot tell me whether I am a normal person or I am a dextrocardia person. My heart till left to tilt take my heart right to tilt take. Then so you cannot say all those things just by looking at me, because these things are my anatomy. You can only tell this thing by and doing the anatomy, doing the biopsy. So biopsy करके तमें कहि परिबो कि अच्छा जिंस आंसर या हबो बोली. तो Aristotle जो साइंटिस्ट थे अर्लियर क्लासिफिकेशन करथिले को बेसिस रे ना ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी. जे एनिमल को डिवाइड कर दुईटा कैटेगरी रे, गोटे कहले रेड ब्लड एनिमल्स, एनिमल्स हैविंग रेड ब्लड, एंड दोज एनिमल्स व्हिच डू नॉट हैव रेड ब्लड. तो जो माने रेड ब्लड थिले से माने कोन हे गले, दे आर मैमल्स, लिजर्ड्स, बर्ड्स, फिशेस. देखि तो माछ कटाला बेले नाले नाले ब्लड बाहरे. माछ कहले हां, चुंगुडी नुए. Chingudi is different. Chingudi जाओ तमे को जो prawn, that is different. Fishes are different. Don't please पिला माने कहीं भी गारागारी करो नहीं क्लास रे. Don't disturb. So then mammals, lizards, birds, fishes. Then no red blood जब देखिबा तले hard bodied भी थिबे नले soft bodied भी थिबे. यदि hard bodied तार चारि पटे ओटा थिक कवरिंग अल से माने insect रे गले. The soft body is then तार पाखरे या तो cell अच्छी या तो cell नहीं. There is cell माने कहला covering. If covering is there, then shellfish. Covering जरि नाही तो jellyfish हे गले. Soft body हे गला jellyfish मन का soft body रा example ले मन करियो. तो एमाने एही अकॉर्डिंगली क्लासिफाई करथिले. देन मु कहूची क्लासिफिकेशन रो जो डिफरेंट सेगमेंट अछि टोटली डिपेंड अपॉन द साइंटिस्ट. जो साइंटिस्ट के को वे क्लासिफाई कला तमे केमिता क्लासिफाई कर जिंस गोटे अछि. इफ यू सी एनएच रास्ता गोटे जाइछि, सेही एनएच नामकरण केमिति करा हिछि ना नाम दिया हिछि काहा को निया कि ता नेमिंग केमिति करा हिछि ना से जो एरिया रे बिलोंग करछि से एरिया रे हम कहूचे ताको. देन छक सबुटी अछि. कॉलेज पाकर छक हला कॉलेज छक, ट्रैफिक पाकर छक हला ट्रैफिक छक, हॉस्पिटल पाकर छक अछि हॉस्पिटल छक, मंदिर पाकर छक मंदिर छक. तो एग्जैक्टली तो जो छक हिछि गोटे चारि कोनिया जगह टी अछि जो सब लोग माने आसी मीट कर पारतनी, ताको हमें अलग अलग जगह रे अलग अलग नाम सब दिया अछि. जो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट आसिला, इट टोटली डिपेंड अपॉन द साइंटिस्ट और ताको अप्रोच कोन थिला.
तो आमको ये पार्ट रे ए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन से क्लासिफिकेशन ना बेसिस कोन थिला को बेसिस से क्लासिफाई कराई थी एंड देन तार कोन कोन एडवांटेजेस अछि कोन कोन डिसएडवांटेज अछि तार मेरिट्स कोन अछि तार डिमेरिट्स कोन अछि ए पार्ट को हमको देखियो पड़ियो सी Actually, the father of taxonomy, all know, Carolus Linnaeus. Linnaeus is 1758 रे से first proposed करथिले this system classifies organism into two kingdom. The two kingdom classification was proposed by scientist का नाम है Carolus Linnaeus. But Carl von Linné ताको नाम जोटा हम कहजे Carl von Linné ताको language रे but ताको हमें Carolus Linnaeus बोले जानते and he is considered as proudly as father of taxonomy. और से entire organism को डिवाइड कर देले इनटू टू किंगडम दुटा साम्राज्य डिवाइड कर देले वन इज किंगडम प्लांटी वन इज किंगडम एनिमल दुटा पार्ट डिवाइड करला जब इन 1947 in 1947 August 14 India the अखंड भारत India is being divided into two parts one is India another is Pakistan 1947 divided India and Pakistan in 1961 the Pakistan is again divided into East Pakistan and West Pakistan East Pakistan is later known as Bangladesh. Bangladesh बोली कहूचे और जो West Pakistan रहिला सी एबे जो पाकिस्तान जाबे तुम देबे जो सही पार्टन रहिला एबे कंडीशन एमती अछि से पाकिस्तान फुन डिवाइड हवा चक्कर अछि फुन बेलुचिस्तान अलगा हवा पीओके अलगा हवा पाकिस्तान अलगा तो क्लासिफिकेशन नो गोटा ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई करिया पाएंगे डिफरेंट डिफरेंट मोड अछि तो लिनियस जो मोड अप्लाई करथिले सी थिला कहा विषय ना सुपरफिशियल बा से जो ऊपर ऊपर देखि के मॉर्फोलॉजी देखि के तर सेल वॉल देखि से डिवाइड करथिले those organisms who's having a cell wall they belong to kingdom plantae those organisms who do not have cell wall they belong to kingdom animalia so on the basis of presence or absence of cell wall organisms are classified into two categories one is kingdom plantae second is kingdom animalia किछ किछ जगह रे एई मत भी अछि कि जो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कराइतिला इट से सेल वॉल को देखितिले प्लस मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखितिले एंड व्हाट डू यू मीन बाय मोड ऑफ न्यूट्रिशन तार माने कोन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन से कहउछन कि वेदर दे कैन प्रोड्यूस और वेदर दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड और दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड तो इफ दे प्रिपेयर देयर ओन फूड निज खाद्य निजे बनै परछंती दैट मींस दे आर ऑटोट्रोफ ऑटो मीन सेल्फ निजे निज खाया देई परछन ऑटोट्रोफ they belong to kingdom plantae and those organisms who cannot produce their own food and they have to eventually depend upon others they are called as heterotrophs and they belong to kingdom animalia yes photosynthesis basis कहउची बा देखो एटा ना टेक्निकल टर्म आसिला मु एटी तुमको मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहउची ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ हेले जो ऑटोट्रॉफ मन अछंदी नेसेसरी नो अस माने फोटोसिंथेसिस ही करियो बोली दे कैन डू केमोसिंथेसिस आगु जे बुझे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड केमोसिंथेसिस बट करेंटली ए पर्यंत ए जिंस बुझी चलो जिंस हो कोन ना हम जो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कराइची बेसिस कोन थिला किछि किछि जगह रे साइंटिस्ट माने को मत को चाहिए कि से माने क्लासिफाई कर देते 1758 रे आई वाज नॉट देयर यू आर नॉट देयर बट जो बुक कथा रे जो सी भी जगह नथिले तो हमें जहां भी डाटा पाउचे इंफॉर्मेशन पाउचे ठीक है हमें हिस्ट्री देखि कहउचे तो इन समवेयर इट इज रिटन दैट he has classified the organisms into two parts based on the presence or absence of cell wall then सेल के डिस्कवर होला 1665 रे के डिस्कवर करथिले रॉबर्ट हुक देन सेकेंडरी आसे लिविंग सेल के डिस्कवर करले एंटन वॉन लीवेनहुक से के डिस्कवर करथिले ना से डिस्कवर करथिले इन द बेसिस ऑफ 1674 तो माइक्रोस्कोप तास जाइथिला तो सेल वॉल बेसिस रे से मन ताको डिवाइड करछन्दी दी प्रकार अछन्दी ना कोन कोन ना गोटे प्लांटी गोटे एनिमल सेल वॉल अछि तो प्लांटी सेल वॉल नाही तो एनिमल अगेन निज खाद्य निजे बनै परछु ऑटोट्रॉफ तो प्लांटी निज खाद्य निजे बनै पारुनी हेटेरोट्रॉफ तो एनिमल ए बेसिस फोटोसिंथेसिस मामा फोटोसिंथेसिस जो पार्ट तुम पचले क्वेश्चन एटी सी डिफरेंट हो परियो केमती मतलब फोटोसिंथेसिस पार्ट अछि ना से किछि अछंती ऑटोट्रॉफ बट दे कैन नॉट फोटोसिंथेसाइज जो माने माटी तळे अछंती जो बैक्टीरिया माने अछंती जो माने पर सनलाइट पहुंच पारु नै जे माने अछने डीप इन द सॉइल डीप इन द ओशन they cannot get the sunlight or the sunlight nahi light nahi they cannot do photosynthesis
देन से माने केमि बसुचंदी पुनी ना से माने केमोसिंथेसिस करचंदी गोटे केमिकल कंपोनेंट को भांगुचंदी आ भांगिलार जो एनर्जी मिलुची से एनर्जी को यूटिलाइज करके निज पाई से खाद्य बनाउचंदी बुझ पाइले कोन कहली इफ यू सी तमे भी जो रूम रे बसिच जो रूम रे बा जो क्लासरूम रे तमे बर्तमान बसी की वीडियो टी देखि पारुछ से क्लासरूम बा से रूम टी तयारी छि कहा को नै कि ना वाल्स को नै कि तयारी तुम चारि पट कांथ सब थिबो ये जो कांथ तुम पाखे देखि पारुछ से कांथ को भांगिले कोन भारी होता भीतर इटा ही भारी ब्रिक्स बाहरिबो इटा बाहरिबो काहे कि बिकॉज़ जब से कांथ को तयारी करा हेतला ता धरे इटा को जोड़ाई बना हेतला सिंपल जेहेतु इटा को जोड़ा है कांथ बना हेची कांथ को भांगिले इटा ही मिलिबो सेमती आमे जरो जिंसटा को बनौछे इन बायोलॉजी व्हेन वी आर मेकिंग समथिंग आमे गोटे प्रोसेस को बिल्ड करूछे दैट इज एनाबोलिजिंग प्रोसेस एनाबोलिक प्रोसेस रे आमे एनर्जी इन्वेस्ट करूछे आमे एनर्जी दउछे जिंस को बनया पाई but when we are breaking that component तो भांगुचे catabolic action करूचे हेटो एनर्जी आमे रिसीव करूचे देन आमे कहूचे कि हमको बंचिया पई खाद्य दरकार नो बंचिया पई खाद्य दरकार नहीं बंचिया पई एनर्जी दरकार बट एनर्जी रो सोर्स होजे कोन फूड यस स्मृति गुड এই পার্টটা লাস্ট খালি কই দउची एनर्जी रा पार्ट है हमर फूड अच्छा आमे जो हम कहले फूड रो एनर्जी केमति पाइले हेबे ना हमें फूड खाइले फूड गला कोठी कि हमर स्टमक को स्टमक रो हैला डाइजेस्ट सेट गला स्मॉल इंटेस्टाइन सेट से पार्शियली डाइजेस्टिव फुली डाइजेस्ट हैला देन स्मॉल इंटेस्टाइन से गला ब्लड को एंड ब्लड रे से जो ग्लूकोज टी हम सेल पाखो गला नाउ से ग्लूकोज को जब हमें भांगुछे ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस रे ब्रेक डाउन करूछे then we are getting the energy then we are getting the ATP yes or no तो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस होला ग्लूकोज ब्रेक डाउन कला 6 कार्बन ना मॉलिक्यूल ला ग्लूकोज टी 3 कार्बन ना दीटा पाइरुविक एसिड कन्वर्ट होला एंड वी आर गेटिंग दैट एनर्जी तो ग्लूकोज रो एनर्जी आसला केमती ना रिमेंबर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट the 6 molecule of carbon dioxide 12 molecules of water ସେମାନେ आपस में मिसिचंदी in the presence of sunlight inside the chlorophyll फॉर्मेशन हेतला कोन ग्लूकोज तो से ग्लूकोज को बनेया पई कि प्लांट ना एनर्जी यूटिलाइज करछि एनर्जी रो सोर्स के थिला सन तो जेहेतु एनर्जी को प्रेजेंस रे जिंसटी बना हेछि एनर्जी दिया है कि जिंसटी बना हेछि तो जिंस को भांगिले एनर्जी मिलिबो क्लियर आई हैव दिस फोन ମୋ ପାଇଁ फोन टी अछि ए फोन टी किने पई कि मु पैसा खर्च करथिली मु पेमेंट करथिली फोन रिसीव करथिली नाउ ए फोन को मु सेल करले आई गेट द मनी सिंपल देन तो ये वाला जिंस कि जो फोटोसिंथेसिस केमोसिंथेसिस डिफरेंस हो छै या इन फोटोसिंथेसिस तमन डायरेक्टली सनलाइट को यूज करके तम फूड बनौचंदी बट इन केमोसिंथेटिक रे से कोन करछन सनलाइट नै सेठी से माने केमिकल कंपोनेंट जो नाइट्रेट नाइट्राइट अमोनिया ताको भांगुचंदी जब ताको भांगिले एटो एनर्जी बाहरिला और जो एनर्जी आसिला ताको नै कि से माने फूड फॉर्मेशन कर दे इट्स as simple as it is समझ से बुझी पाइलो स्मृति रे गोटे सिंपल क्वेश्चन थिला बट से क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन को तुम आगे रखली एनी डाउट टिल नाउ घर को गेस्ट आसिले आमे तम गेस्ट को कोन देइताऊ चा ठंडा पानी के देइताऊ तो चा बने पई कि हम दरकार कोन बेसिक इंग्रेडिएंट कोन कोन दरकार हबो चा बने पई हम खीर दरकार चीनी दरकार चापत्ती दरकार देन वी हैव ऑल दोस थिंग्स बट मेन जिंस हैला कि ताकू चाहा को मन खीर को चाहा रे कन्वर्ट करे पहले वी नीड एनर्जी से एनर्जी तमे गैस लगे करो एनर्जी तमे इंडक्शन नु करो से एनर्जी तमे एठी इलेक्ट्रिक केटल ले करो बा एनर्जी तमे कोयला अंचल लगाओ बा इलेक्ट्रिक तमे एठी जो एनर्जी घसी जळेई करो बा तमे काठ जळाओ से फरक पड़नी ताको एनर्जी दरकार जो एनर्जी नै कि से ता फाइनली से चार्ट कंप्लीट करिवो बुझ पाइलो क्लियर नाउ लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट का था कौन स्लाइड देखो ओके ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन आछिला व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस टू किंगडम क्लासिफिकेशन आर कोन ड्रॉबैक थिला बुझ मतलब माने ड्रॉबैक माने तर कोन डिसएडवांटेज थिला बा डिमेरिट थिला जेमति से गला प्रोकैरियोट द इफ यू से प्रोकैरियोट्स रे प्रोकैरियोट को माने आसिले बैक्टीरिया सियानोबैक्टीरिया and also eukaryotes the fungi mosses ferns gymnosperm angiosperm they all were included under plants based on the presence of cell wall clear माने बैक्टीरिया रा भी सेल वॉल अछि सियानोबैक्टीरिया जाको तमे ब्लू ग्रीन एल्गी को ता पाखे भी सेल वॉल अछि यूकैरियोट फंगस रा भी सेल वॉल अछि मॉस रा भी सेल वॉल अछि फर्न्स रा भी सेल वॉल अछि
जिम्नोस्पर्म सेलुलर अच्छी एंजियोस्पर्म सेलुलर अच्छी ए समस्त सेलुलर अच्छी बोल तक प्लांट रखिदेले बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेलुलर बट दे आर वाइडली डिफर्ड इन अदर फीचर यस और नो तार फीचर तो अलग अलग बुझ पाछ ना नहीं मु कहली स्कूल ले जो पिला माने पढुछ तमर आर्ट साइंस कॉमर्स डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम थिबो क्लियर सेम तमे जो फर्स्ट ईयर पढुछ तमे एमआईएल सब्जेक्ट जो अछि एमआईएल कैन बी ओडिया एमआईएल कैन बी हिंदी एमआईएल कैन बी संस्कृत एमआईएल कैन बी अल्टरनेटिव इंग्लिश किछि भी परियो मु खाली जस्ट बिकॉज़ यू ऑल हैव एमआईएल एज अ सब्जेक्ट तो समस्त गोटे बोली कहि परिबी कि ना हबनी बिकॉज़ एमआईएल का स्पेशलाइजेशन होची अल्टरनेटिव इंग्लिश की कोच ने एमआईएल ओडिया कार होची एमआईएल संस्कृत कार एमआईएल हिंदी तो एमआईएल इज अ कॉमन सब्जेक्ट ता भीतर तमे डिवाइड डिफरेंट डिफरेंट पार्ट रे तो माने नहीं जे संस्कृत वाला भी कोन तार से एमआईएल ओडिया पिलाटर भी से होची एमआईएल हिंदी पिलार भी होची एमआईएल किंतु एमआईएल जो पार्ट अछि से एमआईएल पार्ट समसम रखि परिबे नाही एई कैटेगरी रे कि बैक्टीरिया सियानोबैक्टीरिया यूकेरियोट फंगस मसेज तो एमान खाली सेलुलर लेवल केमने मिसै देबी इबा डिफर हेलेनी प्रोकैरियोट अलगा यूकेरियोट अलगा प्रोकैरियोट्स माने कोन एमान प्रिमिटिव न्यूक्लियस दे डोंट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल यूकेरियोट रे कोन अछि दे हैव डेफिनेट शेप डेफिनेट स्ट्रक्चर आउ द सब काम करया पई डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सब अछंती तो मु को बेसिस रे प्रोकैरियोट्स का यूकेरियोट मिसै देबी गोटे आर्ट्स पिला पाखे इंग्लिश एज अ कॉमन सब्जेक्ट अच्छी गोटे साइंस पिला पाखे भी इंग्लिश गोटे कॉमन सब्जेक्ट अच्छी गोटे कॉमर्स पिला पाखे भी इंग्लिश कॉमन सब्जेक्ट अच्छी तो ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश मु समस्त समान कहि परिबी कि नो आई कैन नॉट यस नो तो दैट इज द डिफरेंस तो ये गोटे बेसिक ड्रॉबैक थिला कि मु केवल सेलुअल बेसिस रे समस्त एकाठी करै देबी नहीं एंजॉय ठीक हबो नहीं क्लियर second, it included unicellular and multicellular organisms in same group, which is also wrong. Then, मुने height basis रे class decide करिबी जो प्लेटी डेंगा अछि से higher class जो प्लेयर height टिके कम अछि से lower class तो मित तो ही परिबनी because height is something which we have inherited from our parents हम parents जेमति थिबे हम सेमति आसीबा हम parents को पाखरी पार्टी हम inherit करछे transfer के से हम पाखु तो सपोज जो पिलाटार हाइट होची 4 फीट अछि वो यानी तो स्टैंडर्ड 8 को बिलोंग करछु यू गो एंड स्टडी इन स्कूल वंस अगेन इट इज नॉट ट्रू ये ठीक नहीं जिनसिटी पहले इट इंक्लूडेड यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इन सेम ग्रुप by unicellular means the entire body is made up of single cell in multicellular the entire body is made up of multiple cells group of cells then तो मु केमी भी ताको जेटा मिसै पारिबे नै जंदी क्लामाइडोमोनास स्पाइरोगाइरा जेटा अलगा अलगा क्लामाइडोमोनास इज यूनिसेल्युलर अलगा बट स्पाइरोगाइरा इज फिलामेंटस अलगा मल्टीसेल्युलर अलगा यू कैन सी इन दिस पार्ट क्लामाइडोमोनास जे अछि से यूनिसेल्युलर सिंगल सेल से कोटिया रुवे कासुटर बने सिंगल बने रुवे भलबक्स जे अछि भलबक्स ग्रुप बने रुवे कॉलोनी बने कि रुवे हेले जो स्पाइरोगाइरा अछि से तुम देखि पारथो जो स्पाइरोगाइरा से स्पाइरल स्पाइरल हिची ब्रांच फॉर्म हे के अछि से तो से माने मिसी के ब्रांचिंग करथांदी फिलामेंटस फॉर्म रे थांदी तो आई कैन नॉट प्लेस ऑल द बोथ द थिंग्स इन अ सिंगल पार्ट रखि परिबे नहीं जिनस बुझ परछ क्लियर हेला तो यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर बेसिस रे मु सेम को रखि परिबे नहीं एंड द लास्ट पॉइंट इट डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रोपिक फंगी एंड ऑटोट्रोपिक ग्रीन प्लांट्स सी ये वोट पार्ट एटी कहला अब वी सेइंग यस गुड. The last demerit sila two kingdom classification, it did not differentiate between heterotroph and autotroph. See कहले कि two kingdom classification गोटे plant अलगा animal अलगा. बोले से plant भितरे जो मान अछनी fungi अछि, fungi cannot produce its own food. It is saprophytic in nature. It depends upon other organism dead and decaying. ଆମେ ତ ଓଡିଆରେ ମୃତପୋଜୀବି କହୁଥିଲେ ଯେ ମଲା ପଚା ସଡା डैम प्लेस ह्यूमिड प्लेस ए जगह से ग्रो करिबा बिका डेड डिकेइंग मैटर सिटी से ग्रो करिबा तो यू कैन नॉट से कि जो फंगस अछि आ जो प्लांट अछि जस्ट बिकॉज़ दे आर हैविंग सेलुलर दे आर टुगेदर दे आर सिमिलर सिंपल लास्ट एग्जांपल दोची गोटे आर्मी पाखरे भी गन अछि गोटे टेररिस्ट पाखरे भी गन अछि तो ऑन द बेसिस ऑफ गन आई कैन नॉट से बोथ आर सेम नो दे आर नॉट सेम गोटे डॉक्टर पाखरे भी छुरी अछि सर्जरी करिया पे कि गोटे जो चोर पाखे छुरी अच्छी लुट करने आई कैन नॉट से बोथ आर सेम दे आर डिफरेंट कंप्लीटली डिफरेंट जने जीवन बचाऊँ जने जीवन नौ द आर्मी जी अच्छी से नेशन को स्टेट को से बॉर्डर को सिक्योरिटी दउची टेररिस्ट तार मुहिम चलाउची
बुझुछि ना बुझु तो I cannot say on the basis of gun I cannot say that both are similar both are same बोली no से बड़ा जिंस ये जो fungi and fungi and plants both are having cell wall but that doesn't mean they all are equal they are different fungus है heterotrophic saprophytic अलग kingdom अच्छी हेले जो plant हेगला हमर से अलग kingdom अच्छी देन तो से टू किंगडम क्लासिफिकेशन अर्लियर तुम टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो पढ़िथिला से क्लासिफिकेशन का कथा आसला अरिस्टोटल डिवाइड करथिले देन लिनियस को कथा आसला लिनियस केम डिवाइड करथिले बट ता पर आसला कोन तार डिमेरिट कोन और डिमेरिट पर ही हमें आगो जिबा जानिया पे कोन जिंस हिच ओके काइटिनस सेल माने हला पिला माने से काइटिन ने तयारी छि जो फंगस अछि तार सेलुलर तयारी छि काइटिन रे जबे कि जो ग्रीन प्लांट अछि तार सेलुलर तयारी सेलुलोज रे काइटिन हो गोटे पॉलीसैकेराइड गोटे कार्बोहाइड्रेट एग्जांपल देखो सो भी दे कैन अंडरस्टैंड बाय दिस सिंपल एग्जांपल हो बेसिकली कि हमें देखि जे कि ये जो हमें जो घरे बसते तार गोटे कांथ अछि वाल अछि देन जो खेल पड़े जो बड़ बड़ पाचिरी हेइते पाचिरी ताको भी हमें वाल बोली ही कहउछे देन ये जो हॉस्पिटल मानकर जो केबिन थाए बा जो पुलिस ऑफिस जो केबिन थाए प्रिंसिपल चैम्बर जो केबिन सब थिबो एल्युमिनियम रो काचर केबिन हे जे दैट इज आल्सो वाल देन जदि किछि घरे किछि मैरिज सेरेमनी हैला कि स्टेट सेरेमनी हैला बा बर्थडे पार्टी हैला जो गेट टुगेदर गैदरिंग हम करछे ता पे टेम्परेरी स्टेज बनाउ जे सेठी हम को जे वाल बोली बट सब वाल रो कंपोजिशन समान की नो कहीं नुहे ना से जो पाचरी तैयारी से पथर तैयारी जो ए घर तैयारी से इटारे तैयारी जो भी हम कहले कि प्रिंसिपल चैम्बर जो अच्छी जो बड़ बड़ कॉर्पोरेट ऑफिस चैम्बर बन सी फाइबर रे बनी थाए आउ जदि मु कहबी जो टेम्पोरारी स्टेज बनुची सेठी से कपड़ा रे वाल फॉर्मेशन करथांती समस्त काम हैला गोटे शेप बनेबा समस्त काम हैला गोटे बाउंड्री बनेबा समस्त काम हैला प्रोटेक्शन दबा बट समस्त कंपोजिशन समान नहीं समस्त कंपोजिशन समान होता है ठीक से बड़ा जिनस से कौन कहले कि ये जो प्लांट अच्छी इट हैज सेल वॉल फंगस अच्छी इट हैज सेल वॉल but fungus cell wall is made up of chitin but plant cell wall is made up of cellulose bacteria phone अलगा अछि linear is the प्रथम सीन मो तानाला lineus तानाला carolus lineus name is Carolus Linnaeus, father of taxonomy, two kingdom classification they proposed करते तांका नाला Carolus Linnaeus. So I hope you understand what is the meaning of having cell wall. You understand what is the meaning of having different composition of cell wall. If you understand, then say yes, or if you do not understand, then again ask this question. आप कुछ better example नहीं बुझ पाएगा. Done. Any doubt? Chitinous. Chitinous what is chitin? Chitin जो part अच्छी chitin chitin is a polysaccharide. What is polysaccharide? Polysaccharide होची गोटे type of carbohydrate. What is carbohydrate? जो हमें को जे sugar जाओ तुम देखो चबे saccharide group रे अच्छी glucose, lactose, galactose, maltose, dextrose. These are different form of sugar. Fruit रे थिले fructose, milk रे थिले lactose. Yes or no? जदि मोटे देखिली cereals वासिला then maltose. नॉले डेक्सट्रोज नॉले सुक्रोज तो डिफरेंट टाइप ऑफ सुगर सब अछि तो दिस आर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट और चैप्टर अछि बायोमोलिक्यूल्स तुम 11th क्लास रो बॉटनी रो चैप्टर दा नाला बायोमोलिक्यूल तुम पढो डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो देखो तीन प्रकार अछि मोनोसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड मोनो मींस वन ओलिगो मींस दुई रु अधिक 10 रु कम एंड पॉली मींस मेनी पॉली मींस मेनी तो बहुत सारा सैकेराइड मिसिले पॉलीसैकेराइड लेट बनता है फंगस किंगडम फंगी जो अच्छी से माने जो यूनिक किंगडम काहे कि ना आंकर जो सेल वॉल अच्छी दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड काइटिन इज अ टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड दैट इज वन टेरिटरी द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कहल ना कांथ तयारी छि इटा तयारी छि माटी रे किंतु जो पत्थर पाचिर से पत्थर तयारी छि देन द सी डिफरेंट फॉर्म ऑफ पत्थर रहला थर्ड आसी गला जो वाल कहली एडी जो कपड़ा रे तयारी छि बाउंस पताई कपड़ा रे जो वाल बनाई था टेम्पररी स्टेज तयारी कराई था तो तार भी गोटे फॉर्मेशन अलगा
डन तो बुझिया ट्राई करे जिनसे डेला है कि काइटिन जो अच्छी इट्स टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड और टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जहां को नहीं कि फंगस सेल वाल बने फंगस रो गोटे यूनिक सेल वालिटी अच्छी व्हिच इज मेड अप ऑफ काइटिन आ गोटे तुम पाइबो ए काइटिन आ गोटे देखिबो जो चुंगुडी रो चोपा अछि खोलपाटा काइटिन गोटे रिजिड लेयर हार्ड लेयर दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन ये पार्ट सो रहला तो फंगी हैव काइटिनस सेल वॉल while the green plants have silver cell wall तो जे जो सेल वाला कंपोजिशन अलग अलग अच्छी तो ताको मु मिसे ही गोटे जगह रखि परिबी नहीं only on the basis of type of cell wall I cannot say both are of same type बुझ पाइला डन जो क्वेश्चन टी कहले बे कि ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हैविंग अ गन आई कैन नॉट से व्हिच वन इज अ गुड पर्सन व्हिच वन इज अ बैड पर्सन ओके व्हाट इज द फंक्शन ऑफ काइटिन फंक्शन ऑफ काइटिन हो जे काइटिन को नेके तयारी हिची कोन हमर सेल वॉल तयारी छि एंड सेल वॉल फंक्शन हो जे टू प्रोवाइड अ सेफ to provide a boundary fix a boundary and give protection से फंगस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूची कहा टू फ्रॉम द hazardous chemical hazardous enemies माने को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूची क्लियर तो काइटिन मुख्य काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करबा फंगस सेल वाल कंपोनेंट हबो फंगस को गोटे से सेफ्टी दोची हम बॉडी सेल कोन सी कोन व्हाट इज सेल सेल इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ओके ए क्वेश्चन आंसर देके मैं आगु बढ़िबा प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल बेसिक डिफरेंस होजी कोन ना प्रोकैरियोटिक रे हियर द सेल इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो प्राक निष्क्रिय को से तुम कहउछ इट प्रो मींस व्हाट प्रिमिटिव कैरियन माने हला न्यूक्लियस ना ए जो न्यूक्लियस अछि द चारि पटे गोटे कवरिंग बा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टी नाही जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाही दैट्स व्हाई इट्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अछि त यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म तो प्रो और यूर बेसिक डिफरेंट स्टैटस तारा हैविंग अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल they they have membrane bound cell organelle if yes then eukaryote if no then prokaryote second आंसर कोन आसीबो prokaryote माने को पाखे से माने को डेवलपमेंट भल से हेई नथे फॉर एग्जांपल मु कहबी इफ यू गो टू अ बैचलर्स होम ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚଲର ପିଲା ଘରକୁ ଯାଇଛ ସେଇ ଘରେ ତାର ଯୋଉ ବେଡ୍ ଅଛି ବେଡରୁम ଯୋଉଠି ଚେୟାର ପକେଇ ଟେବୁଲ ଚେୟାର ପକେଇ ଷ୍ଟଡି ରୁମ ସେଇଠି ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ରଖି ସେ ପୂଜା ରୁମ ହେଇଗଲା ସେଇଠି ସେ ଜିନିଷ ତାର ପାଣି ଗରମ କରିବା ପାଇଁ କି କେଟିଲ ରଖି କିଚେନ ହେଇଗଲା जो गेस्ट आसिले से खटरे बसे ता ड्राइंग रूम तो से गोटिए रूम में सब जिंस इनक्लूड हेकी रहला क्लियर बट इफ यू गो टू इफ यू विजिट टू सोफिस्टिकेटेड होम तुम फ्रेंड्स को घर बा निज घर को जीव देयर इज अ सेपरेट पूजा रूम देयर इज सेपरेट किचन देयर इज सेपरेट बाथरूम सेपरेट ड्राइंग रूम सेपरेट डाइनिंग रूम तो ये पार्ट टे कोन कहला से जिंस जहां भी तयारी होची सेपरेट सेपरेट जिंस जो होची yes pro is primitive u is advanced तो प्रिमिटिव एडवांस खाली कहि देले बुझी माने प्रिमिटिव माने होची काहे के से प्रिमिटिव केते से प्रिमिटिव एडवांस केते एडवांस काहे के एडवांस छै और मन रखिथिबो जो यूकैरियोटिक सेल टी कोठु आसी प्रोकैरियोटिक री आसी तो देयर इज अ स्टोरी दैट इज कॉल्ड एज सेल विदिन अ सेल सेल विदिन अ सेल एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी मन रखियो देयर इज अ स्टोरी देयर इज अ थ्योरी कॉल्ड एज एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जे एक्सप्लेन करछि कि नॉन ग्रीन प्लांट्स किछ नाही बाबा ग्रीन प्लांट्स से ताको आउटे मॉडिफाई कर देछि मु कहली यू आर अ गुड बॉय यू आर अ वेरी गुड बॉय तो डिफरेंस के सेमते नाही कि माने गुड बॉय वेरी गुड बॉय समान जिंस रहइबा बेका यू आर अ बॉय बेसिकली तो इट्स अ प्लांट तो प्लांट जो ग्रीन थे दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड एज ग्रीन प्लांट्स नॉन ग्रीन प्लांट को अलग थिबो हेमिसेलुलोज पार्ट किछ एक्स्ट्रा आस परिबो बट समथिंग इज बेसिकली नहीं तो जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी अछि से एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहा को बिलोंग करछि कोन कहउछि ना हाउ एन यूकैरियोटिक सेल इज इवॉल्वड फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल तो यूर प्रो केम से एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी देख के हम जानि पाछ जस्ट अ सेकंड जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कथा कहउछली कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी रे तमे बुझ परिबो कि केमिति ना प्रोकैरियोटिक सेल रो यूकैरियोटिक सेल टी ओरिजिन करछि बट दैट्स अ सेपरेट चैप्टर डिफरेंट चैप्टर यस ड्रॉबैक्स मींस डिमेरिट ड्रॉबैक माने डिमेरिट डिसएडवांटेज डिमेरिट्स कहि परिबो एंड एडो जिंस मन रखिबो कि ओडे देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश दैट जो नेसेसिटी इज द नेसेसिटी जो पार्ट अछि इज द मदर ऑफ इन्वेंशन यदि आवश्यकता अछि तले उद्भावन हबो तो ओडिया में रूढ़ी बोली कहथिले कि आवश्यकता उद्भावन जननी अगर कोई चीज की नीड है तब जाके हम चीजें बनाएंगे नीड नहीं है तो हम नहीं बनाएंगे सिंपल आंसर
ग्राहम बेल जब मोबाइल डिस्कवर करते फोन जब बनैतिले फोन इनिशियली लैंड फोन थिला देन धीरे लैंड फोन को मॉडिफाई करके आम कीपैड फोन को मोबाइल को आसिले मोबाइल फोन नु कीपैड फोन आम एंड्रॉइड फोन को आसिले संगे संगे बनी एंड्रॉइड से एंड्रॉइड फोन जो बने जो नुआ नुआ एप्स आसवा स्टार्ट है से एप्स माध्यम आगो आम फोटो शेयर कर पारछले देन वीडियो शेयर कर पाइले देन कॉल कर पाइले रियल टाइम डाटा शेयर कर पाइले जो जिन सब एडवांटेज हे जाइछि मॉडिफिकेशन हे जाइछि इनिशियली नथिले सब जिंस जेबे जब नीड आसिला व्हेन यू नीड दिस पार्ट आगुरु क्लासरूम कहले पिला माने कोड बसतिले गुरुकुल आश्रम जो देखिबो देयर आर द टीचर जे गछ मूले बसंती एंड देयर आर स्टूडेंट जे तां तळे बसी पाठ पढते सब नो नो मोबाइल नो पेन नो पेपर नो कॉपी नो स्लेट नो नोटबुक किछि नै ये एठे कहंती से सुनी की मन रखंती बट जे से एडवांटेज हे आसिला देन हम क्लासरूम को शिफ्ट हेले आग तले बसते अंगनवाड़ी देन टिके ऊपर हायर क्लास को गला आम पे बेंच टेबुल अरेंजमेंट कराला देन ब्लैक बोर्ड थिला देन ग्रीन बोर्ड आसिला देन व्हाइट बोर्ड देन स्मार्ट बोर्ड एंड नाउ क्लासरूम रो तो डेफिनेशन ही चेंज हो गलानी वी आर नाउ वी आर इन द वर्चुअल क्लासरूम you can see me but I cannot see you you can hear me but I cannot hear you so we are in a virtual classroom तो आगुरो मु क्लास रे पिला मानु पढौतली लिविंग ऑर्गेनिज्म पढौतली बट नाउ आई एम टीचिंग टू इन फ्रंट ऑफ ए लैपटॉप इन फ्रंट ऑफ ए कैमरा मोटे कैमरा को पढौची गोटे नॉन बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट को एबे पाठी पढौची देन एंड हाउ द कम्युनिकेशन द मेन हैला कोन चैट बॉक्स by this only chat box I can understand that whether you are listening or not whether you are getting my point or not मैं chat box में जानी पड़ देखिए कि हम जैसे कम्युनिकेशन भी हे पड़ ना हे पड़नी बोले clear this is the thing now if you move to the next segment तुम जानी पहले ये लगा demerits और जो भी demerits पिला माने आसीबो से demerit को tackle करिया पाई कि नुआ नुआ invention हबो definitely two kingdom classification it has some drawback it has some demerit it has some disadvantage so that we'll move to the three kingdom classification then to the four kingdom classification then to the five kingdom classification and the most widely accepted kingdom है हमारा five kingdom classification clear ये जोटे क्विक क्वेश्चन टेड आंसर दे देबा जो जिम्नोस्पर्म पचार पिलाटी जिम्नोस्पर्म मींस हैला कोन नेकेड सीड्स ओडे कहले नग्न बीजी द प्लांट इट्स अ हायर प्लांट स्पर्मेटोफाइटा को बिलोंग करची जहार सीड रो कोटी नहीं जंदी आंबो चारिपटे कोन अछि तार आंबो भितर टाको आज मंजी अछि बट नेकेड सीड हे गला पाइनस रो सीड हे गला सेड्रस रो सीड हे गला माने सीड चारिपटे को कवरिंग नहीं नेकेड सीड बोलते कहा जाय सीड सीड माने मंजी naked seed gymnosperm means naked seed जा पाखरे the seed is not enclosed seed माने fertilization पूर्व भी fertilization परे भी seed रे कोनोसी कोट नाही कवरिंग नाही now if you quickly move to the next part असला का कहता five kingdom classification and this five kingdom classification was proposed by the name of the scientist is R.A. Whittaker R.A. Whittaker होचन ता scientist 1969 ने से फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज करथिले एंड दिस इज द मोस्ट एडवांस किंगडम ये पार्ट अछि सीड रे किछ कवरिंग नथिबो एंड प्ले माने आरएच को फुल फॉर्म लिखि दउ छेती आरएच व्हिटेकर मींस रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर ठीक आरएच व्हिटेकर जो साइंटिस्ट ना कहली ताको पूरा ना हो जे रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर तो बोले मन रखियो साइंटिस्ट मानकर टाइटल बा ताको सरनेम ता बहुत इंपोर्टेंट है ए मतलब जो भी साइंटिस्ट को ना देखियो सब समस्त ना रो टाइटल इंपोर्टेंट एंड मोर सिंसियर रिक्वेस्ट सब माने बिकॉज़ ए जो साइंटिस्ट माने अछन लोक एबे नाहंती क्लियर ये जो रॉबर्ट हुक रॉबर्ट ब्राउन ये जो रुडोल्फ विर्को जो सेल थ्योरी डिस्कवर करथिले स्लेडिन मैथियस स्लेडिन थियोडोर स्वान these scientists are not alive right now carlos linnaeus bentham hooker joseph bentham dalton hooker they all are not alive now but ସେମାନେ जो जिनस कर जाइछन्ती बोली ही हमें ताऊ पढ़ी पड़छ तो अल्बर्ट आइंस्टाइन इज नो मोर बट से जो जिनस डिस्कवर कर जाइछन जो जिनस जे थ्योरी दे जाइछन ताकू ने कि आज करंट साइंस पार्ट नहीं चलची देन तो हमको तांकू एति जिनस दबा को पड़िबो यस अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट हमको तांकू एति की एक्नॉलेज करि परिबा ताको नेम रो स्पेलिंग भूल परिबा नहीं तो काइंडली सिंसियर रिक्वेस्ट तो स्टार्टिंग रो पढला बेले कॉन्शियस है कि पढ
को भी साइंटिस्ट मन ना जंदी भूल तमे लिखिबो नाही तम प्रॉपर एक्नॉलेज करिवो तम ना रा फर्स्ट अल्फाबेटिक कैपिटल हबो बिकॉज़ इट्स अ नेम इट्स अ नाउन आई नो इट्स आई शुड नॉट बी टेलिंग ऑल दोस थिंग इन दिस वर्चुअल क्लासरूम प्लेटफॉर्म बट स्टिल मते कहियो पड़छ काइना किछि किछि पिला बहुत भूल करछन्ती जेमति कि वी नो फादर ऑफ जेनेटिक्स who can tell me who is father of genetics any one of you father of genetics जेनेटिक्स वर्ड सुन लो वंशानुक्रम आनुवंशिक विषय जो पढ़ते हेरिडिटी जेनेटिक्स हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स एनीवन कॉमन मेंडल यस नॉट मेंडलीफ गायत्री मेंडलीफ आसिले पीरियोडिक टेबल ले प्रज्ञा इज सेइंग मेंडल ये जो मेंडल आसिले मेंडल होची ना हमर कोन ना फादर ऑफ जेनेटिक्स बट इट ऑन टाइटल इट्स फुल नेम इज ग्रेगर जोहान मेंडल क्लियर प्रतीक्षा वैष्णवी आर राइटिंग the full name. Let me write for you. The full name is Gregor Johann Mendel. Then it's a right name. तो किछ पिला अछन जो माने कोन करछन ने ग्रेगर नो ग्रेगर जॉन मेंडल नो नो प्रतीक्षा he was Gregor Johann Mendel not John Mendel exactly ए छोटा छोटा जिंस बोलो अछि मोर जो स्टूडेंट चरण मेंडल लिख देथिला ग्रेगर चरण मेंडल भाव आगु जाई जिनस कोन हबो ग्रेगर चरण मंडल अछंदी काली के हेजिबो गगन चरण मंडल पर दिन को हेजिबो गगन चरण मंडल टोटली भगवाकरण इंडियन हेगल से देन तो से साइंटिस्ट कोन जदी पूरा नाम मने रहु नै सिंपल फोकस ऑन द टाइटल इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज आरएच व्हिटेकर सिंपल व्हिटेकर इफ यू डू नॉट नो ग्रेगर जोहान मेंडल सिंपल मेंडल तो टाइटल इज इंपोर्टेंट you see na in a body there is called as golgi body cell लो गोटे पार्ट ना golgi body से गोल्गी बॉडी कहीं देछि बिकॉज़ इट वाज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट जांग ना हैला कैमिलियो गोल्गी जो कैमिलियो गोल्गी तको डिस्कवर करथिले जांग ना अनुसार ना देछि गोल्गी बॉडी इफ आई वाज द इन्वेंटर देन इट शुड बी कॉल्ड एज साहू बॉडी no it's not sahu body but if I discover it then its name will be sahu body clear then there is a term called okazaki fragments because it was discovered by a Japanese scientist Reiji Okazaki तमन नाम से देछि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोली तो योर वर्क तमन प्रिलिमिनरी काम यू आर इन स्टैंडर्ड 11 तमन जस्ट तुम कैरियर स्टार्ट करूछ तो मोर सिंसियर एडवाइस सम्मान होछि एया कि whenever you are looking into any kind of classification whenever studying any kind of division always ask to yourself and to a mentor to a teacher that what is the need of this classification and what is the basis of this classification तो काहे की क्लासिफाई करछंदी अब केमिति क्लासिफाई करछंदी को बेसिस से क्लासिफाई करछंदी पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 जीएस से क्लासिफिकेशन करछंदी द साइंटिस्ट द टैक्सोनॉमिस्ट तांकर नाम मन रखियो कि अच्छा एई लोकटी एई कारण पई हम डिवाइड करछंदी देन सेट हला इंपोर्टेंट से पार्ट मन रखियो प्रतीक्षा ग्रेगर जॉन मेंडल नो मा दैट इज ग्रेगर जोहान मेंडल जो पार्ट हम लिखिलेटी ग्रेगर जोहान मेंडल दैट इज द करेक्ट आंसर नाउ okay so it is proposed by R.H. Whittaker. R.H. stands for Robert Harding Whittaker in the year 1969 so जो classify करथिले entire living world classify करथिले into 5 different kingdoms and the 5 kingdoms are Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia पांचटा पार्ट डिवाइड करथिले this classification is based on the cell structure the thallus organization the mode of nutrition reproduction and phylogenetic relationship we'll discuss one by one okay any last question which you want to okay Ars thank you so much our काम है से being a teacher my work is to do so now the classification जो कराई छी मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी प्लांटी एनिमलिया तो कॉले के classification the name of the scientist is R.H. Whittaker now the question is the classification is based on dash how he classified them the linears classify करथिले on the basis of cell wall on the basis of presence or absence of cell wall on the basis of mode of nutrition but how he classified R.H. Whittaker classification करथिले how he classified plantar fungi animalia order ना order हाँ ए order है आगे fungi आसीबो then plantae आसीबो then animalia आसीबो ए systematic order is correct आगे monera then protista then fungi then plantae then animalia I'll tell you how why so एमती कोन पई अछि आगो कहूची सुनाबे तो क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस अछि बेस्ड ऑन द सेल स्ट्रक्चर तक सेल केमती अछि
How is the thallus or thallus केमती organize ହେଇକି ଅଛି? What is thallus? Thallus ହେଲା ତାଙ୍କର body structure ଟା ପିनुଳା ଯୋଉ part ଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ cell, whether it is prokaryotic cell or eukaryotic cell, whether it is a plant cell or animal cell, ତାପରେ କଣ କଣ ingredient ଅଛି, whether it has flagellum or not, whether it is motile or non motile, means sperm ହଉଛି motile କିନ୍ତୁ ଆମର ovum ହଉଛି non motile, ଜଣେ move କରିପାରୁଛି motile, ଯେ move କରିପାରୁନି stable ଅଛି sessile ଅଛି, that is called as non motile. Then ତାଙ୍କର mode of reproduction, mode of nutrition, ମାନେ କଣ ଖାଆନ୍ତି କେମିତି ଖାଆନ୍ତି, how they avail their food, how they increase their ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଟା ସେ ଗ୍ରୁପ କେମିତି ଇନକ୍ରିଜ କରାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବଂଶ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢାଉଛନ୍ତି, how they reproduce, whether it is vegetative reproduction, whether it is asexual reproduction or it is sexual reproduction, how they do. And the last but not the least, the foremost important part, the phylogenetic relationship, which means how they are linked to their ancestor, ତାଙ୍କ ancestor କିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, because ତମେ ସେଲ୍ ଥିଓରି ପିଲାମାନେ ମନେ ପକେଇବ, ସେଲ୍ ଥିଓରି ରୁଡolf ଫିର୍କ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ କି omnis cellula e cellula, which means all organisms বা all cells arise from pre-existing cell. ଆମେ ସମସ୍ତେ କୋଉଠୁ ଆସିଛେ ନା ଆମର pre-existing cell ରୁ ଆସିଛେ. For example I can say ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆସିଲି ନା ମୁଁ ଆସିଲି ମୋ ପାପା and ମାମା କୋଠୁ, ମୋ ପାପା କୋଉଠୁ ଆସିଲେ ନା ଜେଜେ and ଜେଜେମା କୋଠୁ, ଜେଜେ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ ନା ତାଙ୍କ ପାପା ଆଉ ତାଙ୍କ ମାମା କୋଠୁ. ତ ଟେକ୍ନିକାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ପୂର୍ବଜ ମାନଙ୍କଠୁ ହିଁ ପାସନ ହେଇକି ଆସିଛେ ନା. ତ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ, ତ ହାଉ वी आर लिंक्ड इंटरलिंक्ड, ଆମେ କେମିତି ଲିଙ୍କ ହେଇକି ଅଛେ, ମାନେ କଣ କଣ ସିମିଲାରିଟିଜ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ, କଣ କଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ, ତ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ड as phylogenetic relationship. ଯାଉ ତମେ ଲେଖିପାରିବ କି how evolutionary, phylogenetic means ହଉଛି evolution, how we are attached, evolutionary attached. तो पार्टी कहली हमर phylogenetic relationship, that is evolutionary, हम केमते लिंक है कि से पार्ट डिस्कस करले. जैसे सेल स्ट्रक्चर देखिले, थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखिले, तासे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, phylogenesis, ये सब पार्ट को से कवर करी कहले. जब स्कूल ले गोटे बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड दबार प्राइज दबार गोटे चांस आसीबो ना, से ना टीचर माने कोन करना सब प्रकार कैटेगरी को से माने चेक करथांती. हाँ यस इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल ता केनता थिला, तो सब प्रकार जिंस देखिए जेमती गोटे पिलाटी स्टडीज रे केमती अछि, ता स्कूल ले अटेंडेंस केते अछि, रेगुलर क्लास आसुची ना आसुनी, हाउ इट्स बिहेवियर, ता बिहेवियर केमते अछि, बिहेवियर टुवर्ड्स टीचर, बिहेवियर टुवर्ड्स हिज फेलो मेट्स, तार संग हाजरन केमती से बिहेव करछि, देन से ताको टीचर से केमती बिहेव करछि, देन से स्पोर्ट्स रे केते भलो अछि, फिजिकल फिटनेस ता केमती कोन अछि, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कोन अछि, डिबेट कंपटीशन, सॉन्ग कंपटीशन, ड्राइंग, पेंटिंग, सत्री से केमती कोन अछि. तो सब जिंस को ओवरऑल देखिला पर ही नै कि हम गोटे पिल्ला कहि परिबे कि ओके ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल. तो ठीक सेमती हमर जो कैरोलस लिनियस थिले सी डिवाइड कर देथिले केवल मॉर्फोलॉजिकल सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के डिवाइड कर देले कि ऊपर ऊपर कर देले कि हां यस ऑटोट्रॉफ खाद्य बनै परिबो, ये प्लांट ये बनै परिबोनी, हेटरोट्रॉफ ये एनिमल. बट जो आरए छुटा करथिले जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन देथिले जहां हमें आज पर्यंत पढुचे, इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल इज अबाउट आरए छुटा कर. तो काहे के एक्सेप्टेड मॉडल ही पाइला, बिकॉज़ सी जो क्लासिफिकेशन करथिले तार बेसिस कोन थिला ना, द सेल स्ट्रक्चर, the thallus organization, the mode of nutrition, the reproduction, and last but not the least, the phylogenetic relationship. Clear? तो यही बेसिस डिवाइड करथिले. डन. देन तापर पांचटा किंगडम ना हैला कोन, से विथ मी, वंस इज किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया. ये पांचटा पार्ट डिवाइड करथिले. डन. आगुर अर्लियर इट वाज ओनली प्लांटी एंड एनिमलिया. तो भाभी देखो जो माने खाली आखि देखा जाउछंती हम ताको डिवाइड कर देले, बट व्हाट अबाउट द मोनेरा, व्हाट अबाउट द प्रोकैरियोट्स, दे आर नॉट विजिबल टू नेकेड आई. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦି ଜଣକୁ ଏବେ କ୍ଲାସିଫାଇ କଲେ ଆଉ ଜଣକୁ ଆମେ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଲେ ତ ସିଏ ତ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବ ହିଁ. ତ କିଙ୍ଗଡମ ମୋନେରା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ କହିଲେ ଆମେ ଏତେ ବି ଛୋଟିଆ ନୁହେଁ, we this bacteria, we this small tiny organisms play a vital role in our lifestyle. ଭାବି ଦେଖ ଯଦି ଆଜି ଲାକ୍ଟୋ ବାସିଲସ୍ ଲାକ୍ଟୋଷ୍ଟ ନଥାନ୍ତା ଆମେ କେହି ବି ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ. I belong to Cuttack and Cuttackର soul food is Dahibara and Dahibara କେବେ ହି ପାରିନଥାନ୍ତା.
कहीं because lactobacillus lactus is the bacteria जार काम होची मिल्क को कर्ड रे कन्वर्ट करबा जदि से बैक्टीरिया जी नथांता तले मिल्क रो कर्ड बनी पर नथांता और जदि कर्ड नथांता इफ दही इज नॉट देयर देन दही वुड इज डेफिनेटली नॉट देयर इफ दही इज नॉट देयर देन से रायता बनी परिबनी कचंबर बनी मन ताको बिरयानी से तुम एंजॉय करी खाउछ अब तुम बिरयानी से खीर खाइबो की चांस नहीं ना तो से वाला जिंस दही न थांदा गले एग्जाम गला वाले मामा दही चिनी खाई पठी पान न थांदा देन आ दही अच्छी कोन पई की बिकॉज़ हम पाखरे लैक्टोबैसिलस लैक्टोस नामक बैक्टीरिया अछि again same thing if the salmonella typhi bacteria was not there then कहा को भी लाइफ रे टाइफाइड ही पान न थांदा सुन आंकर भलो गुण भी अछि खराब गुण भी अछि बट एमाने अछंदी किए आमको हेल्प करू बा आमको हार्म पहुंचो साल्मोनेला टाइफी इज हार्मिंग अस से रोग करूची टाइफॉइड रोग करूची प्लाज्मोडियम वाइवाक्स मलेरिया करूची व्हाट इज प्रोटोजोआसी देन एबे रिसेंटली पैंडेमिक आस्तिला इन कोविड 19 जो कोविड आसला पैंडेमिक नहीं के आसला महामारी से करी के आसला दैट इज कॉल्ड caused by a virus a simple tiny virus or non cellular organism इवोल्यूशन ना सबटू पीक रे थिबा ह्यूमन बीइंग को से अटैक करी पड़ेले तांको पाई के लॉकडाउन शटडाउन सब हैला तो यू नेवर नो द पावर ऑफ अ सिंपल टाइनी ऑर्गेनिज्म जो कोन ने छोटो सापर बेसी विष तो ये जो लिटिल ऑर्गेनिज्म अच्छे टाइनी ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक नॉट विजिबल टू नेकेड आई से मानकर बहुत सारा रोल अछि हमर लाइफस्टाइल तो सही मान को की एक्नॉलेज करथिले साइंटिस्ट को ना हैला आरे छुटाकर जैसे सेल ऊपर फोकस करले सेल द स्ट्रक्चर because he knows cell is the basic form of life. Cell is the basic unit, the fundamental unit, the structural unit, the functional unit of life. And Robert Whittaker also knows that the cell achi cell theory पढ़िचने कि every cell arises from pre-existing cell and every living organism is made up of cells and product of cells. ये जो सेल थ्योरी हमें देखिले सेल थ्योरी अच्छी बोली ही हम आज ये पार्टी कर पाछे क्लियर इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वी आर स्टडीइंग अबाउट फाइव किंगडम्स with the five kingdom proposed by R H Chotakar and the proposal हेतला तारा को basis रे हेतला basis is cell structure thallus organization mode of nutrition reproduction and then the last but not the least phylogenetic relationship. Next, we'll move to the next segment. So, came to the divide करथिले. The organism is being divided into two categories. Cell जो देखिए दी प्रकार cell अछि. Whether it is prokaryotic cell or it is eukaryotic cell. प्राक्निष्ठीय कोष नॉले सुनिष्ठीय कोष. Then ये जो prokaryotic cell अछि, ताजे किया सिला kingdom Monera. कौन आसिले kingdom Monera. These are all are unicellular. So in prokaryotic cell, all are unicellular, all are prokaryotic. Monera भितरे. रेस जो चार्टा रहिले किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम फंगी किंगडम प्लांटी किंगडम एनिमलिया दे ऑल आर यूकैरियोटिक तांगा पाखरे डेफिनाइट बाउंड्री अछि दे ऑल हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल लाइक क्लोरोप्लास्ट इज देयर इन केस ऑफ प्लांटी there are mitochondria golgi body endoplasmic reticulum all these things are membrane bound cell organelle and which are present in eukaryotes. So eukaryotes again divided into two categories. It can be unicellular eukaryote, it can be multicellular eukaryote. Then unicellular eukaryote किए ना unicellular होची जेमते single cell की नहीं दिया रही entire body is made up of just single cell. ताकि असले को माने प्रोटिस्टा किंगडम बिलोंग करे. But यदि multicellular देखिए भी तो multicellular क्यों माने असले प्लांटी भी असला फंगी भी असला एनिमल भी असला. They all are made up of number of cells. काम body जो होची the body is made up of we are an organism. Organism is made up of organ system. I have respiratory system. Inhale, exhale, more nostril involved, more nose involved, more pharynx, more larynx, more trachea, more windpipe, more lungs. This समस्त involved. So that is the respiratory system. Then the respiratory system, digest to the digestive system, excretory system, reproductive system. So all those systems body carries. So the system of body is जो डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम अछि मल्टीसेलुलर जो हम बॉडी अछि सी कोन दी प्रकार हैला हैविंग अ सेल वॉल विदाउट हैविंग अ सेल वॉल इफ सेल वॉल इज देयर देन प्लांटी एंड फंगी इफ सेल वॉल इज नॉट देयर देन इट इज एनिमलिया क्लियर अगेन जो मन पाके सेल वॉल अछि whether they are phototropic or they are heterotrophic
whether they can make their own food or they cannot make their own food. Then the ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ଯେ ବନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି then plenty, ଯଦି ବନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ହେଇଗଲେ fungi। ଏ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ପାର୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି ସ୍ଟେପ ବାଇ ସ୍ଟେପ କେମିତି ଆସିଲା ନା ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ସେଲ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ସେଲ ର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, whether it is prokaryotic or it is eukaryotic. If it is prokaryotic, again second question arises, whether it is unicellular or multicellular. Like unicellular, okay, you belong to kingdom Monera. Now comes to eukaryotic. Again in the eukaryotic, whether it is unicellular or it is multicellular. If it is unicellular, then the answer is Protista. You belong to kingdom Protista. If it is multicellular, you can be asked to another question. And what is it to another question? Whether you are having a cell wall or you do not have a cell wall. Cell wall achi na cell wall nahi. If cell wall is there, then again two type of question is there. If cell wall is not there, the answer is animal. Yes, simple, you are an animal. And if cell wall is there, then again whether you can produce your own food or you cannot produce your own food. निजे खाद्य निजे बने पारिबु ना बने पारिबुनी. If you can produce your own food, then you are phototrophic, you are autotroph, you belong to plant. If you cannot make your own food, you are heterotroph, you are depending upon others. Other कहले different कहले hetero को बुझौछि. तो heterotrophic रे fungi माने आसिले. Clear? तो रॉबर्ट जो हाइटिंग विटाकर जो साइंटिस्ट थे तांकर ऑर्गेनाइजेशन भी ए टाइप रो थिला तो तांको प्लान भी रेडी कर रखथिले को बेसिस से काहा को डिवाइड करछि। If you look at the similar thing, say जिनस को आउट डिस्कस करी कहिबी again say जिनस कारण आज चैप्टर रो टॉपिक होछि 5 kingdom classification. In today's class we are going to study about 5 kingdom classification only. तो मु चाहू तुम एटा एमिति बुझ देन नेक्स्ट क्लास रे केबे भी तमरो किछि को डाउट आकुनी नथिबो ए पूरा एंटायर लाइफ पे तमरा क्लियर हो जाबा। Organism two type of prokaryotes or eukaryotes. If prokaryotes, then as a very tiny simple cells, both kuni kuni छोटा cell माना चलू। आगे बाकी they don't have any true nucleus, आगे बाकी true nucleus नहीं। आगे बाकी no organelles. Organelles माने कौन? जहाँ पाखे membrane अच्छी, सिंस आप पाखे नहीं। मन रखियो कोटे जिनस ribosome is universal organelle. पिलाड़ मन रखो question दे ribosome is an universal organelle and it is present in both prokaryotes as well as eukaryotes. ये pro रे भी अच्छी, u रे भी अच्छी. और type different है परिबो. जेमते कि in case of prokaryote the ribosome is of 70s, but in case of eukaryotes the ribosome can be 70 and 80 both type के रही परिबो. Clear? तो ribosome जो अच्छी से pro u रे सब रही परिबो. हेले mitochondria जेहेतु mitochondria जो double membrane structure, it is present in only eukaryotes. It is not present in prokaryotes. Nucleus, it is again a double membrane structure. It is present in eukaryote, not in prokaryotes. Then as like chloroplast, it's a double membrane structure. It is present in case of eukaryote and not in prokaryotes. And say what agents are selected on how be different Golgi body, endoplasmic reticulum, lysosome, vacuole, is supposed membrane bound. The G membrane bound achandi, they are present in case of eukaryotes. G membrane bound no, they are present in prokaryotes. Simple. जानी पाइला क्लियर हैला प्रो और यूरो डिफरेंस बुझ पाइला पिला मन दया करी गाला करी करनी बारंबार तुम मना करलेनी एनी डाउट इन प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स केमती कोन हैला डिवाइड हैला यस पर्सनली ओके गुड नाउ again in this prokaryotes common as a kingdom monera is there the shape again divided two categories archaebacteria and eubacteria. What is the difference? Archaea means primitive. Then तो ये जो डिवाइड है आर्कियोबैक्टीरिया यूबैक्टीरिया ये डिवाइड है को बेसिस रे ऑन द बेसिस और प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल और यूनिक सेल वॉल तो जो बैक्टीरिया मानक चारि पटे कवरिंग रे गोटे रिजिड सेल वॉल अछि गोटे हार्ड सेल वॉल अछि जे ताको एक्सटर्न जो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में बंचौछि से माने कहले हम आर्कियोबैक्टीरिया and those who do not have that kind of extreme cell wall condition they are called as eubacteria. U means true. U means true. when sarsaria bacteria they are eubacteria जो मान सब टिके primitive रहिले जो मान पाखरे extreme condition को सहियार कैपेबिलिटी अछि से हेले archaebacteria जेमति halophiles
मिथानोजेन्स थर्मास्यूडोफाइल्स से सब हे गले को बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया तमन देखि तो पिला माने गोबर बा काउ डंग जा कहउछ गोबर यूज एज अ फ्यूल हमें बायोगैस बनाऊे गोबर गैस बनाऊे गोबर कहीं कहल बिकज गाईर पेटरे जो तार र्यूमेन अच्छी स्टोमाक गोटे पार्ट ना र्यूमेन तो से र्यूमेन को मान अच्छा मिथानोजेन्स आर देयर व्हाट इज मिथानोजेन्स ना इट इज अ काइंड ऑफ आर्की बैक्टीरिया तार काम है मिथेन गैस प्रोड्यूस करबा तो मार जदि करथिबो कैटल हे गेले गाई महिषी एमान बलद षंड एमान कोन करथन ना से माने जो घास खाइले से चोबांतिनी से ढोकी दियंती कामुड़िले एंड देन ढोकी देले कामुड़िले ढोकी देले जेबे नाइट टाइम रे फांका बस्तु इवनिंग टाइम रे से कोन करथन तो पाकुली करंती से स्टोमक से पार्ट रिटर्न आने की ताको आगे पाकुली करे स्टार्ट कर तो माने तुम जो घरे अमूल खाओ तो अमूल खाइला वाला तुम अमूल टाइम चोबई दियोनी तुम अमूल तो पार्ट रे भर्ती कर दी कि सेट कर देले ऊपर धीरे धीरे तार मजा नहीं थिबो सेम एमान कोन करछन से जो खाइबाटा खाइछंदी जो ग्रास खाइछंदी बा जो लीव्स बा पत्र जहा सब खाइछन तो डायरेक्ट चोबई देनी गिली देछन रात्रि दो पाकुड़ी करेंगे तो जो टाइम जाए से जो स्टोमक जो मैंने पड़ी रहा से सढ़ा स्टार्ट कर नष्ट हवा स्टार्ट कर और से टाइम कौन बन मिथेन गैस प्रोडक्शन हम और जो मिथेन गैस प्रोडक्शन यस 5 किंगडम में भी डिमेरिट अच्छी बट से डिमेरिट एते भी नुहे जाको नै कि हमर आउ जिंस हबो काहे ना 5 किंगडम डिमेरिट छिला बोली हम 6 कैरेक्टर आसिला 6 किंगडम 7 किंगडम भी आसीची बट 5 किंगडम इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल मोस्ट एक्सेप्टेड किंगडम से जिवो डिमेरिट समस्त को रहइबो प्रोज अछि तो कॉन्स रहइबो एडवांटेज और डिसएडवांटेज निहाती आसीबो सेटा कि अटकाव नै तो जो आर्कीबैक्टीरिया और जो यू बैक्टीरिया रहिला ये डिवाइडेशन ए बेसिस रे ये आर्कीबैक्टीरिया पाखे गोटे प्रिमिटिव हार्ड सेल वाइल्टी अछि जे ताको गोटे एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन बंचेरे हेल्प करछि हेले यू बैक्टीरिया जो अछि से पाखे कोन ना से गुणा जिंस किछि नाही और से ट्रू बैक्टीरिया जो again ये जो यूकैरियोट को हमें डिवाइड करते हैं इनटू सेल वॉल और नॉट हैविंग अ सेल वॉल the cell wall जदि अछि whether it is autotroph or it is heterotroph that is autotroph it can make their own food by photosynthesis they belong to plants example है halophyta bryophyta pteridophyta spermatophyta सिगुला ता भितर if it is heterotroph but having a cell wall it cannot make their own food it must eat other organisms अन्य मानो खाई की ही बंचुची ताको हमें कहबा फंगी बोली फंगी एग्जांपल के आसिले फाइकोमाइसिटीज आस्कोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज मैं आगो जब पढ़िबो किंगडम फंगी तुम जानिबो किंगडम फंगी इज डिवाइडेड इनटू फोर डिफरेंट पार्ट्स वन इज दोस Phycomycetes by the lower fungi, Ascomycetes by the sac fungi, then Basidiomycetes by clove fungi, and Deuteromycetes by your imperfect fungi. Clear? जब तमे पढ़ो समय से साइंस स्कूल बेले साइंस तमरा 10th क्लास दीटा दीटा बुक थिला मतलब एचसीएल आउट एचसीपी तो साइंस तमरा फिजिकल साइंस आउट लाइफ साइंस थिला बट तुम प्लस टू को आसिल 11th सेक्शन को आसिल 11th स्टैंडर्ड को आसिल तुम साइंस एबे डिवाइड हो जाय इनटू थ्री कैटेगरीज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आगु जोड़ा हिला एबे तीनटा हे गला फिजिक्स गोटे केमिस्ट्री गोटे बायोलॉजी गोटे अगेन से केमिस्ट्री फन डिवाइड हेची फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायोलॉजी में डिवाइड हेची बॉटनी जूलॉजी देन जेते तुम आगु एडवांस स्टडी कर जीव से सेते डिवाइड हे जीव एबे तुम जोटा बॉटनी पढुछ आगु गले से पुन डिवाइड हो जाता है पुन बायोटेक गोटे पार्ट आसीबो माइक्रोबायोलॉजी गोटे पार्ट आसीबो सिस्टमैटिक्स टैक्सोनॉमी गोटे पार्ट आसीबो सेल बायोलॉजी गोटे पार्ट आसीबो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी गोटे पार्ट आसीबो जेनेटिक्स गोटे पार्ट आसीबो इकोलॉजी एनवायरमेंटल साइंस इवोल्यूशन ये सब डिफरेंट डिफरेंट एरिया सो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच आसीबो क्लियर तो ये सब जिन तुम भलसे मन रख कि आम जो क्लासिफिकेशन पढ़ुछे से क्लासिफिकेशन बेसिस कौन ऑन व्हिच बेसिस इज बीइंग क्लासिफाइड और तारे कौन कौन सब रही जदि फंगस के आसिला ईस्ट आसिला मोल्ड्स आसिला मशरूम आसिला ईस्ट यू ऑल नो ईस्ट जी को दाको तुम यूज करी कौन बनौछ ब्रेड बनौछ इन अ बेकिंग इंडस्ट्री जो केक ब्रेड्स पिज्जा बर्गर्स पेस्ट्रीज ये जो सब फैंसी आइटम सब जो खाउथिबो जो तमरो फेवरेट फूड सब हेतिबो इट कैन नॉट बी मेड इफ ईस्ट वाज नॉट देयर जो डोसा इडली जो हमें चकुली जो पार्ट्स हमें खाऊ जे सब फर्मेंटेशन फूड ये फर्मेंट हो ना पिला माने फर्मेंटेशन करिया पई के दरकार अछि ना ईस्ट हम दरकार अछि तो जो अल्कोहल प्रोडक्शन होची व्हिस्की रम ब्रांडी देन ता सहित बियर ये सब वाइन
जो भी जिनिस तैयारी होची ता पई फर्मेंटेशन करा होची फर्मेंटेशन माने ओडिया रे तम पडला सुरासार गुणन और ये फर्मेंटेशन प्रोसेस करिया पई कि वी नीड द हेल्प ऑफ द फंगस वी नीड द हेल्प ऑफ द ईस्ट and the scientific name of yeast is Saccharomyces cerevisiae. You need to remember this part. Glycocalyx. Okay, glycocalyx ର ମାନେ ହେଲା ପିଲାମାନେ it's the outer covering of the bacterial cell. ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ର ବାହାର ପଟେ ଅଛି ତାର ସେଲ୍ ଏନଭେଲପ. The cell envelope ର ତିନିଟା ପାର୍ଟ ଅଛି. Number 1 is glycocalyx, the outermost layer, middle has la cell wall, and the innermost layer is cell membrane or plasma membrane. Now the glycocalyx ji ଅଛି ତା କାମ ହେଲା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା. It is again divided into two categories. One is thick, another is thick. ଗୋଟେ ମୋଟୁ ଥିବ ଗୋଟେ ପତଲୁ ଥିବ. ଯେ thick ଅଛି hard ଅଛି rigid ଅଛି ସେ ହେଲା capsule. जे पतला अच्छी थीन अच्छी लूजली पैक ହେଇଛି सी ହେଇଗଲା ତାର କଣ that is the what that is the slime layer तो जो बैक्टीरिया रहिला बैक्टीरिया मानकर आउटर मोस्ट लेयर को कहा जाउची ग्लाइकोकैलिक्स the glycocalyx is again divided into two categories it can be a capsule it can be a slime layer if it is thick if it is rigid in nature it is called capsule if it is thin patla achi loosely connected achi it is called slime layer काम होला प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिवा तो हमें एठी रिटर्निंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन सारिले हमें देखिले प्रोकैरियोट यूकैरियोट प्रोकैरियोट रे मोनोरा पार्ट देखिले बैक्टीरिया जोटे रहिले बैक्टीरिया पुणी दुई प्रकार देखिले आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया आर्की रो पुणी तीन प्रकार पार्ट अछि कोन कोन थर्मो एसिडोफाइल्स हालोफाइल्स मिथानोजेन्स दैट इज थर्मो एसिडोफाइल्स पे मतलब मार्क करिवो इफ यू गो टू तप्तपानी if you go to a tree these are called as usma prasamana kendra hot springs बोल दा कहै if you go to hot springs you will find the water the naturally पानी टी गरम अछि तळु पानी टी फुटी की बाहर छै देन ओडिसा रा गजपति डिस्ट्रिक्ट तम पाइबो whenever you are moving from Barampur to गजपति मझर रोड जगह अछि तप्त पानी एट देखो पानी टी फुटी फुटी की रहउछि तो से पानी रे भी गोटे बैक्टीरिया रहउछि तो भाइबो से पानी रे बैक्टीरिया केमति आसिला फुटंदा पानी जब आम देह खराब हुए मामा आमको पानी को फुटेकी दियंती गरम करके दियंती बट एठी किंतु पानी रे केम से बैक्टीरिया आसिला तार आंसर होछि कि दैट इज अ काइंड ऑफ आर्की बैक्टीरिया इट बिलोंग्स टू द जेनेरा थर्मोएसिडोफिलस थर्मोएसिडोफाइल दैट मींस माने हीट सेंसिटिव से माने गरम टेंपरेचर रे एक्सट्रीम कंडीशन में रही परिबे आराम से रही परिबे देन तो सी टेंपरेचर को सह्या पई कैपेबिलिटी आनिछि कोटू बिकॉज़ इट इज हैविंग अ रिजिड सेल वॉल तापर रिजिड सेल वॉल अछि जमी आमे वर्तमान घरे बसछे तो गोटे शर्ट टे पिंधि के आराम से बस पाछे बट जदि मु आज गोटे आर्मी ऑफिसर टे हेतांती एंड मोर पोस्टिंग टे सियाचेन ने हेतांता लद्दाख रे हेतांता कारगिल रे हेतांता सेठी गोटे शर्ट पिंधि सर्वाइव कर पाइ नथंती आई शुड नीड अ जैकेट मोर जैकेट दरकार थांता गोटे थर्मोकोट दरकार थांता से कोल्ड टेंपरेचर बंचिया पई सह्या पई क्लियर तो से बेला जिन सही जो आर्की बैक्टीरिया रहली थर्मोएसिडोफाइल आम पाखे गोटे एमिका सुपर पावर अछि ए माने एक्सट्रीम टेंपरेचर को आराम से सही परिबे सेमती यू बैक्टीरिया कथा आसिला हम सियानो बैक्टीरिया एस्चेरिचिया कोली ई कोलाई लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ये सब यू बैक्टीरिया बिलोंग करे देन प्लांट जो आसिला प्लांट अगेन डिवाइड चारटा पार्ट को थालोफाइटा ब्रायोफाइटा ट्रिडोफाइटा स्पोमाटोफाइटा स्पोमाटोफाइटा इज अगेन डिवाइडेड इनटू कैटेगरी जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म फंगी जो पार्ट है पुन चारटा पार्ट डिवाइड है कोन फाइकोमाइसिटिस आस्कोमाइसिटिस बेसिडियोमाइसिटिस ट्यूटरमाइसिटिस पुन आसला प्रोटिस्टा को जदि जीवा अबिका प्रोटिस्टा के आसला यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक आसला समान हेले अमीबा किछि किछि algae भी जादरा अछंती डायटम्स अछंती गोल्डन algae अछंती एंड जो माने मल्टीसेलुलर अछंती से गले एनिमल्स जेमति इंसेक्ट्स हे गला फिश हे गला मैमल्स हे गला रेप्टाइल्स हे गला एप्स हे गले दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल एंट्री करछन you can see this part 5 in class में केमति सिस्टमैटिक हेछि गोटे ट्री बनै तम देखैछि से गोटिए जिंस त बारंबार वे रे हमें देखिबा फर्स्ट आसिला ऑल आर प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर से मन हे गले मोनेरा ऑल आर यूनिसेलुलर गोटिए कोषरे तिया दैछन्ती एंड दैट टू तम जो सेल टी अछि से प्रिमिटिव सेल अछि नो नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल तो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर दे ऑब्जर्व और photosynthesize motile or non-motile asexual organisms ସେମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି clear then if we talk about protist को माने ଆସିଲେ ना these are eukaryotic but again unicellular clear
यूकेरोटिक बट यूनिसेलुलर आउ नहले मल्टीसेलुलर भी हेई किछि किछि जगह रे काम होला अब्जॉर्ब करूछनी खाइबाकू नले इंजेस्ट करूछनी नहले निज खाद्य निजे बनै पारछन फोटोसिंथेसिस भी कर पारछन आ रिप्रोडक्शन मोड कोन अछि सेक्सुअल भी हेई परिबो असेक्सुअल भी हेई परिबो वेजिटेटिव भी किछि जगह शो करथांती तो आउ टिके हायर पार्ट को जिबा सेठी हम देखिबा मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स ये कोन थिला यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट ऊपर थिला यूनिसेलुलर यूकेरियोट ऊपर जो तीनटा को रहिले दे थ्री आर मल्टी सेलुलर यूकेरोटिक देखो समस्त वाले कॉमन लाइन लिखा है जे यूकेरोटिक मल्टीसेलुलर यूकेरोटिक मल्टीसेलुलर यूकेरोटिक मल्टीसेलुलर वन जो प्लांट अछि दे कैन फोटोसिंथेसिस से मन निज खंड जे बनै परिबे दे आर नॉन मोटाइल गछ को कोड जाई परिबो प्लांट रोटलेस सेट रहइबो दे आर नॉन मोटाइल से चल प्रचल करि परिबे नहीं दे कैन डू मूवमेंट बट नॉट लोकोमोशन राइट नाउ आई एम डूइंग मूवमेंट मो हाथ रे हैंड रे मूवमेंट करूची मो तमाने जो पढी की बुझी परछ मूवमेंट करछ बट व्हाट इज लोकोमोशन लोकोमोशन होची गोटिए प्लेस रु आउट प्लेस को जिबा जेम तमे तमर घरु तम कंफर्ट जोन घरु तमे बाहर के स्कूल को गल्ला कॉलेज को गल्ला यू चेंज योर लोकेशन फ्रॉम होम टू स्कूल home to college so that is called as locomotion तमे गोटे जगह रु आउट जगह जाइछ but I was sitting in front of the camera I am sitting in front of the laptop and एठी बसी की मु कोडे लोकोमोशन करूनी बट मटे मूवमेंट करि परछि तो प्लांट माने हेले नॉन मोटाइल ये मूवमेंट करिवे लोकोमोशन करिवे नहीं बट एनिमल्स दे आर मोटाइल you know animals are motile we all are animals ଆମେ ସମସ୍ତେ motile ଆମେ ଚଳ ପ୍ରଚଳ କରି ପାରୁଛେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯାଇ ପାରୁଛେ ସେ ସାପଟା କ୍ରଲ କରିକି ଯାଉ ଗୁରୁଣ୍ଡିକି ଯାଉ ବା ସେ ଚଢେଇଟି ଉଡିକି ଯାଉ ଫ୍ଲାଏ କରିକି ଯାଉ ବା ଗୋଟେ କୁକୁରଟି ଦୌଡିକି ଯାଉ ରନ୍ କରିକି ଯାଉ ତ ଜିନିଷ ହଉଛି ଏଇଆ କି they are motile all of them are motile and they prefer sexual reproduction ସେମାନେ asexual କରିବେନି कि vegetative କରିବେନି they generally prefer करନ୍ତି को reproduction sexual mode of reproduction पिला माने एई गोटे क्वेश्चन आसिला कि what is the difference between sexual reproduction and asexual reproduction and which one is better स्मृति वैष्णवी प्रतीक्षा अबू my question is to all of you विश्वजीत हो गया सीआरजी अरमान गायत्री गायत्री श्रीनिवास शुभश्री शुभश्री श्रीनिवास स्मृति रामाजी हायर सेकेंडरी स्कूल गंजाम this is the only school I always see they are present somebody present thaanti it's always good to see you Ramaji Higher Secondary School Hismagiri Ganjam Rajeshwari Padhi Priyanka Priyadarshini Pratiksha Behera Pragya Parjang Higher Secondary School Parjang Nirali Priyadarshini Nandini Mahapatra Khalikot Higher Secondary School Badampur they are also very sincere in this online classes सबुबले खलिकोट कॉलेज खलिकोट स्कूल द पिलामान निहारी थांती जीएसएसएस फुलबाणी स्कूल दे आर आल्सो वेरी पंक्चुअल रहिले एकामरा हायर सेकेंडरी स्कूल तो माय क्वेश्चन इज टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स कि ये जो क्वेश्चन बा सेक्सुअल एसेक्सुअल भितर डिफरेंस कोन क्वेश्चन होची कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हिच वन इज बेटर Abhinas, are you saying asexual reproduction is better or you are just simply saying कि asexual part अच्छी बोली? Yes, quick. Aswini, sexual gamete formation हुए, sexual is better. Okay. Is it asexual parent involved? One parent involved, sexual both parent involved. Yes, Subhasri, correct. In asexual, sir, I am saying asexual is better. Okay. No. एठी तो बेटर पार्ट आसले ना एठी क्वेश्चन आसला कि बेटर वाला पार्ट रे हमर जो देखिबा ताले को बेसिस से बेटर कहू जदी हम चाहू कि पेरेंट पाखरे जहां भी जिंस अछि जे सेई जिंसटी आगु पास नै कि जाऊ देन इट इज एसेंशियल इज बेटर इट इज वेरिएशन आसीबनी बट सेक्सुअल काहे कि बेटर हम कहबे ना इट वेरिएशन आसु जे आ वेरिएशन लीड टू इवोल्यूशन जदी वेरिएशन आसंता नै तले इवोल्यूशन होंतनी देन the situation ऊपर डिपेंड करछि को सिचुएशन हमें कामटी करछो बोली asexual reproduction suppose गोटे हाइब्रिड सीड अछि मो पाखरे गोटे हाइब्रिड प्लांट अछि तो मु चाहू छी कि ए प्लांट टी ए वर्ष जेमति भलो अमल करिछि आर वर्ष जेमति भलो अमल करू
तो से हाइब्रिड प्लांट ता जहां कैरेक्टर थिला पैरेंट पैकेट सेटा ही रो, then that is called as asexual reproduction. Single parent is involved, but in case of sexual reproduction it is dita parent involved bele. So the dita parent involved ho chini, both parents are involved, then seti kon hoba na variation asibo, and jebe variation asibo it will lead to evolution, और जब हमें evolve होगा then हमें आहुरी advance ही आसिबो. क्लियर मतलब हमें इवॉल्व मतलब जिराफ से जिराफ छेड़ी की रही था जिराफ ही पर न था से इवॉल्व कला जिन सब नहीं क्या को जाला तुम देखो अभी क्या यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन साप जो अछि स्नेक तर आगु ना गोड़ थिला साप पाखरे गोड़ थिला तार जन तेलुनी पोकर पोक मगर आसरे गोड़ थिला सापरे भी गोड़ थिला से यूज कलानी तो डिसयूज ऑफ ऑर्गन हे गला से अभी का वेस्टिजियल ऑर्गन हे गला से गायब हे गला किंतु जिराफ ता बेकर यूज करी करी चलला एंड फाइनली से तार लंबा बेकटी तर हाइट रे बढ़ी से पाइला तो इस्टी लामार्केजिंग थ्योरी जब जिन आसीबो आगो तम पडिबो तो एटी बेसिकली मोर कहबार जा मोटो थिला मोटो क्लियर हे गली के माने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली प्रिफर करते बिकॉज़ दीज आर एडवांस एनिमल फंगस ये भी सेक्सुअल करती असेक्सुअल भी करती वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है वेजिटेटिव फ्रैगमेंटेशन आसीबो विखंडन प्रक्रिया बाइनरी फिशन दुई विभाजन प्रक्रिया स्पोरुलेशन स्पोर्स बनेइबे आस्कोस्पोर बेसिडियोस्पोर जाइगोस्पोर oospore फॉर्मेशन करिवे तांका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स सब होची सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जोडी जाइगोट फॉर्मेशन हबो yes asexual evolution is correct answer asexual reproduction identical offspring sexual reproduction varied offspring as well the data parent involved which is sexual data parent involved is asexual Avinash is also having the correct answer very good okay now let's quickly move to the next segment nale sari paribani ha in this five kingdom classification you can see it's a more beautiful picture it's a colorful picture but description is the same monera cellule is absent समसम रखे नहीं किसी किसी बार सेलुलर एब्सेंट है सेल टाइप है प्रोकैरियोट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेलुलर मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जो ऑटोट्रोपिक नॉन हेटेरोट्रोपिक ये जो सेलुलर एब्सेंट है नहीं इट्स नॉट यूनिवर्सल केवल माइक्रोप्लाज्मा रखे नहीं जो माइक्रोप्लाज्मा गोटे अच्छी माइक्रोप्लाज्मा इज कॉल्ड एज द स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड the joker of plant kingdom ta pakhare cell wall nahi that is naked cell but bacteria do have cell wall dear students don't get confused bacteria pakhare cell wall achi bacteria archibacteria how by eubacteria how they have a cell wall they have glycocalyx they have cell wall then in case of protista cell wall is present yes but not in all in case of cell type केमता अछि ना eukaryotic cell type nuclear membrane present yes present because ये जो protista ऊपर जति का आसी गले all are eukaryotes organization केमता अछि ना unicellular and mode of nutrition होछि they can be autotroph they can be heterotroph clear जो प्रोटिस्टा भितर कोन पांचटा पार्ट अछि क्रिसोफाइट्स डिनोफ्लैजिलेट्स यूग्लिनोइड्स स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोएंट्स तो पांचटा भितर द फर्स्ट टू एंड हाफ दे आर ऑटोट्रोफ द लास्ट टू एंड हाफ आर हेटेरोट्रोफ द क्रिसोफाइट्स ये ऑटोट्रोफ देन आसिले तमरो डिनोफ्लैजिलेट्स ये ऑटोट्रोफ हेले जो यूग्लिनोइड्स अछि तला अधा पार्ट है ऑटोट्रोफ अधा माने कोन ना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक प्लांट्स in the absence of sunlight they behave like animals and they cannot produce their food and they predation upon the another organism clear then there is jiba planty animal या fungi को जिबा तो fungus पाकर cell अच्छी ना yes अच्छी केमता देखिया पे cell ना eukaryotic cell nuclear membrane अच्छी ना नहीं ना yes present organization केमता अछि ना multicellular organism and mode of nutrition जो अछि heterotrophic nutrition अछि but in case of animals animal या पार्ट हम देखियो जरे सेलुलर प्रेजेंट अछि कि नहीं एनिमल पे सेलुलर नहीं सेल टाइप केमते अछि ना यूकैरियोटिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट ना यस प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन ना ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ओनली हेटेरोट्रोफ no animal can produce their own food by themselves आमे केही हम खाद्य बनै परिबा नहीं तम जो किछ पिला थियो के सर मु तो मैगी बनै सिकिछि I know how to make Maggie, so I am autotroph. I am not dependent. अरे नहीं मैगी से ना बनो जो मैगी तो बाहर बनची ना तो तुम you know how to cook Maggie, but you do not know how to make food. निज बॉडी भीतर तुम फूड बनै परिबा नहीं हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करू छे त हम एगो हेटेरोट्रोफ आसीले and plant cell wall is non cellulosic cellulosic पर non cellulosic hemicellulose रहइबो cell type eukaryotic nuclear membrane present organization organ level and mode of nutrition होची autotrophs. Now this part जो मन पचार छिलो you can see this segment last तमर NCERT बही रे टेबल टे देछि and ए टेबल टे खाली क्विकली देखि दियो and then we will move to the question answer segment आप जो आसीबो
Yes, Abu Sangam is having the correct answer. Social reproduction generally considered better for long-term species survival because of genetic variation and creates align. Yes, 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 Baba. Pura correct answer अच्छे. You see, in Monera, cell type है prokaryotic, है आउ बाकी rest चारटा है eukaryotic. Cellular में देखिबा, एठी Monera present अच्छी non-cellulosic, protection present अच्छी some रे किछिटा रे, fungi है chitin and polysaccharide, plantain है cellulose, और animal है बिल्कुल नहीं absent. The nuclear movement देखिबा, Monera absent, rest all are present. Modernization, cellular, then पढ़ाइला multicellular, tissue level, organ system level, and mode of nutrition जब देखिबा मोनेरा ହେଲା autotroph, ये ହେଲା autotroph, heterotroph, a parts of ରହିला. Clear? Now quickly move to the next segment. You can take a screenshot of this, or you can also found this segment in an NCERT book. A table टी ଦେଇଛି. तम book खोलिबा right side page ର ତଳେ table टी provide କରିଛି. The bacteria with a flagellum or movement belong to which group? Bacteria having a flagellum. The flagella আছে ତା ପାଖରେ movement କରୁଛି motile bacteria. Flagella को नहीं bacteria पांच प्रकार ଅଛି बाबा. कौन bacteria ଅଛି ना atricus, monotricus, lopotricus, amphitricus, peritricus. If flagella is बिल्कुल absent है atricus, तो गोटिए flagella ଅଛି तो monotricus, दिटा flagella दी पट ଅଛି amphitricus, गोटिए पटरे पुळे flagella ଅଛି lopotricus, entire body रे flagella ଅଛି गला peritricus. Now it's finally come to the question answer segment. A question answer कर देला परे हम class sorry by the class 18. So you can see the question answer. The five kingdom classification proposed by whom? Very easy question. The five kingdom classification proposed by Robert Whittaker. Linnaeus कहलेनी किए गोटे किए से genius पर Realme RMX 3870. You are really genius, beta. Answer is Whittaker, Robert Whittaker, R.H. Whittaker, Robert Harding Whittaker. Okay, question number 2. In the five kingdom system, the main basis of classification, main basis किए करचंदी? को basis रही structure of nucleus, mode of nutrition, cells of organization. Answer is all of the above. Good. Answer is all of the above. Which of the following kingdom include organisms that are non-motile, non-photosynthetic, and have a cell wall made up of chitin? देखिए दियो non-motile कुआडे जाई पारुनी, non-photosynthetic it cannot produce its own food, and it having a cell wall made up of chitin. The answer Gayatri wrong answer. Ekangsu Manta, Smruti, you are having right answer. Pratiksha, Ananya, all are giving right answer. That is the answer is fungi. Kingdom fungi रे common अचंदी non motile non photosynthetic पहले सब kingdom fungus को belong करचंदी. Yes, Priyanka Priyadasini, you have also given the right answer. Vaishnavi is also given the right answer. Kudos to all of you for your scientific temperament. Now this question. Yes, Gayatri, correct answer is fungi. An organism in unicellular, eukaryotic, and photosynthetic, in which kingdom would it be classified? So unicellular अच्छी, eukaryotic अच्छी, but photosynthetic भी अच्छी. Answer is protista. Are unicellular, eukaryotic, केवल गोटिए है लासी protista, and photosynthetic. Yes, ଏବେ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି chrysophytes, dinoflagellates, they are behaving like plants. The answer is option B. Question number 4. The right answer is option B, that is protista. Now, archaebacteria differ from eubacteria in dash. Chemically differ from archaebacteria, eubacteria, having a different cellular structure, living in extreme environments, the unique 16S RNA sequence, all of the above. Now, archaea you chemically differ करचंती, having a different cellular structure तांग पाखरे अछि, living in extreme environment अच्छी, archaebacteria अलग जगह रहउचंदी, eubacteria अलग जगह रहउचंदी, unique 16S RNA sequence भी रहउची, and all of the above. Answer is all of the above. Clear? Then which kingdom is characterized by the absence of a cell wall? पहला अगर कहारा cell wall नहीं, Monera, Protista, fungi, Animalia. Which one is not having a cell wall? Answer yes. The correct answer is Animalia is the correct answer. Now let's move to the last four question of the segment. Already we are over timing.
लास्ट चार्टा क्वेश्चन छाड़ देले तमर फोन भी तमर ये ही जवनी चार्ज भी बहुत सरीबन डाटा सरीबन देखो डायटम्स यूग्लिनॉइड्स स्लाइमोइड्स आर ग्रुप्ड अंडर डैश इमान कोआ भीतर अछंदी डायटम हे गला यूग्लिनॉइड स्लाइमोइड आंसर इज प्रोटिस्टा मन का सेकंड नंबर क्वेश्चन ना आंसर होची प्रोटिस्टा पर कोन पांचटा पार्ट अछि क्रिसोफाइट्स डिनोफ्लैजिलेट्स देन आसीगला यूग्लिनॉइड्स स्लाइमोइड्स एंड प्रोटोजोआन्स पांचटा पार्ट था The mode of nutrition in fungus primarily fungus nutrition केमिति अछि saprophytic fungus है saprophytic option C saprophyte which of the following pair is correctly matched correctly की अछि na cyanobacteria is blue green algae 9 number option is also C 8 number option also C 9 the option भी also C cyanobacteria having blue green algae सेटा ही ठीक अछि and last are the kingdom which shows the link between prokaryote and complex multicellular eukaryote is called as kingdom protista. Question number 10. Answer is option B that is protista. Okay nahi gote unicellular ru prokaryote ru eukaryote मझरे link के रहिला protista. You can see this is the link देखो प्रोटिस्टा कौन अच्छे लिंक अच्छी मझे तले रहा मोनेरा ऊपर रहा प्लांटी एनिमलिया फंगी मझे लिंक करुच्ची किए कनेक्ट करुच्ची किए प्रोटिस्टा तुम सब जिन देखी लिंक करुच्ची किए गोटे प्रोकैरियोट को यूकैरियोट किए लिंक कराउची प्रोटिस्टा देन so this is the thing so hereby we completed all the part and thank you for your attention and we'll definitely meet again in the next segment next class रे till then भलसे पढ़ा पढ़ी करता keep your curiosity level जो curiosity level को बनने की रखता भलसे मन दे पढ़ता and भलसे enjoy करो then thank you so much for attention if you have any doubt and ask in the next class thank you so much for joining and hereby we'll complete the class I hope you get it all. Thank you so much, dear class. Yes. Yes.